मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। मर्जी, हर चौराहे पर मैं अपनी मूर्ति लगवाऊं, न्यूज़पेपर काट के अपना सूट में बनवाऊं, हॉस्पिटल में जाके मैं जोरों से चिल्लाऊं, पहलवान को गोद में लेके लोरी सुनाऊं, 200 300 400 की छपवाऊं नकली नोट, आलू टमाटर को मारूं क्रिकेट के शॉट, स्विमिंग पूल में तैरने जाऊं पहन के कुर्ता धोती, बड़ी लॉटरी लगे कभी तो रखूं सूरत रोती। मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अब चौंको नहीं। नकली दाढ़ी मूछ लगा के बन जाऊं मैं चोर, अपने घर में चोरी करके खूब मचाऊं शोर, पानी पे मैं राशन रखूं मुफ्त में बेचूं तेल, कंकर पत्थर धूल डाल के सबको दे दूं बेल। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी, मैं पैरों से तबले बजवाऊं, मेरी मर्जी, मैं बीच सड़क बिस्तर लगवाऊं, मेरी मर्जी, मैं कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं, मेरी मर्जी। हेलो गाइस, एज पर प्रॉमिस तुम्हारा भाई तीसरे दिन भी सेम कपड़े, सेम जैकेट, सब सेम पहन के आ चुका है। मैंने क्या बोला था, वॉच पार्टी होगी सेम तरीके, बट आज थोड़ी खतरनाक होगी क्योंकि आज हम लोग थोड़ी बसड़ कम करने वाले हैं, थोड़ी काम की और गेम की बात करेंगे और थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे, समझ रहे हो। आज कोई कंप्लेंट वाली चीज नहीं करेंगे। वो आ गया, यस। ना 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 ला 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 ला। कितने बजे स्टार्ट है? अब भी स्टार्ट है थोड़ी देर में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। थंबनेल में फ्यूचर है क्या? नहीं, करंट है। फ्यूचर में अभी थंबनेल नहीं आता, कुछ नहीं है। अदरवाइज पता है सबको क्या कर रहे हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। हम लोग कर रहे हैं वॉच पार्टी फाइनल डेज। आज देखते हैं किसको जिताना है। जल्दी आ जाओ फटाफट। क्या कर रहे हैं, बट फिर मैं वॉच पार्टी फाइनल डेज। आज देखते हैं किसको जिताना है। जल्दी आ जाओ फटाफट। हाँ, और बताओ। फ्यूचर थंबनेल, अरे नहीं 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 नहीं, बोले भाई, बाय द वे आई एम ऑन जाए। तो अपना फ्यूचर अभी थोड़ा सा वो हो चुका है, ऐसा यू टर्न ले चुका है, क्योंकि पहले मोटापे की तरफ जा रहे थे, अभी पतलू की तरफ जा रहे हैं। एक्यूरेट है थंबनेल।
चैप्टर 2 नहीं, क्योंकि ये थंबनेल आइडिया मेरा था। बोले भाई दर्शन पटेल देख लो क्या लिख रहा है, अगर चैट देख रहे हो। क्या लगता है आज कहाँ की टीम जीतने वाली है? अपनी पहली प्रेडिक्शन तो ये थी कि जो नोवा है वो टॉप 5 में नहीं रहेगी, और सेकंड अपनी वीक तो दिल तोड़ ही दिया है, फिर भी तो इतना नीचे चली गई, ऊपर आ नहीं सकती है। भाई भाई स्काउट हो यार, नहीं 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 नहीं, नहीं, आज शायद एज पर इन्फो वो नहीं आ रहा है आज, जितना मुझे पता है। यार ये वाले बाल ना यहाँ से सेट होने चाहिए होता है। तो ये देखो ये क्या है, बाल सही कर हो ही नहीं रहे ना। तो एम्पायर कमबैक करेगी, ऐसा कमबैक तो नहीं होता है, ऐसा 16 से फर्स्ट वाला कमबैक तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। यस यस यस, मोटिवेशन चैनल, यस नीड हेयर एक्सपर्ट। बाकी गाइस एक और चीज, कल कल बहुत ज्यादा बसड़ हो रही थी तो अपन उस टाइम आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाए। बाकी अपना सपोर्ट है अपने पड़ोसी को, पड़ोसी लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पड़ोसी लोग बहुत खेल रहे हैं, पता है। कल कल हाँ कल ना वो वाला मैच जब हम लोग कर रहे थे, वो लोग सही खेल रहे हैं यार। मेरे को ऐसा अभी मेरे को ना अपने मोटापे में बताओ, मेरे को अपने मोटे होते बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉब्लम पता क्या नेपाल लोग। यस यस डीआरएस टेल मी, डीआरएस को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है जल्दी चैट में सब बताओ, जल्दी से जल्दी। नहाना पड़ता है बाल सेट के लिए, नहीं नहाया हूं, उसके बाद अभी सो गया था। ये देखो गैस, मैं ना कितना भी सो लूं कुछ भी कर लूं, ये मोटापे ने ना मेरे मुंह से उबासी नहीं, यौन करता ही करता हूं। ये देखो मेरे को कुछ नींद आ भी नहीं रही फिर भी उबासी आ रही है, ऐसा कि वेरी डेंजरस। पढ़ हेलो लिया भाई, ओमेगा जी, ये भी पढ़ लिया। आज लास्ट डे, यस। हेलो ओमेगा जी, ओमेगा हाँ जी। एज पर माय प्रॉमिस मैं आज भी वो जो कपड़े पहले दिन पहना था वही कपड़े तीसरे दिन वॉच पार्टी में पहन के आ चुका हूँ। है क्या 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 फर्स्ट डे से वही पहन रहा है क्या? फर्स्ट डे से सेम सेम जैकेट, सेम टी शर्ट, सेम पैंट। 3 दिन से पहन रहा है तू? यस, वॉच पार्टी के लिए बचा के रखता हूँ, उतार देता हूँ वॉच पार्टी पे पहन लेता हूँ, उतार देता हूँ वॉच पार्टी पे पहन लेता मतलब ये इसका रीजन क्या है? हूँ। ऐसे ही बकचोदी करने का मन कर रहा था तो कुछ और तो दिमाग में आ नहीं रहा, ये कर लेते हैं। ओमेगा डाइट प्लान पे है, टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो। ओमेगा ना, ओमेगा वो लैंड वाले टूर्नामेंट से डाइट पे इसको है, इसको इसको सब और ये तब का लेके आज तक ये सेम ही है, और इसका मुंह से थोड़ा चमड़ा उतरा है, बाकी अरे सेम है। घंटा। अबे फिर बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं ना मेरी जिंदगी में, वो मेरी पूरी डाइट की माँ बहन कर देते हैं। मतलब कि वही है, 6 महीने खा के जो डाइट की वो 6 दिन में बराबर कर देते हैं। और यार पानी गिर गया। अब मैं क्या करूं? अब मेरे को ऐसे ऐसे लोग। अबे भाई जनरल ज्वाइन कर ले, हम ड्रैग कर लेंगे। हाँ किसको किसको बुला रहा है? अरे फावड़े को। अच्छा तो बोल दे डेफन करके बैठ जाए। हैं? लो मोटा है इसलिए, अरे पता नहीं वे उबासियां बहुत आती, उबासियों से प्रॉब्लम होता है मेरे को। यहाँ बैठे बैठे उबासी आएंगे भाई, जो क्यों उबासी का नाम ले रहा है यार? कौन है ये लोग जिनके साथ तेरी 6 दिन में डाइट खराब हो जाती है? कौन कौन है है ये? कहाँ से आए ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या ये लोग जाते पंजाब हैं हरियाणा साइड से आए? बहादुरगढ़ संगरूर साइड से है ये लोग। ये बहादुरगढ़ के साथ संगरूर क्यों जुड़ता है? संगरूर को बहादुरगढ़ के साथ तो मत जोड़ो प्लीज। ओ भाई हेलो, क्या वो जुड़ चुका है? वो जुड़ चुका है। पीबी तेरा संग मत जोड़ो, ठीक है? हाँ अब जुड़ पीबी चुका तेरा है, कुछ है। नहीं कर सकते। वैसे मेरी जानकारी पीबी तेरा में ज्यादा है, चल तेरा से तो पीपी तेरा में तेरे को जब बुलाया तो पीपी तेरा में आया नहीं। नहीं। फावड़ा हूँ तो बढ़िया। पता चल ओमेगा मैंने अल्ट्रॉन को बुलाया था कि आज कल आया नहीं है। भाई ऐसा ही होता है स्ट्रीम कर रहा था ना भाई, मैं 8 बजे बदल तक। बदल गया अल्ट्रॉन। मैं नहीं बदला भाई। अगले की वीडियो कॉल नहीं आई शादी होने के बाद। कितने दिन हो गए शादी को? बहुत दिन हो गए, महीना होने वाला है।
और अब तो ये भी नहीं है कि ये भाभी घर गई हुई है फिर भी नहीं किया भाई, फिर बदल भी गया नहीं यार। किया, कितना बदल गया भाई। मेरा तो नंबर ही डिलीट कर दिया इसने, थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो बोलता हूँ मैं, भाई मगा छोड़ो भाई रहने दो, मैं तो फिर तो मैसेज मैंने ही उन लिखा लोगों के कि नंबर हटा दिया ना अपने व्हाट्सएप पे। कोई किन लोगों के, किन लोगों के? अरे मतलब जो लोग देखते नहीं बात करते ना, जैसा तू सामने से गाली दे के बात करता है, कुछ भी बोलता है अच्छा, भाई यार मैंने मैं कब तो गाली देख के दी भाई? करता हूँ। हमेशा। गंदा बोलता है तो मेरे को। गाइस वी आर लाइव, हम वॉच पार्टी कर मैं रहे भी हैं। 3 दिनों से सेम कपड़े पहन के देख रहा हूँ। गुड 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 गुड, आई होप आपके भी फंगस हो जाए। अरे भाई यार फक मैन। इस बंदे से ना बच के रहो भाई, ये सबको वो करवा देगा, मेरे को दिख रहा है। गाइस मैं कहा चलो वॉच पार्टी पे, तो मैं शायद वॉच पार्टी पे वो बात कर चुका हूँ। ऐसा हुआ, अपन वैसे आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, फिर भी एक बार के लिए मैं पूछ लेता हूँ अल्ट्रॉन पे। अल्ट्रॉन, क्या तू थोड़ी का मजाक उड़ाएगा? नहीं भाई कोई नहीं उड़ाएगा भाई, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं उड़ाऊं भाई। बहुत मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए कैमरा फिलहाल किसका को तो मजाक? तुम एक कैमरा किसका थोड़ी को मजाक? होगा, थोड़ी होगा फोड़ियो का जो मजाक हो कौन जाए। उड़ा सकता है यार? मैंने उड़ाया था एक बार, गलती कर दी। Those are very precious things, man. वही तो, ये तो चाट देता है दूसरे की फोड़ी। तो why are you trying to हाँ be अरे cool guy? अरे yeah यार अल्ट्रॉन ये क्या yeah अल्ट्रॉन भाई, फोड़ी में बहुत दिक्कत देती है, मेरे को हो गई थी, मैं शादी का चलो मौका चलो था। चलो 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 लेट्स गाइस, आज हमने, मैं चैट को बोल के आऊँ कि आज हम लोग थोड़े से लिमिटेड लोग रखेंगे आज, वो ज्यादा बसड़ या मतलब ज्यादा वो हाँ नहीं भाई करेंगे। पता है, ज्यादा लोगों में हकते भी हैं लोग और भड़क भी ज्यादा हाँ, होते और ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे, आज सिर्फ काम की बात करेंगे, गेम की बात करेंगे। लेट्स गो। मैच हो गया शुरू गाइस, चलो स्टार्ट हो गया। प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन जैसे भाई, तू प्रेडिक्शन शुरू कर। डेफन कर ले अपने आप को, माइक म्यूट और हेडफोन्स म्यूट। ठीक है। यार मैं देख रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे कर। उससे क्या होगा? नहीं माइक हेडफोन भी। अबे ओ क्या फिर इसके बैठने का मतलब क्या हुआ? जूसी अरे वो हो ही नहीं रहा, उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लिखा आ रहा है कि या तो स्पीकर पे कर या फिर हेडफोन पे करिए यार। तू अरे पहले कोई हेडफोन नहीं, पे कर, पहले हेडफोन पे दबाओ, हाँ दबाओ कर म्यूट। इतने गंदे आदमी। लोडिंग लोडिंग हो रहा है। लोडिंग हो रहा है साला। अरे माँ की कसम ध्यान लोडिंग दे हो लो रहा है, ना, हार्ट भी नहीं दे कर दो रहा रे है। भाई, मैच शुरू हो गया। Let's go guys. Where is DRS? I want to see DRS. सेंट्रलाइज सर्कल एक्सपेक्ट कर ले हम, आ जाओ, आ जाएगा तो भाई सबके लिए अच्छा होगा। ए लो वाटर सिटी थोड़ा सा जोन। ऊपर गया, ए लो ये जोन, Water ये फाइनल जोन वाटर सिटी खत्म होने वाला है। वाटर सिटी वो एक बार हुआ था। ये वॉर जोन के वाला। लिए मार्च शाउट आउट यू मेरे भाई। भाई स्क्रीन चलते हैं। यस गाइस, आज ना जैसे आदमी को मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है ना, मेरे को वैलो खेलने की क्रेविंग्स हो रही है। कर लेंगे, खेल लेंगे। कैमरा की जगह चेंज करो। ये सब लोग लैग क्यों? गेम रिस्टार्ट होने वाला है क्या? ये मान के चल, ये वाला माइक ऑफ है, क्या बात कर रहे ये वाला हॉट कौन है भाई, क्या बात ये इनको वालों को क्या होगा? कुचलम कुचली हो गई काम। लग रहा है। टॉप पे चल रही है और भाई कंपटीशन तगड़ा है रे। कोई हाई पॉइंट स्वाद आने वाला है भाई, स्वाद आने यार वाला कैमरा है को भाई। क्या हुआ, क्या है यार? सेवर्नी वाला ये बंदे की परेशान डॉक्टर, तेरी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है। तो ये गाली गलौज आज कुछ नहीं कर हाँ ना, आज कोई एक्स्ट्रा बकचोदी नहीं कुछ। जी भाई, गाली वाली तो दो ही मत भाई। तुम सेम जैकेट में तीसरे दिन स्ट्रीम कर रहे हो। सेम कपड़ों में चड्डी, सॉरी चड्डी चड्डी लगे। बदला है भाई ने। फिर क्या फायदा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या चड्डी तो बदल के आऊंगा ना, वो पंगे से डबल पंगे हो जाएगा। रोजों के पीछे आएगा कैमरा लाइट लास्ट, देखते हैं प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। भाई। अगर इनको जीत गई तो तू जाके उनका एनालिस्ट बन जाइयो भाई। बिल्कुल भाई, मैंने कितना सपोर्ट किया ना इनको को।
बीजेपी ने तो मेरे अरमान ही तोड़ दिए हैं। भाई आज को डीआरएस सारा को सपोर्ट कर रहा हूँ और नोवा तो टॉप 5 से नीचे रहेगी, वो तो मेरी प्रेडिक्शन 100% सच होगी। बढ़िया बढ़िया है ना, नोवा को सपोर्ट कर तू और ना इनको को सपोर्ट करिए, दो टीम छोड़ दे, बाकी कोई भी टीम चुन ले। डीआरएस है मेरी, S2G को भी मत करियो। डीआरएस तो सब कर रहे हैं, नहीं S2G को भी नहीं करूंगा। बस थैंक यू। और आई गेस आज का विनर होने वाला है व्हाट आई थिंक भाई इनको S2G और नोवा का नाम मत लियो बस, और किसी का नाम ले ले। नहीं वो तो जीतेंगे भी नहीं, आज जीतने वाला है कुछ अलग होने वाला है। रुक जा। ओ भाई ओ। अरे चल फुट आ गया, कम से कम फुट। ये आईएन या आईएचसी में जीत सकता है कोई। अरे ये मेरे को पता क्या लग रहा है, मेरे को पता क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? ले गया नोवा जीतेगा। फ्रोजन, जल्दी आना। अरे ओपन वाले को मारेगा फ्रोजन, ओपन वाले को एक को ले गया, एक को ले गया या नहीं लेके गया? जी जी लेट्स गो। अरे डाल ओ दिया। भाई दूसरी ना चुप क्यों है? क्योंकि दूसरी चुप है। अपने टीटो के भी नेपाल की टीम है। हाँ टीटो के अपने टाइम पे भी तो थी। अबे हाँ भाई इनके भी पॉइंट्स बढ़िया नहीं है। नहीं जोशी बोलता रहे तो इसकी बात हाँ मत बढ़िया, इनके भी नेपाली टीम की विन है। चलो 8 एंड में बात घंटे करते कैसे हैं। एक चेयर पे बैठ जाते हैं, हम तो 2 घंटे नहीं बैठ पाते भाई, मेहनत करनी पड़ती है अबे भाई। को टारगेट क्यों कर रहे हैं ये लोग भाई, पागल है। टारगेट कौन कर रहा है? पागल है क्या तू यार? तू ए जूसी तू ए मैं कसम, आप गाइस आप सही बोल रहे थे, जूसी का माइक म्यूट ही ठीक था। नहीं ऐसा किसी बोला ही नहीं है। किसी नहीं बोला, ये ऐसे बज रहा है भाई। पेल्ट्रॉन को पूछो फंगस उस पे हुआ है या फंगस पेल्ट्रॉन। भाई अब एनिमे डब में देखते, डब में देखता हूं भाई। हिंदी में देखता है ओमेगा। हां हां डब में नहीं सब में देखता हूं, सॉरी सब में सबटाइटल। ना 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 क्या लगता है कौन जीतेगा अल्ट्रॉन तेरे हिसाब से? तू जो बोलता है वो तो पत्थर की लकीर बन जाता है ना। S2G जीतेगी। कर दिया काल, कर दिया S2G बेचारी, लगा दी। पहले मैच का बताऊंगा कौन जीतेगी। ठीक है। अबे क्या लैग हो रही है ये भी? क्या हुआ भाई लैग? क्योंकि चाइनीज टीम थर्ड डे पे क्या कमबैक मारती है। ओए होए आज कोई कमबैक नहीं होने वाला, ये लोग का आने वाला है इस बार। इस बार उनका हो गया, बहुत हो गया। सोच लो चाइनीज टीम होगा सच में। 20 पॉइंट की ही लीड है बस भाई। इस बार डीआरएस अरे भाई का बताएगा सब AW से। अबे मैं थोड़ा सा कहीं और फोकस वाला बच गया। कर लिया, फोकस कर लिया सबटाइटल्स अल्ट्रा कैमरा साफ करो, कैमरा साफ करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, इसलिए कैमरा खराब है। इन गेम वॉइस बढ़ा दी। एंड आई डोंट वांट टू टेक पंगे क्योंकि ये ट्रैप हो जाएगा था। एक टाइम पे ना एक बोलो ताकि क्लैरिटी रहे। हाँ थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ प्लीज। दूसरी तुम प्लीज म्यूट कर ले। मैं नहीं कर रहा। अबे ये वेयरहाउस नए कैसे बन, ये वेयरहाउस नए बन गए क्या इसमें? कौन से? शोर पे हाँ 2 जगह पे अच्छे नए वो बने। वो अच्छा वो ठीक है। यार ये तो बढ़िया चीज बन गई है। और ये पत्थर वत्थर कितने बन गए भाई साहब, क्या होल्डिंग जगह होगी। तुम म्यूट कर ले। आप मेरे को म्यूट कर दो ना, एक काम करो अपने उससे जाके। थैंक यू फॉर द 40 ऐसा करो मूवी वॉच करो भाई, तेरी 200 रेडी। मावी चूतिया है भाई, ये सब ना देखो, ये सब बिल्कुल भी मत बोलो, मैं अगली बार से नहीं पढ़ूंगा। इधर चलो चलो के साथ छड़ दो। चक लो, मैं चक लूंगा लो। ओए चक लो, पिंडर नहीं है क्या आज? चक लो। पिंडर नहीं है आज। यार कोई पिंडर कोई नहीं है आज संडे भाई है। आपका अभी PMGC चिकन लिया रे तुम्हारा भाई तो भाई। हां थोड़ा ना चल। इतनी भसड़ क्यों हो रही है पर एकदम से स्टार्टिंग में एकदम सीधा जॉर्जो पे आ रहे हैं लोग की तरह। अरे ऐसा ही होता है, अबे सर्कल ऐसा है ना, सबको जल्दी क्रॉस करना है और उस टाइम पे भड़क भी हो रही है सबकी। अभी तन छेड़ के कॉल करूंगा। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई क्या ये 4M भाई, क्या बेची भाई। क्या किया ना उसने, गिरना चाहिए था, एक गोली नहीं लगा। वही ना यार 200 IQ, वही ना ऐसा स्प्रे तो होएगा, ऐसे ही कर देता है एक हाथ से। वही बे एक हाथ से कर देता है स्प्रे तो मैं। Currently 93.7th place. Nova only 3 points ahead of them. फेवरेट एनीमे ये Svan, the legacy player from this roster, keeping them 200 दे। हाँ भाई 200 और नो GP भाई वाला करियो मत भाई, भी जो आएगा इन GP लोग करियो। भाई, तो कुछ नहीं हो सकता। गाइस मेरा वो UPI लिखो चैट के अंदर जल्दी से।
फोर्स डॉक्यूमेंट्री हाँ भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ भाई, बार बार नहीं कंट्रोल नहीं करना होता है मुझे, आपका कंट्रोल दिखा। अरे भाई आज इतना ब्याह भैया नहीं यार, 200 बहन लड़ो योगेश तो नहीं भाई रहा कर लेगा, क्यों तू कर लेगा, कर पढ़ लेगा। रहा हूँ, गाली मत दिलाओ, फोकस करो, फोकस ऑन द गेम, लेट्स गो जोन वाटर सिटी। ये दोनों कैसा देखा नहीं मैंने, वाटर नहीं, सिटी तो यही लगता नहीं यही बनेगा। ये जाएगा वाटर सिटी पे। ये वाला पार्ट बताया था ना, नहीं ये वाला, भाई भाई व्यूज ऑन डीआरएस बहुत ये अच्छा वाला खेल रहे part हैं, बोला था ना बहुत मैंने। अच्छा। ये वाला इस बार उल्टा होगा, इस बार उल्टा होगा। And a lot of times 4AM really struggles when they lose players early on. They're not able to get themselves set up. They can't play their splits. They've been given enough time now, I'd हमने say, काल लगा that दिया, they इस बार can set सर्कल themselves up वाटर for a सिटी very नहीं strong जाएगा। late game without losing players at this current moment. Means that अक्षत कहाँ है? this could अक्षत नहीं be बता। a good क्यूब 4AM जाएगा game. सर्कल, ठीक है। क्यूब तो नहीं जाएगा, Influence पॉइंट Chemin as सेंटर है। well, shimmying around on that northern side. Alpha 7 just a little भाई bit to गॉड their west प्रेडिक्शन, right अरे now. 90 भाई तू Influence Chemin, the कैसी lowest बात scoring करता है? Brazilian team, but प्लेन पे in जाएगा 8th सर्कल, place with पूछ रहे हो 91 या बता रहे points. हो? Still in क्योंकि that आपने तो contest, भाई which is saying something. वो भी 3 लगा दिया। Brazilian teams here in the finals. We've got 3 Chinese teams. अल्ट्रॉन नंबर लीक, अल्ट्रॉन ऑलरेडी, अल्ट्रॉन का सब कुछ लीक है, दोस्तों क्या क्या लीक करूं? चुप हो जाओ यार तुम, तुमने तुमने ही नंबर लिख किया, तुमने सही तो है गेम साउंड, और कितना और बड़ा माँ भी पत्ता गोभी बने फिरदास, यस पत्ता गोभी लग रहा हूँ ना, तुम वो लग रहे हो, खीरा लग रहे हो, डार्क ग्रीन खीरा। लेना खीरा। मेरे को पता था ये यार बात। क्या यार मावी, क्या तब भी तूने वही अश्लील बोला, बातें कर रहे हो। मेरे को पता था तूने तब भी वही बोला। अरे बोलने के बाद रियलाइज हुआ ये बोलने का। एक बंदा डीबीएस और मिनी का कॉम्बो आया भाई, मस्त भाई। लूट ही नहीं मिली होगी बेचारे को। पिंडर कौन है, इसका जवाब देगा मावी। मावी ये पिंडर कौन है? अल्ट्रॉन का दोस्त है। मेरा दोस्त नहीं है ये। चलो सुनो सुनो सुनो, तो है। अबे सुनो बकचोदी बहुत हो गई, ये थोड़ा ध्यान दो गेम पे भी। भाई गेम पे ध्यान दो, भाई गेम पे ध्यान दो। वाटर सिटी पे एसटी पिक आ गया, ये S2G आ गई, अब देन वाटर सिटी आने वाला है, उसका बिट नहीं है, वो मैंने क्लियर कर ही दिया पहले। क्या गेम साउंड बोले जा रहे हो? क्या करना है गेम साउंड का? बढ़ाना है, कम करना है? सिर्फ गेम साउंड। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का, मैं कहूँगा ओहो एके साले 500 रुपए लगा के स्टिकर भेजा, कौन सा नूब का? T2K और DRS। क्या बोल रही हो? कम कर तो बोलो ना कि कम कर, मैं बढ़ाए जा रहा हूँ। यार बुद्धि से भाई। अबे अरे मैच सिर्फ पे भी गेम ध्यान दे साउंड लो, लिख रहे चूतिए, मैच सिर्फ को भी गेम ढंग से साउंड। देख लो। मैच को ही देख रहे हैं बे। ओमेगा भी प्रॉपर स्ट्रीमर बनने की वो कर रहा है, तो बाकी स्ट्रीमर कर रहा हाँ है। ट्राई कर रहा है, बक बक कर रहा है। खाम का वाली। ओ टारगेट कर दिया भाई, वाटर सिटी टारगेट कर दिया। भाई। क्या बोला था मैंने क्या बोला था? सर्कल कहाँ जाएगा? छोड़ो रहने दो भाई। क्यूब पे जाएगा, मैंने पहले ही बोला था। अरे वो क्यूब जाके मेरी सर्कल के पहले सर्कल में बता दिया। ओमेगा अगर तेरे को कहाँ जाएगा। अगर तेरे को इतना कुछ पता होता तो तेरे को कुछ होता क्यों नहीं है? हैं? अगला क्या? भाई ट्रॉफी लेके बैठा है बड़ी बड़ी। जसी तू क्यों कूल बन रहा ऐसी है? बात कर रहे हो भाई, इतना भी नू प्लेयर नहीं हूँ बहन जो, जितना तूने बना दिया जस्ट। ओमेगा सही है, आ सकता है। ओमेगा ठीक है। हाँ अगर तेरे को इतना ही पता होता तो भाई करता क्यों नहीं है? अच्छा भाई ठंड बहुत है, बट देखो ना ऑर्डर हो जाए। नहीं 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 गाइस, आई वांट डाइट। यार ओमेगा आप एस्ट्रोलॉजी चैनल खोलवा। अरे मैं छोड़ो भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा अब। वेरी चालाक ब्रो, मजा नहीं आया वैसे। है जिनके थैंक यू फॉर द 200 भाई। अंकित भाई स्टिकर भेज रहा है, डेड आइडियल। हैशटैग बना फिर रहा है। तो ऐसे दो प्रोडक्ट होंगे तो हर टाइम एक ही टीम होगी ना सेंटर में, ऐसा नहीं होता ना। होती तो है। भाभी क्या बोल रहा है ये सब? बेचारे यार S2G वाले कैसे पिट रहे हैं। ए ले फेंक दिया, ओरे बहन ओरे। अरे ये वुल्स वाले को कहाँ से दिया? नोवा ने दिया क्या? S2G वाले ने, S2G वाले ने, S2G वाले नहीं।
Bridge creator. तीन नॉक पड़े नो वाले हैं। किल उठा सकते हैं बे। थोड़ा सा ऊपर आना है इनके नोवा वाले। क्या एक बंदे को भेज दो कम से कम आगे पीछे। पैरा वो जस्ट डूइंग पैरा तुम सच्चे एनालिसिस तो है सर्कल की। अरे भाई ST आ गई, ST ले लेगी। ST कहाँ से खेल रही है? अच्छा वो वाली ST है। मनु समझा नहीं मैं। ये पैरा बॉय पंजाब दा हुंदा पक्का प्यारे दा मुंडा हुंदा। वाह ए यार कुछ भी बोलते हो बे, क्या हो गया तुम्हें? गेम पे ध्यान दो बे। आउट क्यों नहीं है? मेरी गलती है। काम होगा उसको कोई। तुम्हारा भी लैग कर रहा है क्या बे मावी? ये मेरा तो स्मूथ चल रहा है। प्यारू बलविंदर सिंह नाम होता है मेरा। पिंडरीना नाम होता है उसका। पाजी लगता है उधर तो नहीं निकली आज। यस यार वीपी ने तो नाक ही कटवा दिया पूरा। डिसअपॉइंट कर दिया। भाई वीपी लास्ट कैसे चल रही है भाई? ये तो PMWI जीती थी पूरा। हाँ तो वो जीत के हवा में आ गई है ना थोड़ा। gives four angry men as well some legs into the next phase. अभी नहीं चलता है कभी कभी किसी का। That cut does keep them in. पर इतना गंदा भी नहीं चलता, मतलब कि सीधा ही लास्ट। I think when you look at 4AM's position, it's actually incredibly good. Purely with where they're playing, they're a massive amount of high ground looking down towards the players underneath. एसटी वाले कहां से? अरे नहीं नहीं किसी और ने मारा है बे। S2G ने मारा है, दूसरे ने। मैं भी डर गया ये देख के। तो अब तो मार ही दिया बेचारे को। जिमी को क्या हो गया? जिमी ने कौन से नशे कर लिए? थैंक यू 500 अभिषेक। अरे भाई साहब अभिषेक भाई 500 जीपे कर देता है यहाँ पे लगा रखे। Open up a 7-8 point lead if they're lucky. See how much further they can go. Godlike Stalwart not stopping with just the one team. They want to try and take the second as well. भाई ये भी कर सकते हैं ruin the day of Wolves. मैंने S2G का नाम बोला था। बैस की टैग हो गई। Yesterday. Looks a bit better. I think that was just a case. अगला मेरे को लग रहा है एज निकालेगी। Invited teams. They didn't get to play. ये क्या हाल है भाई? मस्त है मेरा हाल तो बता। Again, still very admirable for this team to be where they ये बेचारा मर गया भाई ये WL वाले तो। वो सारा बीच में कर रहा है बोर्ड पे बैठ के। It's a lot to come into, a lot to figure out on the fly. Wolves now going down. iNCO moved across that northern side, like I said before. A bit of a dangerous push, but they made it happen. Influence came. चैट में ऐसे ऐसे लोग हैं ना बहन, किसी को किसके साथ भी लड़ा सकते हैं, पता है? ऐसी ऐसी बात लिखते हैं। 4AM though. Spot Nova coming towards them. Already find one, and I think it might be lights out for Nova at this rate. Nova with just order now to keep them alive. Repositions, maybe looking for the res over onto Paraboy. लाइक करोगे? हाँ भाई बे लाइक करोगे सारे मिलकर। Make that one happen. Probably क्या हो गया वे नोवा को? ये FF वाले इनोवा वाले नहीं आएंगे टॉप 5। मैं तो ये तो प्रेडिक्शन दे दिया हूं ऑलरेडी। और ये एसटी वाला देख कैसे ड्रिफ्टे मार रहा है। टी वाले भाई मानते ही नहीं है भाई, कैसे देते हैं। अरे भाई आ ला 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 ला। माँ में मजा तो बहुत आता है भाई, जैसे जब बंदे मारते रहते हैं ना, मारते रहो अलग ही स्वाद आता है। हमने नहीं मारा कभी भाई, हम तो बहाने ही लगाए हैं बस। Good stuff. Alter Ego on the prowl though from afar. Shots coming through. Stalwart taking a heavy amount of ये वाले आगे, ये वाले अब एक नॉक करते ही ऐसा चिल्लाएगा ना क्राउड। स्टेडियम फटेगा। Also looking towards his position. Mini 14. अरे भाई not quite able to spot. इसका नाम ही फ्लूक है, फ्लूक मारने की ट्राई कर रहा था। ये आगे पेड़ पे जाके नीड कर देना, स्वाद आ जाए भाई। भेज सकते हैं एक बंदे को ADS पे भाई क्लोज। वही करते हैं। Ravenclaw leads that charge. Alter Ego won't be able to spot that, but their shots. अब आओगे नेड भर भर के। मर जाएगी इस टीम में खेलते हैं। इतना भी सच नहीं बोला था यार, सच बोलने का मन तो कोई बोला था एंड तक वीपी को सपोर्ट करूंगा, बदल गया हूं। एंड तक किया तो 16 पे ले जाके पहुंचा दी। एंड तक सपोर्ट कर रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। बहुत गंदा खेल रही है। अरे जो हम कौन होते बोलने वाले। ये वीपी वाले की क्या एचपी है, क्यों है ये एचपी भी क्यों है? मेरा तो भाई बफर हो गया है।
That's 4 AM. Support coming वही on कैसे in. पागल हो रही है Not इनके around लिए the तो edge, but the भाई Vampires साहब not एसटी gonna टॉप ने stand बहुत too अच्छा much खेला है। longer there. ओए They'll बेचारा take the कितनी place एचपी and पे only अंदर 2 है eliminations. I wonder if क्या 4 AM निकाला बहुत पीछे चल रहा है this बे। one. This is uphill, so a little bit more of a tough क्या करूं भाई angle अब to मैं take 2x shots कर at ले 2x। towards. बढ़िया नोवा, वो पूरा ये करके रखा हूं ओमेगा बहुत की सारा S2G भी पिट गई Looking और for नोवा भी पिट गई, अभी इनको भी पिट trying जाएगी। to take shots at the हराम team को of और Stalwart, काली also जबान making आदमी। मेरी sure टीम तो Alter जिंदा है Ego अभी sent पर them फिर back भी and Alter तेरी Ego टीम है looking कौन सी? to send this one away. 4 Buriram, AM that Sky only running down one of Influence Chemin's players. INCO down to 1, they cut their 4 AM को तो losses, मैं स्टार्टिंग से कर रहा one हूँ of their players up towards the northwest side and A7 Vitali अच्छी जगह पे over है। center. Right now, will be earning 1 point just in terms of ranking. अरे अविष्कर भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। A7 सकती है वैसे पूरा बफर हो गया रे। मेरा भी हुआ। इस बार तो सेम मेरा भी हुआ है। Any kind of points you can get at this point is तुम लोग को बफर करके मेरे बराबर ला रहे हैं लोग किसको सपोर्ट कर रहा है भाई तू? गाइस स्ट्रीम सबको देखते सपोर्ट देखते करो। लाइक भी कर दो भाई। edge playing team. दिल से DRS। Best in the lobby. They'll be playing from that north side. और बच भी जाते हैं मैच, तो देखो कैसे बच के अकेला जाके सबके बीच में से। अरे डिवाइस थोड़ा वैसा होता है ना। ये इनको वाला कहाँ बचा हुआ है, मेरे को देखना है बे। Of this game so far. मार के चला गया मुंह के सामने से। अजिंक्य भाई जरूर फाड़ेंगे इधर से फाड़ेंगे। शैक वाले तो मर गए, ब्रू तो मर गई बेकार पोजीशन। अरे यार वो ऊपर वाला मर गया, बेन का बंदा। बढ़िया, बस 4 AM का चिकन आता है ये वाला। बढ़िया डीआरएस मार रही है बे, बहुत बढ़िया। क्या मार रही है, एक की तो किल करा है। भाई बढ़िया नेट है बे ये। भाई अबे ये क्या हो रहा है? क्या मार दिया बे डीआरएस ने? एक बंदा खो दिया है। लेट्स गो बे। नशे करके आए हैं बे ये लोग, गुस्से में आए हैं। भाई आप अचानक से मोटे कैसे हो गए? भाई मैंने खूब भर लिया अपने अंदर। ओह बढ़िया मारा बे लॉन्डे ने। But unfortunately, across the way, it's Alpha 7. सर्वा 7 की पोजीशन Alpha 7 अच्छी लग taking रही down. है। सबसे अच्छी पोजीशन उनकी है। Well, Buriram saving the lives of their Brazilian brethren. Really डीआरएस good stuff मोमेंटम there. क्रिएट कर लिया वापस से, बढ़िया। But that season with 3 eliminations now, but 4 AM not quite done yet. Losing one player is a little bit problematic. GEEK DRS को ज्यादा ही आउटप्ले कर रही है, पता है? बढ़िया मार रही है। IHC looking to sweep on that northern side up towards Influence Chemin, but A7's got this real crazy lineup. डीआरएस के प्लेयर सारे पुराने ही हैं क्या? हाँ बहुत पुराने प्लेयर हैं सारे। यो भी टेल लो ब्रो, तू कनाडा लेती है। 4AM take themselves up to a hefty 8 elimination. And congratulations for your car. Now with Stalwart also on 8 eliminations. How can we do? Influence Chemin moving on through. I say. ओए यार, अरे 2 बार पैसे भेज दिए अभिषेक तूने, 180 है। ये मैच में ना अल्ट्रॉन, ये मैच में ना इंटेंसिटी हो रहा है। Wide spread on that northeast side. ये कुछ इंटेंस फीलिंग नहीं आ रही है। Ziolt gets away from the क्योंकि क्या ऊपर कि ये मैच इंटेंस है? नहीं, ये मैच इंटेंस नहीं है, Tucks it back behind तो the head. क्या 21 इंटेंस नहीं फीलिंग आ आ रही है? जोन वैसा है ना। Too much value other than suppressing IHC from swinging out on the north. एरिया कम है खेलने के लिए, सबको लड़ना पड़ रहा है। Lost one 4 AM पे player. चला गया जोन, बढ़िया। Is a very good chance now. I think for 4 AM, पोछा लगा दे। massive game at the start of the day here. It'll see them in a position where they can fight out for that first place spot. INCO though still alive with Vitali. न्यू प्लेयर है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? सबसे ज्यादा किल किसके हैं? 4AM और ST के। बेचारा ऐसा वाला। बहुत 4AM भी बहुत अच्छी पोजीशन जानते कितना है। 4AM अब 4AM की सबसे प्राइम पोजीशन है। IHC. अभी 7 वालों को मारेंगे pushing लोग। in from the north. भूपेश By Alpha 7 Agmad। somewhat, and directly into the lines of fire with 4 angry men who have been a massive force. As you'd said, 9 eliminations so far in the game, but they will hold their line. This hillside has been their sanctuary for so long. It's a really difficult position to push up on. हरियाणा में ठंड ठंड कर रही है। नहीं बढ़िया है, ठंडी होनी चाहिए। As 3. When you have 4 players, it is infinitely easy just to keep players off that position. But WWX has to hold the southern side all by himself. So if Stalwart, DRS wanted to swing in on that DRS side, he'd have to बढ़िया hold है। it basically a solo gunman, because as soon as he goes down, they must weaken that northern side, which is another really good point to just crash upon. Killer Delta new है। Play here onwards.
ये विशेष विद वाइब्स वाली लाइन भी तो है। मिथिक बहुत अच्छी पोजीशन पे था वाला। ओहो DRS को पीटी हो गई ले बे। ये बंदा अकेला नेट फेंक देगा। हो गई। छी बे। Found and DRS cut in half for the moment. Legend looks to burn them away with that Molotov as well. Rules and Delta, they're not moving. Are they just getting? भाई मैं भी ये सोच रहा हूँ भाई, तुम में से किसी ने देखा इनको वाला अकेला बंदा कहाँ छुपा हुआ है? पता नहीं कहाँ है, नहीं दिखा। भाई वे दिख ही नहीं रहा है। A solo player from T2K. बेंच पता नहीं कहाँ है छुपा हुआ है। Changed the tide of और ये the तो जिंदा भी है। Alpha 7 now with so much more room, and they've already started to take care of IHC on their western पॉइंट तो edge. निकाल गया IHC पोजीशन getting 6 absolutely पॉइंट blasted apart at the टॉप 5 moment. सात के क्या पॉइंट है? 2 पॉइंट है। Let's just rock this entire lobby's lives. कर जाएगा टॉप 5 अभी तक बचा हूं तो वो Shrapnel all over the place. DRS वालों की जगह तो बढ़िया ही है यार, ठीक ही है अभी तो सही खेल रहे हैं। टॉप 3 तो आना चाहिए उनको। वो बैठा है इनको ST की तरफ। अच्छा उन पत्थरों पे है क्या? हाँ। भाई मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? वो देखना आधी HP पे है बेचारा, मरने ही वाला लग रहा है। ओ हाँ दिखा। Legend spotted. Rules with a little bit of retribution. वो DRS एक बंदा बच गया, चलो बढ़िया है। Third player on the DRS roster, but that क्या leads DRS to के 3 बचे हैं? advantage. तू अल्ट्रा एक टीम का सपोर्टर है ना साले, दल बदलू। I mean, this is एक टीम मर जाती है फिर दूसरी ऊपर के बैठ जाता है पनौती देने। हाँ। साइड हो गया ना perhaps the defenses DRS से and जाता है। senses of a lot of these आया। teams. He's अंदर आया ना बेवकूफ। Geek leaving top as the final player. Vitali will finish off. ओ भाई क्या बचा हुआ है इनको वाला? And now top टॉप को दिख रहा होगा है नहीं है? sixth place finish. If वो Vitali मार दिया wins उसने, now, पीका को मार दिया। 4 AM, this is a ये रहा really इनको वाला good अभी start. दिखाया है। Flux isolates दिख गया, WX इसने पीका को मार on दी। that south side, means there's अभी less किल फीड में आया था, नॉक कर रहा है पीका को। care of. मम्मी अबे थी तू मुझसे पीछे चल रहा है क्या साले? Consolidate their forces a little bit more. They do need to wait for वो that to पीछे happen जाता है। though. It will be a little time, but with IHC and Alpha 7 किल किसी और ने लिया मेरे को लग रहा है उसका बेचारे का। ओ भाई लेफ्ट 4M पे जोन है, मजा आ बेवकूफ गया। तू मम्मी जी। अरे मम्मी भी ना, मम्मी को कितनी बार बोल के रखा है। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली को कैमरा के आगे लेके आऊं। अल्फा 7 और 4M की फाइट होने वाली है मतलब फुल। मेरे को अच्छा की बात नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहता हूं बस। 4M के बाद लूट दे भी होम लेके बैठा है ओ भाई पुश कर दिया इस ने। बाबी हो अरे पागल लोग, मम्मी है, बहुत पीछे है, आंटी है तुम्हारी। पे डिटेल्स सॉरी मांगो, बहुत सॉरी मांगो। मम्मी जी ने चप्पल नहीं लाई, बस बच गया। नहीं मम्मी अपनी स्वीट है, मम्मी ऐसा नहीं बोलती। मतलब वो जैसे फ्लो में बोला जाता है, ऐसा कोई मैं मम्मी को उल्टा नहीं बोलता। लाइक 3000 गलत बात है। ओ भाई आई डोंट से वाला एनीथिंग नहीं बैड मान टू रहा माय भाई। पेरेंट्स। मैं बता रहा हूं भाई ये इनको जीत के जाएगी, मैं देख लियो। सॉरी बोल रहा था, नहीं बोल रहा। अरे टेंशन नहीं है कोई ना, अपना अरे चिल इनके बीच में फ्रेंड की तरह रहते हैं। एशियन वाले ज्यादा करते हो, ज्यादा करते। क्या हुआ? इनको अभी भी जिंदा है। 2x कर रहा है। गलत टीम पे पुश कर दिया इन लोगों ने। 4M पे ऐसे छोड़ मेरी स्वीट कोई नहीं देखा यार, घर पे आया था इतना सब। अरे वो बच भी गया। आ भाई मर जाएगा। भाई देखता पत्थर जोन बेकार नहीं है ये। जोन नहीं है उस पे। एक नंबर 4 मर AM, गया। लेट्स गो। अरे बहन के हां नहीं जी, जी। है 15 किल बे। यही तो कह रहा हूं ना, जीतेगी 4AM देखो आ तुम। बे लौड़े तू बैठन, तेरी टीम है क्या? इसने प्रेडिक्ट किया भाई। कुछ नहीं कर रहा। डीआरएस टॉप 3 ओपी, बस मेरे को यही चाहिए था, टॉप 3 चाहिए था अपने को। आ गए अभी मुश्किल है। ये तो होम चटका देगा अभी। नहीं अभी डीआरएस नहीं, ये 4M का गेम है। जगह नहीं है ना, डीआरएस के पास जगह नहीं है। अगर एक नॉक दे दिया ना राइट वाला एक knock। सावन भाई फैन स्वाद। है। अरे उस नॉक देके उनको निकलना भी पड़ेगा गाड़ी लेके, उनके पे जोन है। वो लोग आया, लो किया वो लोग निकल नहीं रहे हैं वहां पे। DRS जोन है ना, अगर अबे सिर्फ इस सर्कल तक रुकना है उन्हें, अगले में तो फिर स्प्लिट हो सकते हैं। अभी तो दूर से दिख जाएंगे, इस वजह से नहीं लेट पा रहे वो। हाँ अगले सर्कल में तो ये इनके नीचे ये लगा लेंगे और वो फिर स्प्लिट हो जाएंगे, फिर पूरा प्रोनिंग वाला बन जाएगा। मेरे ख्याल से अगला सर्कल ही लास्ट है या एक है अभी, एक है। है Through the smoke. This is so smart from 4AM. They really are setting up this end game very well. They're already inside the next circle, which was their biggest problem, John.
Two players move forward and Artington is given that platform to बेचारे DRS वाले यार क्या बेचारे रोटेशन रखनी पड़ेगी इसको इनको। मिनी से ना दे दे नॉक बस। पर वो तो खुद आगे आ रहा है। हो ही गए सेटल 4M वाले। अरे 4M का गेम है। डेल्टा का नेट लग गया ना, स्वाद आ जाएंगे। गाइस अगर आप लोगों को मजा आ रहा है देखने में ये भूत की वॉच पार्टी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 200-300 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को। सेक्सी ओ। डेल्टा का नेट दे दे। अपने को 200-300 सब्सक्राइबर चाहिए अपन दोबारा फिर 12.7 पे हो जाएंगे। अरे यार जीत गए। Svan's taken this all home by himself. 15 eliminations so far. They want to rack up 18 blank. It would be a monumental 33-point game for them. And Delta is going to go down a 16 point on the elimination. नहीं क्लोज रेंज हो गया। मर गए। एक नंबर 17 कितने किलो गए इनके? 18। एक नंबर आगे सीधा ऊपर सेकंड नंबर पे आ गई शायद। शर्म कर लो भाई 8K पे 4000 लाइक। अरे गाइस ये लोगों मतलब आप लोगों की मर्जी है ना आपको जैसा सपोर्ट करना है। हाँ गाइस जो भी नया फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई। 3000 लाइक कैसे है बे? 33 पॉइंट ले गई भाई। 4M कौन सी पोजीशन पे थी? सेकंड पे आ गई। अब सेकंड पे आ गई है। 6-7 पे थी अब सेकंड पे आ गई होगी। We still got 5 more to go. I mean, with that 93 point mark, I think that sits them in a really good position now. DRS को बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है बताया। But regardless, that is what they wanted right at the beginning of the day, is to be in a position where the chase DRS भी विनर बन सकती है अगर ऐसा ही खेले लास्ट मैच तक। ऐसा नहीं कि प्रेशर ले ले यार। जब मतलब नीचे वालों के बीच वालों को उतना प्रेशर नहीं होता उनके अंदर, वो तो पम्प्ड अप होते हैं। बट जो फर्स्ट पे होता है ना उसको बहुत डर रहता है खेलने का। ट्रॉफी बहुत सेक्सी है बे। This guy 1100 damage with the help of WWX, but look at the damage across the board. It's so even with good shell going down early. The fact that all these players put in the work next second astonishing to me. And they traded that off. Huge value for the position that they held. Yeah. They got there so early as well. Set up off the back of it. I mean, taking all these long-range weapons, in which case they were just adding to these fights, getting involved just a little bit. मैं भी क्यूट था। क्यूट तो नहीं हूँ बे, ऐसा तो मत बोलो। मैं कौन सा अल्ट्रॉन हूँ ये क्यूट हो जाऊंगा। वो भी डालने लग जाना भाभी वैसे फोटो। क्यूटी वाले ओमेगा तू मत बोल। पहले तो मेरी बीवी मेरे को घर से निकालेगी, फिर मेरे पापा घर से निकाल देंगे। ओमेगा तू मत बोल, तेरी फोटो तो बहुत ज्यादा ये वर्ड ले नहीं सकते। 4M की पुरानी याद आ गई। 4M तो है ही भाई किल फोकस वाली टीम। लाइक करने से मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? सेकंड टू फिफ्थ ओनली 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है वो भाई। वन साइडेड छाती फुला के डालो। अरे नमन भाई कहाँ माँ की अपनी करवाने आ रहे हो तुम? क्यों मतलब मजा नहीं आ रहा है क्या? चाहते हो ना कि तुम कुछ तुम्हें टोचन मिले? अबे इन लोगों जैसा है प्रोडक्शन टीम हाइलाइट्स दिखाती होती हैं तो ये इतनी फास्ट क्रॉप करके एडिट कर लेते हैं, या मतलब इनके पास ऐसा कोई फीचर है कि अच्छे हाइलाइट्स अपने आप रिकॉर्ड हो जाते हैं? अबे होता रहता है भाई, सिर्फ एक जगह पे थोड़ी चलती है स्ट्रीम। हाँ वही बोल रहा हूँ, एडिट करते होंगे ना इंस्टेंट पे आने तो। हाँ वो चलता रहता है, मतलब हाइलाइट्स वाली टीम अलग अलग ऑलरेडी वो करती रहती हैं और अपने को डिले भी तो रहता है वहाँ पे। तो बहुत लाइव चल रहा है तो वही 20 मिनट डिले होता है। हाँ ये भी है। What an absolutely unbelievable game coming in from 4 angry men. ओमेगा की NV 16 पे, ओमेगा की S2G 15 पे और ओमेगा की इनको 5 पे। इनको फिर भी बहुत आ गया अभी। अरे इनको जीत के जाएगी। Pretty significantly. 4 angry men
we could talk about this game, I think, for ages, Seven. The execution was close to maybe even we could say flawless. Yes. They were not in a great position. They had to push against DRS that had all the information, such a good defensive position, and yet they just pushed their way, their way forward, step by step by step, and the moment they're in there, it is not going to go away from them. Little by little, just inching up, but I do have to appreciate what they did even before putting themselves into that situation to be in the end game. इनको एक्सो जैसी लग रही है, उसका मतलब मैं समझा नहीं किस वे में टारगेट कर रहे हो आप लोग। अरे मतलब पोजीशन वाइज हर बार सर्कल ओरिएंटेड खेलती है ना, और एंड में आके चोक कर देती है। उसी हिसाब से पेल रहे हैं ये तो उन्होंने नहीं बोला था, ये चोक वाला तो ओमेगा ने बोला भाई। पब्लिक बोलती है ना इसका भी, नेक्सो का और ओआर का। The MVP of 2 years ago over in Dubai for the grand finals of 2020. ओआर सेमीफाइनल तो ऐसा चल रहा है बैंड तो पता 7 eliminations. यार अभी ओए सुनना अल्ट्रॉन, अभी स्पोर्ट्स का लेवल मतलब काफी आगे जा चुका है। जैसे अभी मान ले जो भी टीम PMGC जीतेगी वो कैसे सेलिब्रेट करेगी? इंडोनेशिया में है, सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है भाई। नोवा यार हर चीज का बकचोदी मत क्या कर हर चीज को। तो मैं बोल रहा था कि नोवा का सेलिब्रेशन और बाकियों का सेलिब्रेशन बहुत अलग होता होगा ना, क्योंकि वो लोग तो कब से सेलिब्रेट करते आ रहे होंगे। वो तो बोलते होंगे ठीक है यार घर चलते हैं क्या है। पैराबॉय के पास होगी है ना, रोल्स रॉयस तो होगी। नहीं उनके वहाँ पे नहीं होती भाई रोल्स रॉयस। क्यों? उनके अपने बाहर का वो अलाउ ही नहीं करते शायद। ऐसा नहीं है। And on top of that, he did have to snake for a long time, but when he got a chance, he decided to get some eliminations, and I thought that was massive. उनके वहाँ पे वाला की सुपर कार्स होती है भाई, वो मॉडिफाइड वाली। And with Nova, बोरिंग क्या करूं ब्रो? आकाश चौहान A7 भी मस्त है हाँ। जान दो फिर इंटरेस्टिंग होगा। क्या ऑडी? अरे नहीं टीम की बात कर रहे हैं भाई, गेम की बात चल रही है। A7 है भी ओडी, मेरे को तो पता भी नहीं है भाई। चूतिया अल्ट्रॉन चाइना में रोल्स रॉयस भी अवेलेबल रहती है। हाँ ना ऐसे चूतिया। मैंने बोला था अल्ट्रॉन को क्यों पेल रहे हो? मैं अपने गुण गिरा चुका हूं। नोवा कमबैक होगा, टॉप 3 में आएगा। अच्छा देखते हैं भाई। यार अब मेरा ना कुछ डाइट फूड खाने का मन कर रहा है, डाइट फूड खाता हूँ। भाई यार प्लीज फूड की बात मत करो, डाइट ही खाऊंगा। नोवा कमबैक गेम देखते हैं। एसटी एकदम से ना आ जाए कहीं पर। अरे कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है यार, 9th तक तो है ही, 9th और 10th तक तो सबके पॉइंट में इतना फर्क है ही। अल्ट्रॉन आलू वाला समोसा डाइट में होता है क्या? नहीं नहीं पागल है, आलू तो खा ही रहा भाई। आलू मत खाओ, वो मंगा लो महावीर के। तुम तो रहो भाई यार वो रेस्टोरेंट कौन सा था बंद हो रखा है वो? S2G, one of the top Miramar performers right now. If they can perform right now in this match, they can claim है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट अपने कंट्री बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करता है भाई, वो तो हर खाने का ले आओ। वो तो हम लोगों को भी 220 पड़ते हैं भाई। संगरूर में कैफे ओपन हुआ है, डैडीज कैफे। अंकल का ही नाम एक बार पूछ लो नीचे जाकर। अगर तुम्हारे अंकल का एक कैफे खुला होता तो उसके पहले तुम्हारे अंकल 30 दिन तो पार्टी करते, जितनी उसमें से कमाई होनी थी वो पहले खा जाते। और कैफे शाम को 5 गेम लड़ गया लग रहा है लाइफस्टाइल से गेम तक जरूर भाई ट्राई करेंगे, फुल ट्राई करेंगे। हां ब्रो गोल्डन कौन ट्राई किया क्या? आलू डाइट में वाह, तो मेरे को बताओ ना डाइट में क्या होता है, मैं वो मंगाता हूं। चिकन हां नॉनवेज मंगा लो कुछ बढ़िया, ऐसे अनहेल्दी नॉनवेज मत मंगाओ। नॉनवेज मंगा लो हेल्दी।
and let Alpha 7 be aggressive towards somebody else. It worked out wonders. बटर चिकन नान मंगाओ भाई, क्या अब तो शादी हो गई, क्या करना है भाई। और क्या, खाते पीते कर 60 किलोमीटर से ना चप्पल उड़ती आएगी सीधा मेरे मुंह पे लगेगी। अरे अब तो भाभी गई हुई है तो स्क्रीन देखती है ना, मार देती है मेरे को, क्या करूं। कोई दिक्कत समोसे खा सकता हूं। तुम्हें तो चप्पलें कौन सी मारती होगी, तुम्हें तो मारनी भी वो वाली पड़ती होगी जिसका समोसे पूछता हूं। ओए अल्ट्रॉन, ये मेरी फोटो देख ले, छोटा था तब मैं। तुम अभी छोटे थे, देख अपनी पूरी फैमिली की है। बुआ जी ने भेजी, तुम देख ले। मैं तो बुआ जी से बात हुई है एक दिन पता है कॉल पे। क्या मां छोड़ रहा है, सारी फैमिली का नंबर ले गया क्या? अरे नहीं, देख गुरसिम को कॉल किया था। देख तुम कैसे, तुम पता है बच्चे भी क्यूट थे, हाँ। लेकिन तुम जवानी में बहुत गंदे दिखते थे। क्या हुआ? स्कूल वाली हाँ जो 2-3 फोटो बीच की लगी हुई है ना, हाँ। पे नहीं, उसमें तुम ऐसे लगते हो जो वो भैया नहीं होते गंदे काम करते हैं, हाँ। पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, वैसे लगते हो। और अभी अब तो फिर वो पैसा हिट हो गया ना सीधा, अब तो पर्सनालिटी के लिए। अबे मैं तो फोटो भी खींच के लेके आया हूं एक ग्रुप। अल्ट्रॉन, अगर पैसे से पर्सनालिटी आती तो सब पर्सनालिटेड होते। खराब होती है। हाँ, पैसा पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। कहाँ पहुंचना चाहिए? अरे मैं कह रहा हूँ पैसा आना चाहिए भाई पर्सनालिटी सुधारने के लिए। अच्छा, वो एक अमाउंट होती है ना, तुमने हिट कर लिया होगा। ओल्ड सेटअप कब मेरी जान? ए बहन के लड़े बकचोदी खेलते देखो। ए मेगा मेरी फोटो खींच के लेके आया हुआ है। अल्ट्रॉन ये वाली बोल रहा है। यार आपको दिखाऊं मैं? चैट को दिखाऊं? दिखा दो रुक जा, मम्मी की फोटो, मम्मी की काट देंगे। हाँ। तो ऐसा लगता था जो सिगरेट पीता है पूरा दिन भैया पेड़ के नीचे बैठ के रोटो साथ में देखने जुगाड़ करना रोटो का यार। ये पता है कब की है? जब ये आईटी में थे 2017 की है, मामू की शादी की है। करते हैं पर कुछ। और हाँ ना, इसमें तो पूरा मेरा तुम्हारी टीम आई है, पूरा वही लग रहा हूँ मैं, वही। आईएचसी का प्लेयर गॉडलेस अच्छा है भाई, बस अभी थोड़ी सी डेड हो गई है आईएचसी। मैच स्टार्ट हो गया अगला? नहीं, 3 मिनट है भाई। नियो तो चुप से बैठा है, नियो हम तो दिखा रहा हूँ। क्या हुआ? क्यों बैठा है? क्या बोल रहा हूँ? यार तुम इतना डरोगे फोरम इनको में से कौन लग रहा है अभी पता नहीं है। किससे डरने की बात कर रहा है तू? बटर चिकन खाने से पहले सोचेगा क्या? अरे तू बात कर लेना, फिर तू कर ले अपने भाभी से बात, देख ले मैं कर लेता हूं भाई, मार्केट खाने से आएगा। देख ले अब तू, तेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। हाँ तेरी टिकट कट जाएगी। फिर ओए ओमेगा स्टैंडिंग्स आ गई। भाई तो गलत बात है, तुम तो बहुत दब गए भाई साहब। दबना नहीं होता, वो मेरे लिए अच्छा है ना अगर मैं सही खाऊंगा तो। अच्छा है, ये बहुत जल्दी रियलाइज हुआ ना शादी के बाद। I was very surprised none of you guys were talking about T2K. संभल हो गया मावी हमारा। एक सेकंड, तुम चश्मा पहन के बैठे हो क्या स्ट्रीम पे? हाँ। इस आदमी का फ्लेक्स खत्म। मैं वो करता हूँ, फोटो निकाल के चैट को दिखा रहा हूँ। अब मैं खुद की शक्ल गए देख लो। We are into, I think we're into, oh yeah, here we are. We are into ये देखो मावी कैसा था। match number 14. भगवान का सबे वैसे ही लग रहे हो भाई जैसा उन्होंने बताया। जो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हैं, गुत्थम गुत्थी कर लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता। छपरी यार, छपरी नहीं था तब, पता क्या था तब मेरे को ना हेयर ड्रेसर ने स्कैम कर दिया था मेरे साथ, और कुछ नहीं। ये हेयर ड्रेसर नहीं, शक्ल की बात हो रही है, बालों की नहीं। शक्ल तो चलो जैसे भी थी। ग्लो आ गया तुम्हारा, लाना पड़ता है ना, पैसा आ गया। तेरे को बताया था पैसे हुआ था तो। अरे हाँ, एक सेकंड चैट भेज रहा हूँ कुछ।
तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? जॉ लाइन तो देखो पैन के ठको, तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? छुट्टे बात लग रहा है। little bit of stock checking. Crowd obviously really नहीं। excited to be here. And I'm also really excited to be here just because of how amazing General- the crowd has been. Hello my friend, my AirPod buddy. भाई तुम तो स्मैक ही लग रहे हो, वो क्या होता है अब यार? Fantastic. हाँ समय किया नसेड़ी Everyone दे दर्जी लग रहा है भाई। took a record of when they were here. When 4 a.m. Smack The only you. time when you're allowed to take a selfie by हाँ हमारे using यहाँ बड़ front होता है। camera. पता है। Taking a photo of just the old screw. अब बस तुम अगर अपना प्लेट कम कर लो This तो should be a fine। good map though. And again, बढ़िया, no complaint path husband will go level। from El Pozo to Junkyard. हस्बैंड Match मटेरियल। four, second match of our day. 3. यार है ना, पहले मैं बच्चा था, फिर मैं Starting to बॉय really बना, फिर मैं मैन बना, here, John. भाई मैं हस्बैंड बन गया, फिर मैं पापा बन जाऊंगा। पापा तो मैं हूँ पहले अल्ट्रॉन का, Performance there. फिर मतलब मैं अपने अच्छे बच्चे का बन जाऊंगा, फिर मैं दादू बन जाऊंगा, फिर मैं Nice and राग early बन जाऊंगा। towards the top of the standings. A really चलो good भाई chance मैच for शुरू हो गया। yourself. A106 का जुगाड़ करेंगे यार भाई। Games there whatsoever. चाय और बना लो यार बढ़िया सी। But yesterday, क्या बोला तुम यार? they picked up the मेरा कुछ पापा खान बोलो चाय बनाए। बहन से बाप से चाय बनाएगा अरे मेरे पापा बैठ मोबाइल के गेम कुछ नहीं पढ़ने खेलता की। मैं। यार। मैं ना परमिशन लेता हूँ कि मैं वो पूछ के करूँगा, पूछ के देखता हूँ कि समोसा खा सकता हूँ क्या। ओहो भाई भाई मैं गेम में फोकस, लेट्स गो। गेम में फोकस ओए। denied at the final turn. They had a pretty big Having game gone themselves down, as well in the previous game, so it is very much tenuous. I think ये सर्कल लॉस DRS जाएगा। अच्छा अभी से पता चल गया। लॉस तो सारे जाएंगे भाई, ये सर्कल देख लियो तू, लॉस तो जाएगा। लॉस नहीं लॉस नहीं जाएगा। ये एक माउंटेन ऐसा सर्कल आ जा माउंटेन भाई जो लॉस जाए ना, आएगा नहीं लॉस के आएगा, आसपास भी ना हो, बिल्कुल ऊपर चले जाए। देख लियो क्योंकि तो ऐसे लॉस ही जाएगा, दूंगा ना यार। लॉस ही जाएगा सर्कल। अरे 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 4 एम बेटा सेकंड पे जेबा। इनको बेटा फर्स्ट पे है। अबे हेलो। फर्स्ट पे तो क्रेम। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्या फायदा? मैं मेरा क्या फायदा? मैं क्या करूं? आप सो रहे हो? भाभी को कॉल किया शायद इसने। तो क्या मैं 2 समोसे खा सकता हूँ? ये देखो सर्कल तो बन गया अभी, ऊपर का बना है। तो क्या खा सकता हूँ? एल्पोजो है। का लग गया, एल्पोजो का सर्कल बना है शायद। चोरू का ऑमलेट कौन खाता है? बन के रहूंगा। गुरु का गुलाम। समोसा एक खा लो, एक समोसा हेल्दी होता है। छी भाई क्या मावी छोड़ के गए थे। भाई और क्या हो गया भाई अपना मावी? मैं आटे का समोसा बनाता हूँ। आटे का समोसा भाई, ये भाई चलो भाई मैं सेव कर लो भाई। ये वो बंदा है जो ऐसे नाप के नान खाता था बे। क्या हो ये गया? सात तो मेरे हैं। 4 लोग के नाम खाता था। बहन के लड़े पंप दे देंगे ना, मेरे को समोसे खिलाएंगे घंटे में लोग। ठीक है। समोसा भी भाभी को कॉल किया था तूने? हाँ, कितना महंगा हो गया भाई समोसा, बैंड तो 20 रुपए का हो गया है। अरे भाई ये ड्रामे देख ले। ड्रामे देख लो। मावी मावी ना रहा, हरमनदीप से घरमनदीप हो गया मावी। कैसे है भाई? जोमेटो वाले क्या स्कैम कर रहे हैं? बोल रहे हैं 75 रुपए अभी दे दो इकट्ठे, बाद में 10 डिलीवरी के पैसे नहीं लेंगे। अबे यार शादी के बाद यही। ये डर अच्छा लगा गाइस। समोसा इज द बेस्ट थिंग टू इट। बाय द वे हमारी सिटी में ना एक पेटी समोसा है, वो अरे सच्ची में सिटी समोसा से मंगा रहा हूँ, वो हेल्दी समोसा बनाते हैं। अच्छा 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 Oh my God. भाई समोसा हेल्दी हो ही नहीं सकता है, तल के बनता है यार। अरे वो दूसरा है, वो फ्राइड समोसा है। एयर फ्राई एयर अरे वो नहीं फ्राइड समोसा है, वो तला हुआ नहीं है, फ्राइड समोसा है अल्ट्रॉन। कैसी बात कर रहे हो तुम? वहां ले लिया क्या तुम्हारा? फैमिली मैन बन गया है। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ देख, अनहेल्दी समोसा होगा ना, ये बंदा 2 खा के रुक जाएगा। इसको बता देना हेल्दी समोसा खा लेगा, खा लेगा कि चलो हेल्दी है। नहीं अभी तो मैंने अरे मैं ज्यादा नहीं मंगाया, मैं 6 ही मंगाया हूँ। 6 मंगाए समोसे? अबे चूतियो, घर वालों के साथ रहता हूँ मैं, अकेला नहीं रहता हूँ। कई बार नीचे किसी का खाने का मन बन जाए, अगर 2 मंगाया 1 नीचे निकल जाएगा।
उससे तो 6 मंगा लिया तो 2-4 निकल जाएंगे, 2 तो पहुंच जाएंगे ना। नहीं अगर नीचे किसी का मन नहीं बना तो 6 तू ही खाएगा। नहीं तो मैं 2 खाऊंगा, 4 रिंकू खा लेगा। अरे तू ही है रिंकू, रिंकू इसी का तो यही है रिंकू, दुनिया को पागल बनाता है रिंकू के नाम पे। ओमेगा तेरे को पेट का नाम ओमेगा तेरे को अपने इधर का एनवायरनमेंट कैसा लगा था? मतलब एनवायरनमेंट इन द सेंस वाइब। घर का? हाँ घर का तो बढ़िया ही रहता है बे, घर का तो अपना अपनेपन वाली फीलिंग रहती है। अपने एरिया में तो रहता ही है भाई, ये ऐसा लगता ही नहीं कहीं और आए हुए हो। वो अलग बात है, माँ भी हमें नीचे सुला देंगे खुद ऊपर सोता था मोटा। नहीं भाई माँ कसम 5 लोग कराटे मारते थे यार एक साथ। मतलब एक रूम में से ना सारे कॉर्नर में से कराटे, सराउंड कराटे आते थे, सराउंड। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये भाई एंड पे कराटे आते थे। एंड पे गेट खोल के कहते हैं अरे यार ये भूपेश ना, ये भूपेश ग्रुप में लिख रहा है यार, भूपेश पैड तो तुम रंजी काम मुश्किल कर दे। अबे मावी तू सो रहा था ना पहले दिन, हम आए अल्ट्रॉन बाहर आए कच्चे कच्चे में हमें लेने, बोला ठंड बहुत है और आके बोलता तुम लोग सो गए कहाँ? मैं बोला भाई प्लीज कोई तो जगह दिला दे। बोला पहले बताना था ना कि इस टाइम आने लग रहे हो। अंदर जाते ही देख रहे भाई खराटे पे खराटे, खराटे पे खराटे। भाई ये तो नहीं हो पाएगा, इनको का रोटेशन नोवा फॉलो कर रही है। अच्छा ये क्या बात है? नोवा पिटने वाली है फिर से? वहाँ तो ट्रिक थी, जो पहले सो गया बढ़िया भाई। अरे भाई 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 जो पहले सो गया वो मौज। अबे यार लड़ाई करा दी यार तुम लोगों ने समोसे बोल बोल के। मैंने फॉर्म में आके समोसे ऑर्डर कर लिया, यहाँ पे लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ, लड़ो फिर। भाई समोसे भी खाओगे क्या यार? तो गलत बात है। माँ भी अभी से ही पकड़ बना ले भाई, वरना फिर देख ले समोसे का पता नहीं चप्पल जरूर खाएगा। तेरे को पता है ना स्ट्रीम उसके फोन पे भी चलती है। तेरे को दोबारा से नूर आना नहीं है। अरे मैं तो अक्षत हूँ। वैसे भाभी सही कह रही है, तुम्हें खाना नहीं है भाभी की तरफ। एक तो तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रख रही है भाई, तुम्हें केयरलेस आदमी गाइस इसका समोसा कैंसिल करा गया तेरी बहन का लोड़ा पे। Yeah, I think for Forium and S2G, I would generally. ओमेगा कभी बठिंडा आया है भाई। What you're going off is. मम्मी से पूछो सब्जी क्या बन रही है घर पे। वॉच पार्टी तो चल ही रही है। Yeah, Forium does tend to move a little bit. वॉच पार्टी फोकस तो है ही अपन। What they've been having difficulty with is making those moves. हाँ आना फोकस कर रखा है, खाना खजाना बना रखा है वॉच पार्टी का। बोल रहा वॉच पार्टी फोकस है। अरे दे दे इसको दे दे, आजा 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 सारी लो आजा। हाँ तो हम नेचुरल रहने की ट्राई कर रहे हैं ना, व्यूज के लिए कर रहे हैं। हेलो आज सब्जी का जी बनूंगी शाम को। I mean, I was a little bit happy about it on the first. Okay. But that relation coming through for Alter Ego. Okay. Getting the second onto Alpha 7 is a really, really big piece of news. Not only in terms of Alter Ego taking on one of the top 3 teams, but also the fact that Alpha 7 is down to 2 already here on Miramar. When they're fighting for their lives in that top 3. This is great news for the rest of that top 5 set of teams, right? They now have an opportunity to thin down. जम्मू आए हो? हाँ भाई जम्मू। अल्ट्रॉन में मम्मी को भी मैसेज पता क्या भेजा हूँ, ये देख आज शाम को गाइस गाजर मटर बन रहे हैं। गाजर मटर खाना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, खा ले। मेरा मन है कि मैं मैसेज पढ़ दूं। नहीं मत कर, मेरा बहुत मन है लेकिन मैं ज्यादा तलब छोड़ लिया। मत कर। मेरे एक तो संगरूर चक्कर लग रहा था, फिर पड़ गया थोड़ा अपना सेव कर लो साइड में। बिल्कुल दीप भाई जरूर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Max is back on the desk once again. What's he got there? He's got goodies. ओए क्या हेडशॉट मारा है ये? Show them to us. I don't know. सवाद? I don't know. We'll find out. What's he got there? What have you got there, Max? He's got some PTR merch. We'll find out later. Repping the old Indonesia. Fair play to him. With that, the मैं तो PTR राजमा merch चावल not only brings Max a lot of happiness, it also brings Alter Ego. आज पता क्या, आज देखो आज अपन डिसेंट सी बात, मतलब थोड़े लिमिटेड लोग बैठे हैं आराम से बात कर रहे हैं। अच्छा मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है, वरना तो कान दुख जाते हैं जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, 8-10 लोग हो जाते हैं ना, सब लोग बात करते हैं। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आता है भाई एक बात पे। हेट मावी को दो अगर उसकी गलती है तो। एक बंदे ने जोमेटो से 28 लाख का ऑर्डर किया है एक साल में।
माँ भी हो सकता है मेरे हिसाब से तो। पंजाब का था क्या वो? अरे वो पता चलता है ना कि ऑर्डर इकट्ठा मतलब टोटल करके देख सकते हैं कहीं से। पता पड़ता। मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, बताओ गाइस कैसे चेक होता है। मैं जोमेटो स्विगी दोनों चेक कर लेता हूँ। तुम्हारा बहुत ज्यादा होगा, हम तो मुंबई में पर डे 5,000 का खाना खाते थे। नहीं मैं किसी को नहीं आया था, पर्टिकुलर नहीं बोलता, मैं वैसा बोलता हूँ क्योंकि मैं उस दिन पहले दिन भी तो मैं हम लोग प्लान किए थे कि मैं ओमेगा स्काउट करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते के इतने बढ़ गए कि कल छोड़ देखो कितना हुआ। Don't talk about it. Don't even mention it. In the PMGC, Svan going down in match 2. This is a bit of an मेरे को किसी को बोलना होगा मैं सीधे बोल दूंगा नाम लेके। बोलो जूसी को। जूसी ले अपना क्या? लॉस लियोना सर्कल आ गया। अबे मैंने ये थोड़ी बोला था सर्कल लॉस आता है, मैंने बोला था पहला पता है मजाक कर रहा हूँ भाई, रो मत यार। ओमेगा की कौन सी टीम जिंदा है अभी? तीनों जिंदा है। शादी के बाद भी बंदा शेर ही होता है, बस फर्क होता है शेर के ऊपर कब मर गया है त्रिशूल लेकर बैठी होती है। बात तो बिल्कुल सही है अंकित भाई, थैंक यू फॉर द 100। पर ठीक है ना, अच्छा है यार, कंट्रोल रहता है। अच्छा है भाई, बढ़िया है। ये आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाला इंसान हमारी संगति में रहता तो 150 होता, फट जाता है। ओमेगा को मुंह पे समोसा घुसा दो, बहुत मुंह चला रहा है। लो भाई कर लो बात। यार समोसा कह कह के मेरा भी मन कर रहा है खाने का यार। अरे भाई ये इतना बोल दिया ना भाई, इस बंदे का ना इन्फ्लुएंस बहुत बेकार है भाई। भाई समोसा समोसा वो साथ में भाई इमली की चटनी और भाई वो मुंह में आ रहा है भाई, वो पता इमली की चटनी वही इमली की कह रहा हूँ, इमली की चटनी साथ में, अब मुंह में टेस्ट आ रहा है उस चीज का। गरम अरे यार गरम तोड़ के उसको आलू से धुआं निकल रहा होगा यार। भाई साहब तो यार कोई ऐसा होगा जो समोसा को मेयोनीज के साथ खाता होगा? आए आए भाई मैं म्यूट कर रहा था, बिगाड़ दिया सारा टेस्ट बिगाड़ दिया यार। यार ये मुंबई वाले पराठे को टमाटो केचप के साथ कैसे खाते हैं भाई? कैसे खाते हैं अभी मेरे को भी अबे वो क्या है, वो क्यों खाते हैं पराठा? केचप खा लो, तो पता है मैगी के अंदर सॉस डाल के खाता है। चलो वो तो फिर भी कॉमन है, वो तो मतलब लोग खाते हैं। ये खुद खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता, मतलब वैसे लोग खाते हैं, मैगी में खा लेते हैं। भाई बहुत बफर हो रहा है। हाँ पराठे के साथ सॉस कैसे खा सकता है भाई? चाय दही। उस दिन ये मीठा खा रहा था ऑन स्ट्रीम, मैंने 6 महीने से नहीं खाया था, इसको देख के मन कर गया। जम्मू में कहाँ है मेरे को पता नहीं, वो जम्मू में है कश्मीर में है तो... मक्खन प्लस यार मक्खन पराठा देखो, मक्खन पराठे के ऊपर लगाने के लिए, बट जो रियल कॉम्बो है ना पराठा खाने का, असली कॉम्बो दही के साथ है पराठे का। हाँ दही के साथ पहलगांव ये सफेद मक्खन। क्या लगता है पैरा बॉय पराठा खाता होगा? नहीं अरे बेंच नहीं खाता, पतला है नहीं खाता वो। दही पराठा इज द रियल कॉम्बो। केचप वाले ना चैट गुस्सा मत करना, मतलब आप लोग बहुत बस वही हो जो केचप के साथ पराठा खाते हो। कश्मीर वाली साइड है, कश्मीर वाली साइड ओनली आलू पराठा खा सकते हैं केचप भाई, कुछ नहीं खा सकते, वो कोई कॉम्बो नहीं है। किसी भी चीज को केचप लगा के खाते रहोगे क्या? इन सब चीजों के लिए नहीं बनाई थी भाई सॉस। हाँ ना भेंचो। थंबनेल में हम पिज़्ज़ा के साथ लस्सी पी रहे हैं, वो जलता है। लस्सी थोड़ा लस्सी पता क्यों होती है? लस्सी तो बेवरेज है ना, लस्सी बेवरेज। यस लस्सी क्या है ना, लस्सी तुम्हारे मतलब अगर तुम्हारे पेट में कोई जलन हो रही है एक दिन पहले की या कुछ भी, तो आप उसके बाद लस्सी पियोगे तो ठीक हो जाओगे। केचप विद जैम, केचप विद जैम, ये खाना कहाँ है इसमें? खाना क्या है? खाना केचप है कि जैम है? अब खाना भी सिखाओगे भाई मेरे? अरे भाई यार मैं सच्ची में लोगों ना मतलब वही हो जो पराठे के साथ सॉस खाते हो, सुधर जाओ। दही खाना शुरू करो, दही के साथ कॉम्बो है इसका। दही को आप कैसे बना सकते हो? चलो अगर आप पराठा खाते हो, अगर आपको थोड़ा स्वीट चीज चाहिए तो आप दही में चीनी डाल के खा सकते हो। वो कोई बुरा कॉम्बो, वो अच्छा कॉम्बो है, वो सब बच्चे खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। और आप नमक मिर्ची डाल सकते हो दही पे भी, बहुत टेस्टी लगता है। रायता बनवा लो,
points total. Time and time. ये मावी के मुंह में कुछ दे, बहुत मुंह चला रहा है। दही में चीनी भी डाल सकते हैं वैसे। हाँ डाल सकते, सब डालते अच्छी लगती है, नॉट अ प्रॉब्लम। अबे बहुत बढ़िया लगती है भाई, वो थोड़ी घुल जाती है तब तो और भी अच्छी लगती है। कभी कभी तो ऐसा बिना घुले हुए जो छोटे छोटे मतलब वो रहते हैं पार्टिकल्स इसके चीनी के, और वो जब दांत में मतलब जो मेरा जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, दही और पराठे का कॉम्बो इसलिए होगा क्योंकि जब आप पराठा खाते हो ना तो एसिडिटी क्रिएट करता है, वो एक हैवी होता है पराठा, तो जलता है अंदर। जब आप अकेला पराठा खाओगे ना आपका पेट जलेगा, क्योंकि साथ में चाय को, कई लोग चाय भी पीते हैं, हमारे तो चाय नहीं पीते। बहुत किलो उठाने वाली है भाई, अल्टर ईगो बहुत किलो उठाने वाली है। वैसे अभी पराठे की बात चल रही थी, किल की बात कर रहे हो तो लोग किल की बात कर रहे हो। हाँ तो दही उसके लिए होता है कि उसको बैलेंस आउट रखे। चलो ठीक है, खाने का बहुत कुछ हो गया, अभी गेम पे फोकस करते हैं। लेट्स गो भाई, चुप हो जा, ठीक है भाई। From GEEK fam looking to finish them off, but it's S2G from along the way. ये पी लेंगे, ये पी लेंगे, ये पी लेंगे, ये पी लेंगे। इस आदमी से खाने की घंटों बात कर लो, ये नहीं रुकेगा। हाँ मतलब लॉजिक वाली बात तो करता हूँ मैं। S2G doing hella damage, having an impact here and racking up the points where they can. That's one of our top 5 teams out already, Blank. चलो ये तो बच जाएगा। भाई इतनी साइंस स्कूल में लगा लेता तो कुछ और होता, अभी तक तेरी तरह रंडी रोना कर रहा होता। नोला मैं भी किसी को बोल रहा होता यही बात कि भाई स्कूल में पढ़ लिया होता तो ये नहीं होता। मैंने कमेंट भेजा था उसमें। क्या हुआ? अबे लेफ्ट साइड से जाना अंदर। हाँ आपने अपने स्कूल की फोटो डाली थी सबकी। हाँ तो मैंने कमेंट भेजा था आपको। मैंने नहीं देखा होगा। व्हाट कलर इज याद आ रहा है। नॉर्थ इंडियंस कैसे मैं बकचोदी मत कर। कंट्रोल गाइस, कंट्रोल। गेम पे फोकस करो। डीआरएस को क्या हो गया? डीआरएस कहां पिट रही है बेचारी? डीआरएस नहीं पिटनी चाहिए, बढ़िया जगह है वैसे तो डीआरएस पर। आईएनएफ के फ्री खिलाने वाले हैं, बट डीआरएस चढ़ी क्यों नहीं ऊपर? अच्छा एई का बंदा है। डीआरएस बहुत गंदी फंस गई भाई। डीआरएस तो पिलने वाली है, डीआरएस तो पिलने वाली है। राइट में वो है, ऊपर वो है, और पीछे से आईएनएफ आगे लो कर लो बात का ही। वो आईएनएफ तो मारी गई आईएनएफ। भाजी सबसे ज्यादा दुख जब होता था जब हम यहाँ होते थे, एक जोन सेंटर यहाँ पहाड़ पे कटता था और अगले जोन पे सारा हट जाता था। अब ऊपर से पोटैटो लेगा इनके मजे। पोटैटो है तो हरामी साला। Nade around the side, beautiful nade there coming from Gianse. Little boy goes down, fair amount of damage towards Law and Federal. Can't really afford to get the med kits off just yet. There's more nades, more damage. Let's go DRS, let's go. Alter Ego, Tato might want to get involved on this one. Delta looks forward towards the smoke. Federal all by himself. UMP. बहुत कॉन्फिडेंट खेल रहे हैं, पता है ये लौंडे। Can't find it. That's influence Chemin down to जीत सकते हैं ये लोग भी। हाँ क्यों नहीं जीत सकते? बढ़िया पॉइंट है, सेम ही खड़े हैं ऑलमोस्ट। 124 हो गए पॉइंट इनके। मतलब बढ़िया खेल रहे एकदम। बस ये एक पोटैटो को मार के ऊपर चढ़ जाए। देखिए 7 से तो ऊपर आ गए, और डीआरएस और एसटी का पॉइंट्स का डिफरेंस है। देख 20 पॉइंट का मतलब एक फुल चिकन का डिफरेंस है, समझ रहे हैं? 4 किल करके खेल रहे हैं अभी भी मतलब, और अब मारेंगे। इनको वाले भी बहुत बढ़िया पोजीशन पे थे। अगला सर्कल ऊपर पहाड़ से तो छोड़ ही देगा। अगर पहाड़ चला गया गलती से भी तो फिर ऑल्टर ईगो का चिकन है भाई, कोई नहीं बचा सकता। पर ये छोड़ेगा पहाड़ तो मेरे हिसाब से। बटर एंड जैम सैंडविच, माँ कसम इतना गंदा कॉम्बो, क्या पागल हो गया? छोड़ दिया पहाड़, छोड़ दिया। नहीं है, पूरा है। सर्कल। अरे एई को क्या एडवांटेज है ना ओमेगा। वही तो बोल रहा हूँ, एक कितने किल उठा सकते हैं सोच के देख। बट किल उठते नहीं ना, किल उठते नहीं है, विजन नहीं होता, विजन नहीं होता। हम लोग तो बहुत ऊपर चढ़े हैं उधर, नहीं रहता। सब ऊपर में फाइट लेंगे। एसटी वाले तो नहीं लेंगे ना, एसटी की जगह है उधर। ये जहाँ पे इनको है ना, इनको वाली पोजीशन जहाँ पे वहां तक पूरा दिखता है भाई। मैं कह रहा हूँ 4M मार दे एई को, मजा ही आ जाए। कैसे मार देंगे 4M? 3 बंदे तो नीचे ही हैं। वो ऐसे थोड़ी ओपन से पुश कर देंगे। चॉकलेट समोसा गाइस, खाने की इज्जत करो प्लीज, बेइज्जती मत करो खाने की। चॉकलेट समोसा। चलो गेम पे फोकस करते हैं, उसके बाद करते हैं खाने पीने का ऑर्डर बाद में उठते हैं। Over on Sanhok, we saw how effective his high ground position हो जाओ गाइस, चैट में बकचोदी मत करो। अरे लाइक करो यार, वॉचिंग 5000 चली जा रही है, तो लाइक 5000 हुए नहीं अभी तक।
and the pocket of Nova. कितने हरामी हो यार. Push action away. अल्ट्रॉन पूछ ले, ये सब सवाल नहीं पूछ सकता ना भाई मैं. Oh, it's right on the money. Jimmy goes down frozen. Has a teammate now to join him. Action backed off the hillside, and that is the backup that you want. ST ने फिर लटका दिया इनको. अरे भाई साहब क्या कवर दिया है. Frozen needing to get res now, and action burning down. पूरे इसमें 9 को मिल जाता ना. Rolls in for the backup. INCO looking to put pressure on now as they take their approach. Top up in the and it looks good as well. Blooms over on the godlike store. सेक्सी सी फाइट दिखाओ ना कोई, मैं तो मजा आ जाए देख के कि क्या हुआ है. ST की हो सकती है सेक्सी फाइट, बट वो इनको थर्ड पार्टी करते हैं पीछे से. हमारी सारे छोटी-छोटी रीजे सब होल्ड करते हैं. Not much hope for 4AM there. We saw them in a dire situation. 4AM तो मर गई बे तेरी. ओले ब्रू वाले बंदे ने एक ले नहीं मार दिया. Finish it off, and Ching Chen still going for the heel. Pushes out wide, tries to go for the finish. Will find at least one, but I think Kengzo might just be able to finish this. Possibly, maybe not. Needs the reload. मैंने तो प्रेडिक्शन दी थी, मैं तो पीछे चल रहा था वैसे ही. लॉल. मैं सोच रहा था भाई DRS के पास क्या चांस है ऊपर आने का, पता है? Still moving in. S2G, INCO, all still with the fight. In the meantime, over on the eastern side, Nova are fighting for their lives, caught between. ये ज़्यादा जिगल दे रहा है. Godlike Stalwart भाई to हो their गया. north. नोवा इधर आ गई. INCO to their south. इनको भी चढ़ रही है बे, इनको भी थर्ड पार्टी करेगी पीछे से. स्वाद है. Doesn't go down quite yet. The second इनको तो पहले सबसे पहले कर रही होगा. आखिरी बंदा बचा है ST का. पीछे से इनको पसड़ दे देगी. In the engagement for godlike Stalwart, Scry down to the north a lot further. The nades can start to pour in, but instead Nova just want to stay alive as 4 on the eastern edge. This is ridiculous for Nova at the moment. Almost feels like they picked up a rainbow. मार कराओ नीचे ST को जल्दी. Over on that side, taking not 5. अबे क्या किया ये बंदे ने? इनका क्लोज रेट क्या है? Also towards INCO. कई के बार बहुत गंदा आग देते हैं यार, एंड्रॉइड है ना भाई, इस वजह से. इनको भी डेड. ओ भी ये VP है, सॉरी मेरे को लगा इनको लड़ रही है. इनको के पीछे हाथ धोके पड़ा है बेटी चोद. बढ़िया ना, मरनी चाहिए. DRS ऊपर आनी चाहिए. मरे इनको सबसे पहले मरे. 0 पॉइंट पे मरनी चाहिए. कौन सी? इनको. And the res is coming through for these rosters. No. DRS ऊपर आई. अबे 4M मर गई. अबे यार. मैं 4M तो बहुत पहले मर गई. अभी जिंदा हुआ है क्या दूसरी को? अरे यार अभी जाएंगे. ये लो ऐसी पिटाई. VP कुछ तो इससे मरी है 4M. अरे यार ये बिल्कुल क्या BTG है इनको. इन्होंने पैरा वो देख किधर गया. बहुत प्यारा एंगल है बे. The only player holding now on इनमें नेड वेड नहीं बचे मेरे हिसाब से. They'll have to go a little bit further into the circle. A flush onto one for top, and Paraboy starts to light it up. No punishment found, no knock in response. But beautiful knock coming. कैसे knock हो सकता है बे ऐसे? ST वाले फुल कॉन्फिडेंट है भाई, ये देंगे इनको पक्का. देख लियो, दे दिया. ले एक्शन भाई, क्लच कर दिया. बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल. अबे वो कोई पॉइंट ही नहीं था बे उस टाइम पे इसका पैराबॉय का प्री देने का सेंस ही नहीं था. जब बंदे ऊपर से आते तो समझ में क्या एक्शन 1v4 कर रहा है. 1v3. अबे हंसते भाई, रुक जा ना. कितनी बार से एक ही चीज स्पैम कर रहा है. और ये चैट में क्या कर रहे हो तुम लोग? वो ये स्पैम चिकन तो एक ही कर गया मेरे ख्याल से. 7 किलो वैसे कर लिए हैं ये. एक्शन क्या पंगे ले रहा है गाड़ी के साथ. एक्शन को शैक में चला जाना चाहिए, जाके निकल नहीं पता. भाई इनको वाले कुछ भी बोल रहे हैं, खेल से अच्छा है. भाई मैंने आज इनका जो ये नेने बेट करके प्लेयर है ना, इसकी मोन्टाज देखी भाई. गलत ही मारता है. मैं तो बहुत ज्यादा ही नूब समझता था इसे. मोन्टाज में तो हर कोई अच्छा कह रहा था कल कि सबसे गंदा गन पावर तो इनको का ही है. हाँ अरे इन सब से तो है ही. इन सारी टीम के कंपैरिजन में तो है ही. कैसे टॉप पे चल रही है भाई? ऐसा होता तो टॉप पे नहीं चल रही होती अभी तक. चुप रहे यार जूसी, बच मत. तूने देखा भी है, सेमीज देखे भी है, क्वालीफायर देखे भी है. हां सब पता भी था इससे पहले इनको टीम भी है. हां रन देखा है तूने. FF देगी भाई इनको. ये बचा है वो एक्शन. इधर भी मार दे, एक दो एक्शन है. अरे अरे dominant on this northwestern side. DRS now losing another player down to 2 against the whole. ओ उसको मार गया एक्शन भाई. एक्शन किल विल निकाल गया ST के लिए कई सारे. INCO also taking the knee.
And no more will they fight on. DRS and S2G now are two remaining teams in the top 5. इनको भी एलिमिनेट हो गई लॉल 9 eliminations. Really strong game from लॉल कोई रो रहा है गाइस, अरे तेरी बहन की बुपे तू लाऊं तू तो हो गया तो एकदम। S2G और DRS पे चांस है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं them. 9 eliminations on board. 16 मरवाएगा साला मेरे को। गाइस मैंने कल कोर्ट जा रहा हूँ। might not be a top 3 moment, but Fireflux might just be ऑडियंस able to पागल देखिए state कर their मैं name गया। as one of the top अबे मावी players. इसमें कैसे परमिशन देते हैं? ये नियो बोल रहा है माइक ऑन नहीं कर पा रहा। बढ़िया है ना। Big out of it. Alter Ego still in. चुप रहना भाई, जो हर किसी के पीछे पड़ा रहता है। अब बोल रहे Go वो with this. बेटा मैंने S2G को सपोर्ट किया है And 4 players alive ऐसे ही। with Potato on such a massive एई के पास अभी भी सेक्सी जगह है, इसके बाद भी। not taking it from अरे यही का चिकन ही है, अगर वो भी नहीं आया फिर तो ये elimination count will be नहीं चिकन तो नहीं जो उसके भी कह सकता तो। they want to launch S2G का चिकन है वैसे तो। themselves to the tables, but अब देख नियो बोल पा रहा है नहीं, अब देख। this is a team that S2G पे होना है। हाँ S2G S2G का लो their own. हाँ ठीक है। हाँ S2G को क्या नीड है? S2G again. Compound still, and why this compound's very strong, especially when you know circles ending around here. It's such a large compound that no matter where the circle shrinks to, a little bit should still just be ये about. GEEK वाले बंदे कब स्लैम दिए थे? अभी इधर देख Leaving वो this उस पे area will be difficult for A7 S2G, so पे I hope they brought 2 बंदे vehicles बचे with थे, them. अभी भी इधर ही बच्चे पड़े हैं सेंटर में। DRS ओमेगा playing around the shadow that Potatoes creates. क्या हो गया क्या हो गया? डिस्कॉर्ड गोल। Vampire finding it very difficult to find any kind of respite on that area. That side. नियो भाग नहीं, नियो भाग ही गया डिस्कॉर्ड से। reposition up क्या हुआ? Hamzy spots. अरे जब वो बोलना शुरू किया ना, मैंने उसको ऊपर वैलोरेंट वाले चैनल में फेंक दिया। बकचोद आदमी। A player over towards Alter Ego, Oh, knocks baby. Potato up the top of the hill. Unfortunately, that would be a really valuable pick, but the blue zone will push them इसके nonetheless. बच्चा है वो। These shots are going to be so आ गया भी crucial. है। Keeping that K9 in the hands of Ray Z could prove to be a game changer. As Silas sits Pondbit. एई को नहीं हंगना, एई को यहाँ पे चोक नहीं करना चाहिए, पता है? ये बहुत एडवांटेज वाली जगह है। यहाँ भी कर दिया फिर पता नहीं। अबे ये एडवांटेज S2G पे है मेरे हिसाब से ज्यादा। नहीं मतलब अभी के लिए विजन एई पे ज्यादा है ना, पॉइंट्स तो उठा ही सकते हैं वो लोग। Roll at the moment, 7 eliminations, all is lonesome for him. नियो गुस्सा हो गया क्या ओमेगा? K9, disgusting weapon. I think for Alter Ego, patience is the name of the game. S2G's life is going to become hellish when they have to leave this compound. I think they realize they need some more points, so going for these eliminations, risky, but also rewarding. ये तो जोन अब देखते हैं किस पे जाता है। They don't have many options in Pondbit. S2G की टीम रहेगा। They have to move रहेगा to जोन the शायद। ridge line. S2G पे आ गया, Ray Z S2G misses जीत another गई। bullet. अरे ले यार। Silas as well with angles over towards Fireflux, who are split right now. S2G का गेम है, S2G और GEEK बचेंगे लास्ट Burning the में candle at और both ends. नहीं अभी भी बहुत अच्छा जोन है इन पे। एई पे अगर ये गीक और परेशान ना करे, गीक बाहर आएगी नहीं, गीक बाहर आ नहीं सकता। एई पे जोन नहीं है ब्रो। भाई क्यों नहीं है? देख ले आ गया वो नीचे, पूरी डिप है भाई, रोड के दोनों तरफ डिप होती है इसमें। एक बंदा नीचे जा भी सका, देख ले वो देख पेड़ दिख रहा है नीचे। मार साड़े ने। एई वाला वहां जाके तो क्या ही कर लेगा, वहां जाके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शैक खाली नहीं कर पाएंगे ना वो लोग। डीआरएस वाले भी उधर जिंदा है, अभी तो टाइम है। हाँ अब अपन बोल सकते हैं कि S2G पे एडवांटेज है, क्योंकि उनको वो मिलेगा ना, अब देखो उनको कवर है, सब है। अरे ज्वाइन करना, कोई चैनल ज्वाइन करनी हो। ये क्या कर रहे हैं? ये ऑफलाइन हो गए क्या चैट में दोनों? लड़ाई मत कर। हाँ मत कर। FF ने क्या करा ये अभी दोनों जोन के नाम? एई वाले इतना विजन में क्यों खेल रहे हैं भाई उनके सामने? S2G का गलत आई है बे, बच के। एई ने भी दिमाग लगाया बे बढ़िया। अभिषेक राजपूत कल तेरे घर आया था मैं। अभी भी यही वाले ऊपर छोड़ नहीं रहे हाइट भाई, देख रहा है? उन्होंने ले लिया वो जगह। अबे मत मारो प्लीज, डीआरएस को मत मारो। ओ पोटैटो बहन का टका। मर गई डीआरएस, पता है। चल कोई ना, फोर्थ आई है भाई, क्या ही कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, थर्ड फोर्थ बे। और भाई हेड चुका लिया भाई कंसिस्टेंसी तुम उसकी देखो ना फिर।
Shots over towards the high ground there from इनको Silas, की but S2G are going to have अबे to यार leave तुम it अपने in the अलग lines मत of everybody else लॉजिक bringing लगा their way. Fnatic gets there's a crossfire. अब तो भाई फिर जीत जाएगा मेरे को लग रहा है। अबे ये यही जीत सकती है रे अरे GEEK जीत सकती है भाई। ये ले उतार दिया ये इन्हें एसटूजी तो मर गई सारी। मर गई। अपने आप जीत गई। मार ये क्या कर रहा है? एडवांटेज था रे। अरे ये यही का गेम था पता है। ओरेंज से बहुत विजन मिलता है। चलो एक चिकन तो होम टीम का बनता ही है यार। होना है फिर ऑडियंस पैसा वसूल नहीं होगा। भाई तभी तो एडमिट कर दिया। गुड़गांव में सारे आना। हमारे तो 3 आए थे फिर। कौन था हमारा? कह रहा है होम था हमारा। ये S2G वाले किस पे आ गए होंगे? थर्ड पे। क्या They just do not let it up. Really big chicken dinner there for them as well. We'll get them a whole hunk of points. That should see them towards the top end of the lobby, towards that top 8. Fnatic got the MVP title there, but I feel like Potato was so pivotal for them. समोसा कितनी देर में आएगा? मंगा नहीं रहा यार। लड़ाई हो गई। अरे मंगा लो यार तो पूरा मूड ही बना दिया है। मम्मी को बोला है कुछ बना के देंगे चीज़। समोसा बना के मम्मी जाएगी पाजी। अटर बकचोदी मत कर। बकचोदी मत कर। He prefers to be up in the clouds. You know, that lack of oxygen gives him a sense of calm and concentration, which is great to see. I like to kind of watch that. I like Alter Ego. अच्छा तूने बोला माउंटेन पे ये मैं तो अच्छा मावी को बता दे यार तुम ये सवाल पूछो मैं इनको नहीं पूछ सकता और नहीं पूछ सकता। मर्सी ओपी मर्सी दा ओपी मर्सी भाई ने क्या कर दिया? मर्सी भाई चैट में आई हैं या वो कर दिया? अरे सुनो रेड कर दी क्या मर्सी भाई ने? नहीं वो पोकेमोन खेल रहे हैं उधर जीत कर रहे हैं। मर्सी ओपी क्यों लिख रहे हैं भाई? मर्सी पोकेमोन मुझे दा पिकाचू। ओए बताओगे? आवाज आ रही है मेरी? नहीं क्या है? चैट मेरी चैट में मर्सी ओपी क्यों कर रहा है? तो तेरे क्या ठेक होता ना? क्या कर दिया मर्सी भाई ने? अच्छा वो जो MVP था उसको game performances for these two rosters to भाई push on up. Here is the Alter Ego play in the rarefied air on the high ground and take home. अल्लाह कैसे बोल रहा है भाई तू चैट को? कैसे? ओमेगा तो कब आ रहा है यहाँ पे? देखूंगा मेरे को तो मैं काम से आऊंगा। वो काम कब होगा उसी हिसाब से देखूंगा। अबे तू बस काम के लिए आता है यहाँ पे? हाँ कितना गंदा आदमी है तू। तेरे तो काम भी एक क्या नंबर तू क्या कहना चाहता है? मैं मुंबई से दिल्ली ऐसे घूमता रहूं, आता रहूं, जाता रहूं। मेरी टिकट कर दिया कर हर बार आता रहूंगा। यहाँ पे भी कर दे मुझे टिकट खोल लेना कर दे। अपना। हैं? मैं बोला था ना तेरा एक सपना है वो। समझ नहीं आ रहा। मत समझ। व्हाट्सएप पे बता व्हाट्सएप पे। Alter Ego Limax with 28 points. Oh my goodness, is that one hell of a performance? Exactly what we needed from the boys here to try and put himself back in the race Well, from towards back. the top and 7. They played such a good position. Potato, the absolute Oh monster my on the hilltop goodness. position, clearing off the position away from DRS especially and giving that information over to all of his teammates. Being able to fend off people, and on top of that, I love the rotation they did end up, especially Monster. at the end. They ended up getting one of the players knocked. He ended up getting revived too, and it worked out wonderful. Yes. They didn't wait long enough. That's what I'm talking about. The execution is there for this team, and we're starting to see it. S2G, by the way, with 16 points, that's going to be nice for them being able to bounce back from that horrible first game. DRS also with a great performance going into this match again. We just saw them in the late game and the game before, and they have done it again. They're racking up points right now. I mean, you said it during that game, I think, 7, right? That you were saying, oh, they could win. And I was like, the game? And you're like, no, the event, they could win the grand final. And with results consistently coming their way like this,
I gotta say, there's a clear possibility this could be an Abali champion. Inka This bana. final is huge, but looking at a few extra stats. Kelsey, my boy from Turkey, looking good, but. But by the way, the only reason why I said that about गोले DRS वाला is because they answer the main question that मावी भाई वॉच पार्टी पे फोकस कर लो। क्या क्या कास्टर मां बहन कर नहीं कास्टर पे फोकस करूं, कास्टर को मतलब कुछ कास्टर पे कुछ कमेंट्री करूं बताओ। I was like, okay, you know what? This team can definitely take the championship home. Talking about teams taking home championships, we got to talk about Nova. What was that against GODLIKE STALWART? It looked like they had it in their bags, and then it all turned around. 2 words. Top action. You don't mess with them, okay? Gotta bring it up. You got to eventually. Yeah. It was not the best push from STALWART. I Yes. think we were both like definitely having some criticisms for what GODLIKE STALWART did at that time. And Paraboy, he was like super proactive. He's like, okay, That's they're my on bad. position on the road. Had It's not to. great to defend it if क्या you हो get गया? just inched upon. He's like, little bit of an off angle, and then they shut down Paraboy. That was such. भाई तेरे को ना व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, एक बार देख ले। Get yourself रुपेश क्या बोल रहे थे मेरे बताओ। को अरे देखना भेजा है। But I think मेरे को बोल रहा है? नहीं नहीं अपने भाई को बोल। Talk about shutting down your opponents. Hardware is needed for that as well. And what better hardware than the Sony Xperia 1 Mark IV? Sony Xperia 1 Mark IV and Sony Xperia Stream were co-developed in collaboration with professional. अल्ट्रन को बोलो सोल सिटी लॉन्च होने के बाद आरपी में मचाना है। Xperia Stream's सब total जगह system मचाएंगे। and multiple ports for intensive gaming and streaming. And while we're हक on से the end, मचाएंगे। let's thank Prime Gaming as हाँ। well. With Prime Gaming, you can get not only free games, ट्राई करेंगे ब्रो, ट्राई करेंगे। content मजाक कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ, ऐसे डायलॉग मार रहा हूँ, कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, So if you want to get बट ट्राई करेंगे। rewards, skins, content, then make sure to sign up. And also, we want to thank PBSI, the local esports association in Indonesia, for supporting this beautiful event right here in Jakarta, PUBG Mobile. Indonesia as well. Thank you so much for all of your support. If दूसरे की you मांगी haven't तो। seen it already, there are links in the chat linking किसकी? to a PMGC survey. And you can find that survey either in the chat or on social media. And we want you to let us know your feedback about the show. Hello. Positives, negatives. By doing that, you may get the chance to win some prizes as well. Thank you all in advance if you are participating in that survey. With that being said, we're going into a short break before we dive deeper. Pizza with pickle. To Miramar that we've just हाय हाय यार मेरे को तो वो बढ़िया लगा था बर्फाजी जो आपने खिलाया था बटर चिकन को क्या खिलाया था आपने वो जो बटर चिकन पाव खिलाया था क्या खिलाया था जो बीच में पाव के बीच में एक वो आता था है ना उधर से 24/7 से लिया था जब अपन ने 24/7 से नहीं वो छोटू कॉल छोटू से अच्छा हाँ बटर चिकन पाव यार चश्मों पे स्क्रैचेस आ गए हैं मतलब सब जगह वो सबसे बढ़िया चीज थी तुमने मेरे को जो गुची का चश्मा बेचा उस पे भी भाई स्क्रैचेस थे पता और तुमने अप्रिशिएट करके दिया छूट गया था उस टाइम देखा अच्छा चश्मा ही होता है को सूट करता है वो अच्छा हाँ है तो अच्छा वो फोटो क्या सेक्सी आई थी जो तुमने भेजी मेरे को फोटो सारी नहीं मेरा तो अलग से फोटो शूट भी हुआ पीछे बैक वो कुछ नहीं है इधर कुछ नहीं है क्या मतलब है फोटो चाहिए मेरा भाई फोटोस नहीं है भाई फोटोग्राफर को फोन कर ले और ले ले पैसे तो लगेंगे ना पर फोटो के मेरे से भी पैसे लोगे क्या फोटो के भी पैसे लोगे 4000 की एक फोटो है भाई एक काम करो मेरी ये भी फोटो मत डलवाना एल्बम में ठीक है एल्बम में तो भूल ही जा तेरी फोटो लगेगी यार एक तो होनी चाहिए मतलब इतना तो डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए अंकल को मैं कोई दिक्कत नहीं है मैं देखता हूं एल्बम में कैसे नहीं आती अभी फोन और शादी के टाइम तो मैं तेरे पे पूरा गुस्सा हो गया था ना अल्ट्रॉन क्या कह रहे हो शादी के टाइम तो मैं तेरे पे पूरा गुस्सा हो गया था शादी के टाइम पे मतलब शादी वाले दिन नहीं एक दो दिन पहले जब तू हकता था कोई ना यार चलता है होता रहता है स्वीट होती मोमेंट बट आर योर व्यूज ऑन नॉट बीन गेमिंग प्रोडक्शन ओपी वो तो संगरूर था तो मैंने छोड़ दिया आपको मगर चल कोई ना इसकी शादी भी है तुम Imagine me coming to Punjab eating every Punjabi high calorie food in front of you. Punjabi low calorie food कोई नहीं होता है. पंजाब के घर की चाय भी पियोगे ना इधर उधर की 1 लीटर चाय के बराबर 1 कप में कैलोरीज होंगी. बहुत ही इमोशनलेस आदमी लेकिन तुम क्यों? तुमने आके सॉरी भी नहीं बोला था किस चीज के लिए? उसी दिन के लिए तो बहन करोड़े घर में संगीत चल रहा है तेरे को स्ट्रीम करना है
चलो ठीक है, फिर भी उसके बाद तो एंजॉय किया था मैंने पूरा। बाकी 6 दिन जो मेरे को पहले जो मेरा रिकॉर्ड है पूरा 6 दिन। अरे मेरी तो उसमें भी पार्ट आएगा, वो एक रीत हुई थी जो नीचे जो लकड़ी से तोड़ रहे थे, उसमें भी मेरा नाम है। रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया उसने क्या बोला बे बेले। वो तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मजा आ रहा था वो रीत देख। अल्ट्रॉन शादी में शाम काम करने आता है, स्ट्रीम करने। वही तो मैं इतना फायर हो गया गाइस। मेरे ना मामू का बच्चा बीमार था, तो ये पीछे वाले रूम में ना नीचे गद्दा लगा के, रुक जा पता है, रुक जा, चुप हो। मामू का बच्चा एकदम बीमार था बेटा, तो नानी उसको मतलब उसकी दादी लेके उसको सुला रही थी यहाँ पे, मतलब पूरा एकदम सोए पड़े थे। ये आके उनको उठा के बोलता है, मतलब उनकी एज होगी 65 होगी, उनको उठा के बोलता है आप प्लीज नीचे चले जाओ, मेरे को स्ट्रीम करना। मैं पूरा फायर आया, मैंने कहा बंद कर। मैंने बोला कि तेरे जो तेरे को स्ट्रीम से पैसे बनने होंगे मैं से ले लियो, अगर तेरे को अकल नहीं है तो। ना मैं तो सिर्फ स्ट्रीम से पैसे मांगे और ना ही मैंने फिर स्ट्रीम करी, मेरे को पता ही नहीं था ना बच्चे कितने। और तूने शगुन भी दिया है, शगुन भी दिया है। शगुन तो तुमने भी नहीं डाला था, तो मैं क्यों डालूं? अपने भाइयों की शादी में कौन शगुन डालता होता है? पागल हो गए थोड़े। तेरे को शर्म, तेरे को शर्म वाली बात बताऊं क्या? व्हाट्सएप पे अल्ट्रॉन बड़ा कब होगा राइडर भाई? जब तुम्हारी खैर छोड़ो। खैर छोड़ो। अरे तो क्या हो गया भाई, 20,000 रुपए है क्या उसने जो इतना शगुन डाल के गया है? उसने 20,000 रुपए और वो भी 20,000 रुपए देके रिटर्न में 5,000 मिले। डोंट वरी, तेरी शादी पे ऐसा ही होगा। एटलीस्ट मेरी शादी पे पैसे वाले से जाके 2,000 रुपए दोगे ना, तो 2,000 कैश। तुम्हारी शादी वाला बैंक मैं गया, 2,000 कैश दे दो, उसमें एक दो 500 के है, एक $2 है, तो ये 2,000 रुपए। मैं भी उस टाइम फ्लो में था। I mean, now when you're looking at the chicken dinners of तो Ego, तू ऐसा क्या कर लिया जब तू फ्लो में था? बस फ्लो में था, चल ठीक है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज है कल भी है परसों नहीं है, कोई दिक्कत। Joining not been told, remember the name Vire, भाई गुरु मेरे करे आरे हनुमान सिंह, good luck. Right now, supporting you the way this amazing crowd are, it's got to be a big moral boost. So I am hoping we see another win from them. I'd love to see it. ओ ये राइडर ग्रे वाला कौन है? Really interested. पता नहीं। In your opinion also of GEEK, because they're also alive in the late game and they did a really. मेरे को वो डांस क्या लगता है? कौन सा गाना था पैरों का यार, तुम आया था स्पेशली करने तुम लोगों का। Kind of pay off. Unfortunately, it's really hard to hold on to that position. पैरा ते जानजल पवा दे, कोई तो ऐसा It's really tough to try and find yourself some good shots after that one. But S2G, wow. S2G hashtag 1 पे आ गई। भाई हमको ना धमकियां दे रही थी पहले ही, शादी के वहां पे पहुंचने पहले ही, जहां पे फंक्शन था कि अगर जो भी रुकेगा नाचता वो पिटेगा करता है। भाई STV आ गई, अब तो वापस कमबैक कर रही है ये तो। And even to this point, still have no idea who will be in first place. Yeah, I think तुम खाना खा लोगे इस टीम पे? नहीं, first place. And then we go here. शक्कर पारे खा रहा हूँ, 2 खाए हैं। Jump up now with 95 points. I'm telling you, क्या खा रहे हो? get another win here. शक्कर This पारे। crowd is going to go absolutely nuts. I'm going to go crazy. You're going to वो लंबे लंबे जिस पे गुड़ लगा हुआ था। We're going to see them at least in the top 7. You know what? My हेल्दी होते हैं क्या ये? for them is I would love हाँ to इनमें see them गुड़, in the top मतलब five. If they गुड़ keep getting results like this, को वो I नहीं think मानते that would ज्यादा। be a win. लोन तो होता बेकार है, Being बट in the top five उतना would नहीं। be their goal फेस कैम right तो now. बड़ा कर दो Not खाते easy टाइम goal यार, to हमें achieve, भी so दिखा। we'll see if they can pull it off. Let's take a look at some of the next matches that we have coming up for you. Once again, it is the last day of PMGC 2022, and especially of the grand finals. So we have Sanhok coming up. We were talking about their last win from Alter Ego, the last big one at least, before going into match 14, and that was Sanhok. So we're already talking about some of the chances. But go maybe over to some सर दर्द हो रहा है मेरा तो। haven't really talked about too much today. 4 AM, obviously, they did have their chances. अल्ट्रॉन भाई मेरा वैसे today as well, पढ़ते ही but नहीं they हो, पढ़ रहा हूँ मैं। also अल्ट्रॉन had भाई some जनक chances अंकल in कैसे Miramar हैं? just now. They get अच्छे taken हैं। out by Kangzil pretty early on, though. Any thoughts going into Miramar about 4 AM? I mean, going to Sanhok for 4 AM, I don't really know what to expect from them. I mean, they're really good when it comes to Erangel. अल्ट्रॉन भाई मेरा मैसेज पढ़ते ही नहीं। Sanhok is not a map for me that they really stand out. No one not winning this time. Yes, मेरा prediction हो चुका है। They're going to have the first one. They didn't drop off boot camp. My heart is broken, but if they can get chicken dinner, I'll forgive them. You want them to jump on boot camp? Because like it's fun. STALWART? It's fun. Tell me it's not fun. It's absolutely amazing. Exactly. My point exactly. Let's look at some of the teams मैनू to नहीं watch. पहचान दी तू। And I was just, I'm surprised. भाई मैं 4 गेम करके चला जाऊंगा। Because they're still at the very top of the table.
and they did just have a good क्यों? यार मेरे को लोग देखने नहीं आ रहे लोगों को, मैं क्या करूं? कोई ना, तो मेरे लिए बैठे इधर। The reason why I picked INCO instead चार of गेम बैठ S2G जाओ। is because INCO, every single time so far this tournament that they have lost the lead, they come back the next चिराग भाई को game बुलाओ and स्ट्रीम they पर, रुक जाओ regain यार। that lead. I रहने expect दो to see that जान of दो। INCO Gaming. I felt like this past two matches, even though they did get a good performance. चिराग भाई को सिर्फ हम 3-2-3 जब जरूरत होती है tभी बुलाओ। Yes, Vitali did end up getting 2 eliminations, but it just wasn't what I expect out of INCO Gaming. Without the 7, I feel like it's going to be now or never. It is going to be the map that they got the chicken dinner on. You can hear everybody screaming in the background. कौन जीतेगा भाई, क्या लग रहा है? Paraboy to the crowd, and that's why I picked Nova, because for Nova, if they want to भाई get that repeat, it is now or never. अबे मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी आता है। Started, and we saw the आता होगा, नहीं पूरा करो अल्ट्रन भाई। आता शायद आता है, बहुत पहले भी आता था इलेक्ट्रिक I ब्लैंकेट। wanted to decipher what was going on there, but it's too smart for me. It's too आता like what's going on in the brain of the analyst for Nova Esports, but of course, no, it's Sanhok. उसमें क्या होता है? They can perform so on वो this गर्म हो map. जाता है Despite इलेक्ट्रिक Miramar ब्लैंकेट। फिर वो मंगा लेता हूँ। that map, they can still get अरे themselves क्यों on करना है? मतलब काम का फट फुटा गया गर्म हो गया फिर। Okay. Yes, I mean, I got it. I said, if I get at अबे least हाँ another बे। chicken dinner, I would love to see them get. हालांकि कुछ नहीं होता, वो नहीं होते The win. जो हीटिंग पैड से होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाँ। Going quickly over वो towards बस बड़ा वो है the एक तरह से। championship, but वो DRS बस गर्म कर देता है, ऐसे like फटता they वटता नहीं है, deserved कुछ नहीं it होगा। as well at this point. They तो have मंगा लेते हैं such अगर a अच्छा है तो। fight, not only today, but अल्ट्रन throughout हाँ the अच्छा होता है। services अल्ट्रन खाने दिन बाद Exactly, आया DRS, तेरे they play घंटे this दिन बाद आया तेरे extra स्ट्रीम पे। कितना ज्यादा गर्म करता है वो? अनसेफ है, बंदे बोल रहे हैं अनसेफ है। They could be the silent पता winners है। here of this grand finals. It could बहुत be पहले भी happening आते if थे, they get अब some सेफ of आ those गए होंगे यार, पहले अनसेफ down to आते the थे, last पहले matches. बोलते थे। Let's see whether or not DRS is going to give themselves a chicken dinner as well. We are heading over to the commentary desk. मत ले, आलसी हो जाएगा, अभी तो बड़ा एक्टिव हूँ। क्या ही करोगे, एक महीने की तो ठंड रहेगी सारी। Plenty of support for plenty of the players here. Zuxi's not even playing, but he's getting signs. ओए जक्सी दी हार्टी लिखा हुआ है। He's a cool guy. अनसेफ बोल रहे हैं लोग, अनसेफ बोल रहे हैं। ओके। Fans are here for PUBG Mobile as a whole, not just PMGC Wait करो। 2022 is what we're here for right now. अल्ट्रन The last Sanhok of माँ आ गया 2022 हुने। technically. I बस know we're in ऐसे ही रहो। 2023, but we're closing the book on 2022 first. Make sure you're reading everything before we head towards that sequel. Altron। It's going to be very good. हाँ। Or so I hear. कुछ बोलियो मत। Right now, this is the exact ये kind of देख। ending that we wanted. Very competitive. A lot of very good teams up towards that top side who are still performing extremely well, even under the conditions Yeah. of what an absolute crazy finish to a tournament. Massive amount of pressure still on board. Playing path on our screens though किधर as we जाने head वाले? into Sanhok very shortly. In fact, right now. अल्ट्रन तेरे को ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं बे, मैं गर्म खून To हूँ थोड़ा। Docks. See where this one heads. We did see it go all the way towards that northwest side where Alter Ego were क्या able to देख pick up तुमने भेजा ही their नहीं। first chicken dinner of the tournament. So they just grabbed another over on Miramar. Towards the top, especially after this game, Blank, I imagine that we're going to start to see teams dropping out of the race for that top spot for the champion title to lift the trophy at the end of today. Match 15, it is so close to the end of what these teams have worked all year for. What a way to cap it off it would be. हो गया भाई, मैच हो गया शुरू। To lift that trophy. Phenomenal news. Nova, if they want to defend their भाई title, they कहाँ have to चले गए stand सब? up now. यहीं पे ही हैं ब्रो। 7 put it best. और भाई नियो नोमू Right, because और भाई you have to be absolutely blind as you have to hit it outside of the park every single time. You want to be बहुत that कर रखे guy नियो तुम तो हैं। that has to make that poor dude run all the way कौन सी to the मौज? car park to pick the ball back up again just so that you can hit it for 6 once more. If Nova's going to do that, it has to be some extremely potent games coming forwards. Already Circle hands up in their direction down towards Painan. हरमन Maybe मावी it's भेजा नहीं elsewhere. तुमने, क्या भेज I रहे think थे? the scariest thing for Nova is they've left it so late at this point in time that you're doing it on Sanhok, a pretty unreliable map when it comes to hitting those points. Is a map where you just want to be consistent. 10 points average is मैच चालू हो गया क्या? but for Nova, हाँ, तुम कुछ 10 भेज रहे points थे। is not enough. They're going to have to go for the chicken dinner. Second place with a lot of eliminations. First place with a lot of eliminations. Third place चलो। might just cut it. Guys, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? don't wanna हाँ। have to go into Erangel हेलो, मेरी आ रही है? Miramar. आ रही है। ये देखो मेरे भाई ने ये जो मैंने बताया ना अभी, But Nova मेरे right भाई ने now, उस बात पे ये this is बोल रहे certainly थे। a chance to pick up a huge इसका amount मतलब of होता है गुस्से eliminations गुस्से। from Painan, which does fall in the path of a lot of rotations of these teams coming down towards चिराग the सेठी। southwest side of the map.
सेटिंग गुस्से में आ गया Nova might be able to pick up सच्ची में बेहद है a of points सच में वे for themselves if they play their cards right here. Controlling their crossing could be crucial for their chance at the title. But for Angry Men, a little bit closer to that title right now. Sat on 126, 14 points behind S2G. And the top spot. अभी टॉप पे कौन चल रहा है? S2G मैं बोला ना S2G फर्स्ट पे आ गया और DRS देखो कितना बढ़िया कंसिस्टेंट की वजह से 132 पे आ गई DRS तो बहुत तगड़ा खेल रही है भाई पता है ये वाला मैच और निकल जाए बढ़िया सैनहॉक का 140 points. I think a lot of the attention was अल्ट्रॉन on अब win. यार पता नहीं लोगों ने सपोर्ट करना कम कर ट्रस्ट खो दिया लोगों ने Very good capability. ना 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 To the limit now. एक बार गेम वापस आ गया For कर दिया S2G, can't take from the fact that they were able to get that second place, right? Well, third place over on Miramar from a very nice compound. Good amount of eliminations as well, which sits them now at 140. INCO behind at 137, 4 AM. Screenshot ले लिया A मैंने lot इसका of points on that last match, getting crunched away on that western edge. Godlike Stalwart playing in boot camp central. कैम को क्या हुआ? कैम तो चल रहा है On rotation to move down to that southwestern island potentially. Most likely we will be finishing over there, so साउंड बढ़ा रहा हूं to the compounds to their southwest on the confluence of the rivers. चल तो रहा है दिखा तो रहा है Compound blank could be a good ये तीसरा मैच है भाई like Stalwart because remember they're on 110. मैं चौथे मैच तक पहुंचा हूं कैम मेरे को बीच में चल रहा है Yeah, I think that is something that we need to consider. They do keep having these pretty good मैं देखता हूं झूठ बोल रहा हूं throughout our matches today and yesterday, in fact. नहीं चल रहा है At the start of the day being नहीं सच्ची में चल रहा है वो बीच में चल रहा है fair bit as well. इसमें नहीं आ रहा स्ट्रीम पे सिर्फ वो आ रहा है टीवी बना रहा है मैं चेक करता हूं Scary engagement for the INCO here. I do think that DRS brings a lot more firepower to punch here. INCO with the compound does provide ओवर टॉप 2 टीम टॉप 3 और लड़ाई हो रही है DRS still looking to push in on this one though. I feel like Disgusting shots though. defense INCO have had lots of practice. So if they are given a compound like this to hold, भाई DRS वर्सेस इनको देख लो भाई डेल्टा मार देता ना मेरे कैसे मजा आ जाता है Exactly, this is their kind of best scenario. It's a very good point, John, in the sense that INCO is playing their best sort of gameplay and DRS is the one who is very good with the battering ram, pushing in from the edge side. Nades come through. DRS is playing this marvelously, backing off. Texas two-step here. Nice bit Delta yaar. Nenebete falls from Delta. that was the position on the outside as well for INCO. An off angle from Nenebete is dealt with, handled, and two players from DRS are going to start to move on this hillside. Look how far away Giante and Delta are, but they do not lack the confidence here. DRS are going to play off against one another. Sees Nenebete get behind the rock. विटाली मार देगा No needs for rules to be able to lob that behind. No more. विटाली दिखा नहीं है क्या ओ यार इस पे नेट नहीं क्या रूल नहीं नेट वेट नहीं किसी ओ बे क्या किस्मत है बे इन दो प्लेयरों का दोनों मरते वरना Nenebete has been ready now. अरे भाई spotted for rules does get a little इस पे भी नहीं है क्या नेट पे दूसरे पे up in the hunt. पे रोटेट कर ले बे डाउन रिच और Doesn't quite find a रिस्क लेके कर ही ले भाई small amounts of healing could start to come through. Vitali नोवा wants to मार रही है leverage पीछे से position. भाई This is a crucial fight, and with INCO on 3 players already, डीआर का नेट मार रहे हैं they might नहीं नहीं एक पता पीछे टैग दिया पूरा बढ़िया दोनों को ले जाए अरे विटाली नॉक होगा शायद इसके नेट से डेल्टा के से Could go straight through that window there. अरे Lobs it in. Vitali's fine. दे Good दिया sprays भाई though. Vitali takes a lot of damage. We'll go for the pre-spray on the window. Delta runs back. That ये डेल्टा ले लेगा मेरे हिसाब से अरे 1-1 ले ही नहीं रहा चलेगा ले लेगा बे अरे अरे उधर गया मार दिया दो बार हो गया दो मार दिया सेक्सी 137 in second place, crumbling at this point in time. This is massive for DRS. A nade out through the window. हो गया 2v1 हो गया विटाली के लिए भी क्या प्यारा खेला बे क्या प्यारा खेला बे डीआरएस ने The games we've seen so far, the first 14 matches, but in match number 15, he has to go 1 versus 4 against DRS. ये क्या glitch है बे OBS का? 4 points behind them. मजा With this final point, मार दिया अल्ट्रॉन भाई डीआरएस ने हां ये माइक कैम मेरे को दिख रहा है इनको नहीं दिख रहा second place for both teams. डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर लिया और इसको ऊपर करता रुक जा सही करता हूं
both in the same type of position too. And for Inco, अच्छा इधर ड्रैग हो रखा है so you wonder रन if कोई नहीं है DRS मारी have के साथ targeted this. ओ Taking them down here and early. बैंड तो मैं सारे बटन दबा दिया एक बार में उसके बाद 3 रन Approach in बचेंगे towards the circle. Alpha 7 though versus S2G, currently low on members. सेक्सी वे S2G मैं भी सारे कर बटन दिया दबा दबा के थक गया पता है एक बार में Pecking order somewhat in that last game, looking to try and slow the lead. Over on S2G side, nades are really putting some punishment heavily in the way for S2G. Razy with the DBS around the rock, Silas and Hamzy G both going low in a lovely little opening found. ओ भाई टॉप बढ़िया बढ़िया पेलो पेलो बहन की टिकी We've talked about how they're streaky, how they're hot, how they have some यार मर जाए वे S2G मरेगा सोलो बंदा क्या अकेला बंदा क्या ही कर लेगा भाई one player remains. ले ये Kelsey. बच गए Kelsey does send out a dodge. 7 was saying he'd love to see Alpha 7 come out on top here on Sanhok. They're certainly an aggressive team. They work well on Sanhok as a whole. Those nades were perfectly placed. In the meantime, though, we do have a botation coming through. One of the first of PMGC 2022. It's 4 a.m. We're all the way from docks, and you wonder where they're going to sit in place. Maybe drop up towards where Wolves are playing. Tambang. भाई डीआरएस को क्या एडवांटेज मिलेगा अभी आहा मजा आ जाएगा यार इनको मारिया होगा था Pretty good position to play from. Maybe going for more of an edge. भाई अभी इंटेंस पता है अभी इंटेंस हो रहा है मैच देखने को और इतना प्यारा मारिया अगर आपने नहीं देखा तो बीएस के चक्कर में हाँ इतनी प्यारी मारी है ना इनको परफेक्ट गेम Really will take something special. ये देख क्या कर रहा है To get towards the top. ये क्या कर रहा Back in that conversation, John. Crashing into Ooh. अरे to fall. 9AP will be joined by Sky Only as well. Third player to fall for Buriram and Vampire. This is a solid hold. वैम्पायर वालों ने पहली फाइट दिखाई है अभी To step into the Lions' Den, and they will keep on going. Bottom of the tables for Vampire, but 4 किल तो even मिल गए they इन्हें have so much power to play with. Blank, it is वो मॉली डाल दी so खत्म बस difficult to make headway in this lobby. ये डीआरएस आ गई They're able to pick up the points against Buriram. डीआरएस तो वही है नॉक किया है डीआरएस ने 60-point threshold. Finally. पता नहीं मैं देखा नहीं Taking a while. यहाँ का आ गई Again, though, as we said before, no one's really on that 10-point average at the moment, so it's really still quite malleable in terms of gaining those points, getting higher within the tables itself. T2K coming in from the southeast side. 4 a.m. opting to go even further outside of the zone on their botation. Could even drop up towards IHC. अच्छा वैक्सी भाई मिल जाएगा टेंशन मत Camp Alpha, though I do think we might see this engagement coming through between IHC जोल तो खुद ही and मर Alter जा Ego. रहा है Already किनके those Yol down. This is a great ऐसे घुमा रहे भाई ये opportunity बग्गी for बग्गी Ego. Renorex moves around the side. वो भाई डीवीएस बैक शॉट दे दिया भाई चलती बकी में Alex goes for the full lap of the compound and takes a Jimmy. little bit too much damage there from Pombit. Has to back off though. Nade in hand could prove to be really very troublesome for IHC. If अगर आप he IHC ने can निकाल लिया ना land भाई around तो the सेक्सी edge, किया put it IHC into the building as well. Pombit अच्छा यहाँ से बहुत मुश्किल है निकालना भाई back up to the building he has for cover. एक घर में फंसे हुए हैं Playing a little bit smarter. IHC allowed और इन्होंने एक भी साइड नॉक निकाल दिया ना एक नॉक निकालते उसी साइड से पुश कर देंगे a piece. Two buildings held and a lovely little ये बताऊं मेरा मेरे को ना 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 यही वालों पे तो ऐसा चला रहे हैं ना जैसा पता नहीं धरती फाड़ दिया उन्होंने does not manage to slip it on through. Nade over the top might be able to do the job though. अरे वो ताली वाली बजाने लग गए भाई कास्टन बजा दिए पूरे Lovely reposition away. तगड़ा मार रही है क्या ये अभी नहीं अरे नॉर्मल होम टीम है ना भाई इनको को मार दिया Keep that high ground under control. बढ़िया है इनको तो मरनी चाहिए थी ओमेगा सपोर्ट कर रहा था ना बढ़िया है Inside, the first is rebuffed. Now the rest और ले is भाई हक दिया Godless finds a second and the और third ले हक दिया मैं बोला ही था पिटे के अंदर जाके स्मोक में पुश only करने के Fnatic now Jeez, Ray. standing for Alter Ego. It looked so hopeful when they taken down Demo. पब्लिक के चलाने से ज्यादा मोटिवेट हो They're गए left high and dry. बहुत बुरा हाल है मां कसम डीआरएस जीत गई ना क्या ही चौड़ होगी बे In there, but I think सच that man advantage. आप क्यों नहीं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री होगा ना But again, the drums from the crowd. That's the type of thing that really could take you into a new type of drive, a new type of sensation, just wanting to push it out. Now Fnatic just has to live for a little bit longer. Real unfortunate stuff. Circle heads up towards the northwest side. Influence Chemin in a really strong spot towards that bridge, but a lot of water in this. भाई Not a lot of अक्षत places तो to अभी play. आ गया 4M अक्षत को भी ditches ड्रैग their करते हैं boat, will कहाँ start गया to अक्षत swim towards the docks of Tambang.
Somehow it's the best strategy. यार चोक करेगी लास्ट मैसेज में, क्या पता जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस उनको दे तो अच्छा खेलना चाहिए। बस ये है कि फर्स्ट में आके होल्ड कर ले, ऐसा ना हो कि फर्स्ट पे आके उनसे संभालना जाए कि फिर दिक्कत आ जाएगी। Which I guess you could say is technically playable, but even then देखा नोवा बोला था ना कि नोवा टॉप 5 नहीं होगी, दिख जाते हैं लक्षण दिख जाते हैं। you can't just swim around there in that. अरे अभी 3 मैच बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Even if you look up towards that northern side, that landmass is sort of not what you हाँ भाई जक्षत particularly with the fact that it most likely माइक तो ऑन कर ले, हेड भी जक्षत है। could even end up on बोल the बोल bench, you know, which was crazy. बोल भाई। Moving out of the blue now, just getting out of it, heading up towards T2K location. S2G still क्या in कर the रहे हो? Chelsea, all the way on that northern edge. Do you know? अबे बोल ना। With the eliminations that Nova have been able to find so far, too, they do break into 3 digits. ये रेव तो रेव करता हुआ आ रहा है। Said at the start, they need क्या आवाज एक्सेस किया ना, डरावनी आवाज है उसकी। every game from here on out. आप क्यों नहीं खेल रहे हो टूर्नामेंट? अच्छा मीटिंग को छोड़ दिया, बिटवा दिया, ठीक है। Mythic spotted, cut out, and Vampire बेचारा continue है। picking up their 5th elimination. अबे ओए मावी दल्ले मत कर। क्या कर दिया मैंने? स्लैम आ गया, वैम्पायर का स्लैम आ गया। अरे भेज दिया ऊपर। अरे करीलो ने क्लच कर दिया था। कौन है बेंचो बकचोदी कर रहा है ऊपर विद्या? ये मावी क्या हो गया? अभी बेंचोद ऊपर लड़कियों को उसका वापस भेज दिया। अरे दल्ले मत कर। ज्यादा बकचोदी करेगा, तमीज से बात कर। कौन भेज रहा है मेरे को ऊपर? अरे मावी है ना भाई डेफ इसको आती है सारी दल्लापंती बेंचो। अक्षत को सर बोलेगा तो कैसा? अक्षत को सर्वर डेफन सर्वर म्यूट कर दिया। भाई क्या गांड मस्ती कर रखी है तूने? और उठा रहे हो? हाँ क्या? हाँ क्या होता है ये? पावर की सब फायदा उठाते हैं ब्रो। फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठाते हैं भाई। ये वही पॉलिटिक्स कर नेपोटिज्म नहीं हो रहा बस तरीके का, अपना ही राज है। ये इसको तू भेज देना, मावी को भेज दे। हाँ रुक मैं भेजता हूँ। नेपोटिज्म हो रहा बोलता नहीं है ना। अरे बकचोदी मत करो बे, बकचोदी उल्टा सीधा इधर उधर की बात मत करो, गेम की बात करो। पलट गया, पलट रहा है, पलट रहा है। Some more swimming going on through. ओमेगा वो फिर आके तेरे को वापस करेगा। भाई मैंने किया ही नहीं है इस बार। ओमेगा बताऊं? भाई मैंने नहीं किया अभी। ओमेगा ज़रफ की आईडी से बदतमीजी कर रहा है। मैं कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा कुछ। Nova playing on the eastern side of the circle, just to the southwest of ruins. Will be नोवा के पास इस मैच में पोजीशन तो ठीक है। Very important fight for not only. पर सारी साइड से आएंगे अभी पिलेंगे। IHC competing in swimming of Olympics। S2G, who are still going by the way with Kelsey on the. यार कुछ भी मत लिखा करो यार, किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हो। Difficult to make any more headway. ओए अल्ट्रॉन, वो वाला बटर चिकन याद है जो अपन एरो सिटी में मंगाते होते थे? यार पता मेरा अभी तो अभी मैं तो जेब खा लिया, वरना मेरा मन पता है क्या है कि 1-2 दिन एरो सिटी में स्पेंड करके जाए। मेरे को मत बुलाना कभी भी प्लीज वहां पे। अरे नहीं वहां के पता है ऐसा लगता है कि फौरन आ गए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहां चले जाओ। बिल्कुल। एक दो हरकत लेकिन जूसी दिखा। अल्ट्रॉन बनाए प्लान किसी दिन। ये आ सकते हो, मेरे तो पास में ही है। जिंदगी में पहले कुछ अच्छा करते हैं फिर देखेंगे। नाउ DRS इज हाईली क्या बोले जा रहा है पेज, मैसेज लिख के डिलीट करे जा रहा है। DRS बेचारी मर गई क्या यार? नोवा मर जाएगी, नोवा जिंदा नहीं रहेगी, नोवा का लोड नहीं है, विपी के पास अच्छा जगह है, 4 AM भी ऊपर आ जाएगी, 4 AM का भी लोड नहीं है। वोल का चिकन है क्या? 3 ही टीम बचनी है भाई, VP 4M और 4M दोबारा के पीछे 2 टीम है भाई। बीटी नहीं है, 4M पे जगह अच्छी है, 4M जोन से सारे किल लेगी। देख देख अभी
in taking. ये देख क्या दे रही है भाई। 4M ऊपर आएगी। आएगी, जीतेगी फ्रॉम ट्रॉफी के साथ जाएगी। जीतेगा पता नहीं, बट ऊपर इस मैच में ऊपर आ जाएगी, लीड सारी क्लोज। अरे ये क्या कर दिया इसने वोल्फ वाले ने। नोवा को चांस दे दिया पास आने का। क्या कर रहा है, पगला है क्या? क्या कर रहा है? सही तो कर रहे हैं। तो शांति से बैठ। सही तो उसने भी किया था। अरे यार मैं अरे सॉरी यार। फटेगा फटेगा। चोदी कर रहा है अभी। अरे यार क्या टट्टी ने अरे हाँ ना, मार दिया। नोवा कंपाउंड ले लेती है तो मजा आ जाएगा। नोवा नोवा बढ़िया बढ़िया, पेलो नोवा को पेलो। बहुत बढ़िया खेल गए बुल पर। मारो 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 बैंड। मारा रे, मारा ले आले। नोवा आएगी नहीं टॉप 5। मतलब चलो मैं तो कमेंट करने वाला कौन ही होता हूँ, मैं तो खुद 1-1.5 साल लगा हूँ कुछ गंदे गंदे डिसीजन लेके। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मेरे को नोवा के चांसेस नहीं लग रहे टॉप 5 आने के। एसटी कैसे आ जाती है बे? आईएनएफ भी थी इनके सामने, आईएनएफ को मार भी दिया, 4M को भी इग्नोर कर दिया। ले लिया तूने एसटी ने। वही बट 4M में एसटी में बढ़िया चांस है कमबैक का। 4M कमबैक करेगी, एसटी नहीं कर सकती, एसटी मर जाएगी भाई। बिल्कुल एंड वाले टाइम पे आके वीपी पेलना शुरू कर रही है भाई। अबे वीपी पे क्या 4M अब ये तो वही वाली जगह है पाजी जहाँ पे ऑपर में सरवाइव कर रहे थे। मैंने हक दिया था तू जहाँ पे आगा था। 2v2 था। बोल दिया मैंने खुद। 2v3 था, नहीं 2v4 था। ओजी वर्सेस हम 2 थे और ओजी के 4 थे। Absolutely, it's going to be difficult to remove Vampire from this spot. They knew they needed the big game. Scry tries to run across open ground. It's only a matter of time before some of those shots hit, and this is. कहाँ चल रहा है तुम्हारा? This is where the players don't miss. This is where you give them an easy shot. You go to your knees. Speaking of Paraboy and Jimmy lighting it up against GODLIKE STALWART on the hillside. The Wolves still in their compound, holding out Nova with the blue zone. 4M का चिकन हो सकता है ये। To go for this fight. एक चिकन आ गया। वीपी का करना है पाजी, पूरा धोनी वीपी। नहीं अल्टर्न नहीं। वीपी स्प्लिट है। 4M चढ़ के देगी, देखना। अबे एसटी को मार दो। अबे ये एसटी को क्या कर लिया इन्होंने? वीपी को चांस मिल गया आगे आने का। लास्ट बंदे ने बैक का ध्यान ही नहीं दिया। पिल गई 4M बीच में, पिल गई इन सब के। देखो ये 4M ने गलत कर दिया, तो पीछे का ध्यान नहीं दिया पता। ओए भाई टॉप ने क्या 1.5 फेंका। आ गया काउंटर में। कहां चल रहा है? दो फट दिए क्या? वीपी का ये तो वन साइडेड वीपी का है बे। 4M निकाल जाती, बट 4M को उनके पुश कर देती। वो स्प्लिट थे और वो देख भी नहीं रहे थे, बट अभी जो इन्होंने थोड़ा सा आना पीछे देना देखना। अबे अरे वीपी क्या है? अरे बढ़िया मारा बे। मर गई 4M। अबे यार मेरे को तो वुल्फ का चिकन लग रहा है, पता नहीं क्यों। वुल्फ नहीं है, वुल्फ सी है। अरे बाप रे बाप, भागे जा रहा है। हो गया फॉल। वैसे क्या हो गया? ये क्या था? But it's a 4v4, an unlikely setting 4v4. Sanhok that we see this type of engagement. Both sides own some cover. There's a row between both of them. 4-4 में तो यार वैम्पायर को जीत जाना चाहिए। जोन कट गया है वुल्फ पे। बना दिए भाई लोंडो ने। चाइनीज टीम वर्सेस इंडोनेशियन थाईलैंड। करो सब कर दो ना। देखते किसका अच्छा 4v4 है। 14 किल मार किया। पोजीशन अच्छी वीपी की है। अगर ये क्यों ये टट्टी पंती की है वुल्फ वाले ने। 2v3 3 नॉक 1v3।
now stands between them. जीत गए। Let's go. चलो नेट से पार दिया। बहुत लेट हो गया बट Bottom of the ठीक है। tables, the looks of relief on their faces as they सारा किल चिकन आया है। 18 हाँ। elimination chicken dinner, 33 points अब क्या खुश हो रहे हो भाई? on the game. That'll see them ये बॉटम टीम का लास्ट आता है ये चिकन। now blank. And one of the most interesting यार ने teams खुद in को the डायरेक्ट कर दिया क्या? They can either be very low क्या बोला इसने? on that गलत दिन। तेरा बॉटम टीम का आता है ये लास्ट डे पे। एक बंदा मेरा बंदा बोल रहा है गलत दिन कमबैक कर रही है। very often in a team who fluctuates in performance like this so often. PMWI was a great example when they were up on their numbers, right? And again, this is the type of game we saw so often from them. And it looked कितने गेम रह गए against Alpha 7. But other than that, it was effortless for them. It looked like they made all the right moves. all इनकी the सैलरी right ज्यादा shots, होगी इसलिए हक के भी खुश हैं लोग। shots which were pinpoint accuracy. Just in case the Wolves came up, they were expecting they were going to go. अभी ये लास्ट वाला जीते थे। But it was just a ridiculous. हाँ भाई ये तो पीओ जीत के आए, इनकी तो सैलरी इनको तो बहुत पैसा होगा। PMWI के दोनों इवेंट जीते थे। दोनों इवेंट जीते थे भी। कितने पैसे मिले? बहुत मिले होंगे। ऐसा था। Here with a big नहीं मिले हैं। और chicken dinner. Chicken dinner for Vampire Esports. Not sure what a chicken dinner is, but I do believe we've had a chicken dinner in our hands anyways. Vampire! They are coming out of the gate swinging today, apparently, at least in Sanhok. And that is something I think none of us... Actually, did one of you pick? Oh my goodness, Seven says yes. तू भी लाइव कर रहा है क्या जूसे? If that is the prediction of the century. Remember earlier when you were trying to ask YouTube. a question about Vampire, they came in first place, and I just absolutely cut you off. But I also said that this team does have the potential to get a win. लोको स्ट्रीमर। And just showcase their skill because लास्ट ईयर के चैंपियन है, अभी भी फर्स्ट प्राइज का पैसा उड़ा नहीं पाए होंगे। when we were at PMWI earlier last year, actually. हाँ हर कोई It's just, as Blank put it best, like, पैसे this जल्दी is नहीं one उड़ा of the सकता। most consistent teams out there, and they're just fun to watch. Yeah, हुनर होना चाहिए। really fun to watch, to be honest. गट्स होने चाहिए। पैसे उड़ाने, गट्स होने चाहिए पैसे उड़ाने। Good push. Then Carrillo had the DBS. खुद के कमाते Then एक it was नंबर not a के। good push anymore for them. So, as stated, they're a very inconsistent team when it comes down to it. And for this event, not been looking so good so far. But no, this is just like a little explosion. Like we're still here, guys. Don't forget about us. And they'll get a little bit of a prize pool increase too. But as you said, so if they can get himself in that position, उस्ताद ठंड बढ़ रही है, धीरे-धीरे हाफ स्लीव। games like that, it's definitely in arm's reach. Yeah, 100%. 100%. Maybe Let's one go. team that we saw in the late game as well that I want to touch on. Wolves. They still haven't gotten that chicken dinner. Last in fight दिखाई नहीं आ PMGC रहे यार, 2022 क्या कर सकते हैं? grand finals, but they've come so close just now. Is it something you expect to happen? I didn't hear the team name. Can you say that? The team Wolves. name? Wolves is what I mean. Yes, I think it could be happening for sure. I mean, I think that the way they pushed out that compound more specifically was really good on the. They're lucky. If T2K do not third party that fight, Seven, I think we lose burst. अल्ट्रॉन भाई आप रात को स्ट्रीम करोगे? नहीं शायद, पता नहीं। कहो भी कर भी सकता हूँ। वो तो भाई रात अब कर लेगा, अगर चाहिए तो वैलो खेल लेंगे हम तीनों, मैं ओमेगा अल्ट्रॉन। मैं नहीं खेल रहा भाई। everybody and try to push it. It kind of worked out until it didn't when Vampire Esports did end up pushing numbers there with the match ranking. Here we go. Esports. I mean, that's definitely खेलेगा अल्ट्रॉन? दो चीज़। खेलूंगा लेकिन 10 बजे का राउंड यार, थोड़ा बाहर भी लूंगा। अरे यार रोज मत जाया करना बाहर। भाई 2-3 दिन हो गए बाहर गए यार। आज मत जा, कल चला जाइयो। संडे आज। रुको भाई मैं खाना लेके आता हूँ यार। खाया नहीं है, इनको कुछ नहीं, भूख लग रही है। S2G Esports 2 points and then Alpha 7 3 points. So if there was ever a time to get a little bit closer and make it even tighter at the top to just leave us suspenseful. I think even going into the last match, I think last play is going to be the deciding factor for the wins. I think एडमन कौन सा है? कॉर्चर। the last game between what? बाइट बिट। 16 potentially. That is how close it is currently at the top. But I also want to bring up that was absolutely Chinese dominated this game when it comes to Sanhok. Wolves Esports in second place when it comes to point, 4th and 5th respectively. 4-4. 33 पॉइंट लिया ये, मतलब ये भी अब इनके भी 100 या 90 पॉइंट तो हो गए हैं शायद। Doesn't matter anymore. You only have Miramar. तो कुछ भी हो सकता है मतलब। And with that said, I mean DRS कौन चलना मेरे भाई? अरे
तू 5-6 ने हट गया पट्टा का भी तू पाँच हो ठीक है अबे चल 200 किलो के आदमी अरे यार भाई भाई तुम बहुत गंदे हो क्यों इंस्टाग्राम मैसेज देखा अभी मेरे को याद नहीं कर बेटा मैंने रुक जाओ मेरे को वो देखने दे ये रैम का पता कैसे चलता है कि रैम कितने हर्ट्ज वर्ट्स की है बस कितने हर्ट है है भाई S2G ओमेगा के पास तो 2-2 हार्ट है यार ओमेगा के हार्ट में 2-2 एम्पियर बेस 5 पॉइंट का फर्क है भाई टॉप 450 में दिक्कत होने वाली है Yeah, but even that, you're looking at teams on the second page. If they get themselves a pop-off game, they're in the race. You're asking for predictions. How the hell are we supposed to predict 7? We're supposed to do analysis. How do you analyze this situation? I have no goddamn clue right now. All right, let me give you a little bit of context of why I didn't pick anybody here from the second page, at least towards the top, right? It's because T2K, yeah, they did have a 16 elimination game. Yeah, I think it was a second place finish. I just don't see any of those teams having 2 pop-off performances. But it could happen. But I don't you're see telling it. me there's a chance. But I don't see it. अच्छा You're not looking confident. The fact that the hope is still alive, and we saw insane comebacks in every esports. So the hope is still alive. The teams can still make it happen. कुड़ियां नहीं तेरे जिस टीम के मरने पर तू खुश हो रहा है तेरी औकात से 12 रिस्पेक्ट द चैंपियंस मिस्टर प्लास्टिक जिसको तू ये टॉन्ट मार रहा है वो भी तेरी औकात से बाहर है रिस्पेक्ट योर एल्डर never let go this habit नहीं बोलता मतलब मैं तो कुछ उखाड़ा भी नहीं हूँ फिर भी बोलता हूँ तुम ये क्यों बोल रहे हो तुमने कुछ नहीं उखाड़ा भाई तुम्हारे तरफ मैंने उखाड़ा मैंने तो दान किया है रुक जा मेरे को ये करने दे पहले रैम देखने दे Continuing in the next 3 days, right? That's why I was waving the Brazil flag at the start of day 2. और नहीं यार Exactly. ओपन अप क्लास में राइट क्लिकिंग those teams was going to end up dropping off. on the Talking about dropping off, Fireflux is in last place right now. And whenever I watch them in the early game, especially, I always feel like the rotation show them maybe a little bit late, but I feel like they do have opportunities. They're just not. नहीं आ रहा यार हाँ हरमान हम कब मिल रहे हैं कल हम परसों आना है तेरे को परसों यार मेरे ना सामान ले जाना टी शर्ट है क्या और मेरी बॉलमैन वाली चप्पल है टास्क में अगर रैंक देखो में हर्ट्स लिखा आएगा उसमें लिखा आ रहा है उसमें स्पीड लिख के आ रहा है वो तो जितना यूज हो रहा होगा उतना लिख के आएगा या मतलब टोटल बताता है वो चप्पल मेरे लिए ले यार मैंने अपना ग्राफिक कार्ड बदल लिया मेरे को अभी पता चला है कि वैलोरेंट सीपीयू गेम है जीपीयू गेम ही नहीं है दिल लौड़े लग गए Still remain in the race to slowly but surely climb back up. They were in 6th position. मैं वेलो खेला था that is close enough to still बढ़िया खेला become the world champions right now. That is how तू close it is for them in this event. कोने में हर्ट लिखा होगा हाँ लिखा है और मेरे को ये जानना है कि मेरा मदरबोर्ड कैसे चेक होगा कौन सा है फिर मैं उस हिसाब से चेंज मतलब अपना वो भी बदल लेता हूँ प्रोसेसर भी नया लगा लेता हूँ And then we going into Erangel. We have seen what they're able to do in Erangel. We do have 2 games left. This team set themselves up perfectly. लोको चैट अरे थोड़ी देर यहाँ आ जाओगे दोस्त यहाँ 1000 वॉचिंग कर दूँगी तो मजा करता हूँ But they are just not able to be consistent, right? They're not able to be consistent to the likes that DRS has been able to be consistent and maintain themselves there towards the top. Got like STALWART, I 100%. एक मैच यहाँ कर दो वॉचिंग 5000 सारे And I mean with Nova, I was saying it earlier, if there was ever a chance for them to try to go back for that three-peat, अल्ट्रॉन भाई आज रात को स्ट्रीम करोगे पता नहीं क्या व्हाट्सएप किया है was able to do. And I actually ये देख लिया मैंने फाउंडेशन मेरी ये हेल्प करके मैं वो कैसे चेक करूं मदरबोर्ड कैसे चेक करूं कौन सा है तक भाई को भेजना मेरे को पीसी मतलब चेक करा रहा हूं मेरे को क्या क्या डालने की जरूरत है ला ला ला
of these 3 matches. Yeah. I also really want to, now that I quickly want to touch on that copying in terms of who we want to see that. Alter Ego, I'm surprised you picked them, I think, almost all of the times today, but not... चल वॉच पार्टी तो ये कर क्या रहे हैं? If they do want to make it in, if they want to keep that momentum, they need 5 मिनट to make this Erangel game count. I think the reason why... अब तो फन मैच हो रहा है, अब तो बैन जो इंटरेस्ट बैठ रहा है पूरे मैच में. All the fans. Well, you got the GEEK fans also. Every once in a while, you'll have like some GEEK like cries in the background, but I think it's a little bit drowned by the Alter Ego war cry. Do we have every every game pretty much at this point? They have made us biased. That's what it comes down to. It's your fault, audience. To be fair, though, hey, the audience has been absolutely amazing. Even when it's not their team, even when the team goes down, they're still clapping for them. They're still supporting them. Even when some other fights are happening too, like they just maintaining that. I absolutely love the crowd. I felt starved for the past year. इधर कहाँ लिख के आएगा ये तो नोटपैड आ गया नोटपैड. Not having a live audience for the past years. I think the last time was actually Malaysia, if I'm not mistaken, an era where you actually were at 7. It was great to have. क्या करा रहा है यार? We're back here once again. And some of the teams have been able to just pull true strength from the audience, been here, able to support them. And Vampire, no? Seems some smiles on their faces. I was gonna say, if this audience is like this, I can't wait to see what Turkey is gonna be like in December. Okay, that's gonna be absolute madness as well. I really hope. स्क्रीन देख क्या देखूं बोलो. We're going to see just as strong of a performance in terms of Turkey as we're seeing now in terms of S2G. I quickly want to touch on them because they're still very much in the race, and they've just had a maybe in terms of rough game. Yeah, rough game. Let's just say they've just had a rough game. But going to the next ones, I mean, Sanhok is always a little bit unpredictable. What are your hopes for them? It's weird because we talk about S2G as being like this consistent team, right? Especially in day 2. Day 1, it was a little bit rough, topsy-turvy. But now they're back to that topsy-turvy situation where they had themselves that good Miramar match. Sure, we're not able to actually convert it in a win. But it was like, so far it's down, up, down once again. So I want to see just some more consistent point coming in for them. I don't think I watched the VOD yesterday. भाई ऐसा लग रहा है आपको किसी ने पेल दिया. ऐसा लग ही सकता है. So good. The noise cancellation is top tier. लो मैं आ गया पाजी. वेलकम वेलकम. हम चाहते हैं. हो गया. भाई हम चाहते हैं. अच्छा चाहते हो वैसे तो. That's how amazing it is. I want to put my headset in there just for you guys to actually listen to it. God bless. Right there into the audience. But talking about S2G, yes, I mean, it's so weird to see, you know, S2G performing that well and Flux being at the very bottom, because I wouldn't have expected that going into the grand finals. The skill discrepancy and also the experience isn't that much, there isn't that much difference between these two teams. Yeah, I mean, there's some disappointments for some of the team, right? But that's unfortunately how it goes. When you have the top best teams in the world participating in one single event like this, and you're going to have some teams at the bottom. It's the nature of esports. It's how things are going to be going down for some of these teams. And no, unfortunately, for the side of Flux, that's how things are going right now. Meta late game. I mean, that's it. Hashtag Nova Meta late game. Day 3 is the late game, technically. So if we're going to be talking about Flux, I mean, something we got to keep in mind, and we saw it perfectly, especially out of our esports. It's those teams at the bottom that are going to be playing that spoiler role, right? For the teams at the top. For the teams that are going to be बेचारे सुस्त हो गए हैं मतलब सारे प्लेयर्स सैड से हो गए हैं टेंशन में आ गए हैं. And he's also thinking about, okay, which team from the bottom, Vampire Esports, Flux, maybe influence Chemin. They're going to decide to wake up at least one game, take some points that are much needed from the teams at the top, and it's going to make it even tighter. I feel bad. We have these our teams to watch every single time. We need like 15 teams to watch. We need more slots to be able to show the teams you want to see perform. It's literally every single team. Exactly. It almost is. Talking about teams and U7, A7 has been really, really good, and I'm especially excited going into the next game because, well, they are very close to making to the very top as well. Just 15 points difference between champ and the first place. Let's head over to the casters because we are going into the next match with the PMGC Grand Finals. One of the very last ones, unfortunately. John Allen and Black. Another match, another Erangel on the cards. Blank, correct? Can't believe his eyes. I can't believe it, no. It feels weird. This is our second to last Erangel coming through. After this, we will have the Miramar. And then finishing off with Erangel. जो टीम जीतेगी उसे जनक एज अ कोच मिलेगा. ओके. अरे मेरे बाप को मत घसीटा करो. रीजन पे आके आ गया ना. Tearing up. I don't really want to leave. It has been so fantastic. Look, I don't have to leave. अल्ट्रा तो मेरे साथ लड़ाई कर ले, हाथ सपाई मारा बेटी. मैं तुम पे कभी जिंदगी में हाथ नहीं उठाऊंगा. But yeah, we will be finishing PMGC 2022 very soon. क्यों ऐसा क्यों? We'll have to crown a victor. That
भाई तुम चिराग जैसे हो, मेरा भाई मेरे को आज मैं हाथ तोड़ दूंगा। particularly DRS able to get a little bit far into वाओ गाइस, ये मेरे को दिल जीतने की ट्राई कर रहे हैं, बट मैं इसे शादी का शगुन लेके रहूंगा। very important. अरे यार मैं दूंगा ही नहीं, लेके कह रहे हो भाई। और इन्वेस्टमेंट्स कैसी चल रही हैं? अभी इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है 80,000 रुपए। They were able to pick up, which is very good stuff. But that means that they are still in the running now. S2G have performed their little hearts out. I'll give them that. I think they've done really well at this event. I think that they've played a very dominant game. It feels like they're in some very good priority positions. They fight for these priority positions. They take them comfortably. And I think S2G definitely take all the way at this rate. And for Turkey, this would be a monumental achievement for them. Should they pick up पाजी आपको the पता world नहीं title स्ट्राइकर भाई or भाई से पूछ PMGC किसके साथ 2022 champions. However, all that remains to पता be नहीं भाई seen. उनसे Mavi, you are the most clueless guy I have ever seen. Guys, Ghost Protocol by Ghost Protocol streams. Here from Novo I act like to that. the middle of the west coast, just a little bit north of Quarry. शादी और मार्केट शो तो मैं भी हूँ। लाइक दैट Places like चार मेरे को अंग्रेजी बनना शब्द नहीं एक है। साथ कैसे जोड़ दिए संगरूर डेवलप। मेरे को मैं ऐसा ही सामने वाले को सोच क्या दिखो, मेरे को ठीक है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं Fairly है। similar to this, we had a northern circle on the back of it, and nobody went to C block. So I'm going to be interested to see if a team adapts to ये that तेज बन के कौन सा कुछ हो information, जाता or है? if more than one team adapts to that information. Again, I बन don't के ही think बहुत कुछ हो we'll जाता है see भाजी। anyone going to वो C क्या block. वो क्या बोलते वो क्या होता है, बट गोज अराउंड, पता नहीं वो कम्स अराउंड, ऐसा कुछ। बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। Yes. मेरी पर्सनल प्रोफाइल की बायो में लिखा है। towards that northern side. I think games like that. वो मेरी पर्सनल पे नहीं होगा, लेकिन ठीक है तुमने भी आज तक ऐड नहीं किया, मैं भी की। Bridges, those kind of late challenges a bit more difficult. I think आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। थे, अरे भाई नीचे गया था यार। हाँ ने फिर एक आड़ा बनवा के लाया हूँ। क्यों, तेरा खराब हो गया? और बताओ क्या सबका ही ऑफ हो रहा है। क्या लगता है ये मैच कौन सा खेल? मावी यू आर डम्ब ब्रो। अरे यार अभी मत करो ना यार, मैं नहीं ट्रिगर होने वाला, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी बातों में क्यों ट्रिगर हूं? भाई यस आई हैव टोल्ड यू समथिंग, फॉलो दैट। मेरी बातें भी मत बोलो शादी के बाद। Sanhok, that is our elimination lead for these Central हो गया। 2022 with 18 eliminations total. बढ़िया है ये बढ़िया मैच जाएगा, ये अच्छा जाएगा। ये इंटेंस जाएगा। Get out towards बस अपार्टमेंट दौड़ना है, वो फन नहीं होता है। little bump up at the end of फन आएगा भाई, अब देखने में तो फन होता है, खेलने में फन नहीं होता। लॉल, ये देख बुरीराम वाला क्या कर रहा है। Influence came in close to Kengzo with Koyovsky. Federer's there as well, but क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? कसम बे। might be able to get in the vehicle. It's just wasting time until there can be some backup from the rest of the squad. You can see there is a micro Uzi on a bike. Wow, Koyovsky. अरे 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 भाई इसको दे दो भाई, उतार दो। बुरीराम वाला ना सांस भी नहीं आ रही होगी उसको। ओ मार दिया भाई, बढ़िया हाँ इनको वाले को पेलो। अरे रे 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 मार, एक हेड और लग जाता भाई, स्प्रे मारता तो हो जाता भाई। तेरे ऐसा स्प्रे नहीं है उसका, लैपटॉप मार है ना भाई, मेरे जैसा हो भी नहीं सकता उसका स्प्रे भाई। ओमेगा का स्प्रे, ओमेगा का स्प्रे ही नहीं है। place to land, you want some people dropping in random locations. But when this happens, Inco doesn't have those. ये दोनों कहाँ गए, अक्षत और ये? They can start to trash looting, then move the center quite quickly. They have to drop in areas where other teams are. I don't think they are the best VP at 90 team points. fights कोई फायदा whatsoever. नहीं। So for Inco, this is really bad news having these two southern playing paths matches in a row. लेकिन टॉप 5 तो कोई भी अभी नहीं खा सकता टॉप। Place tied up with DRS. In fact, देखना 137 138 138 142 बैंड तो क्या ही है। down the leaderboard. 5 पॉइंट का फर्क है टॉप को। नोवा का तो हो गया है जी। नोवा का दीजिए। Inco's अब कम बैक नहीं। undeniable here. Over an 18 S2G वाले ने T2K का कराया। I mean 400 men over 70. क्या चल रहा है, क्या बकचोदी चल रही है। From Inco is something else. अरे भाई क्या करना चाह रहे हैं गॉडलेस with T2K. ये क्या हो रहा क्लासिक है of the game leave both teams a little bit hampered and harried. IHC though managed to keep everybody alive, and that is a big bonus against Rig and Jane, who did go down for T2K. What the fuck, Omega? In this area, John. IHC You have Bogli weapons.
सब लड़ रहे हैं भाई आपस में। 4M जीतेगी 4M या S2G, पता नहीं भाई, देखो अभी बहुत सूंदू से है। 2 मैच हो रहे हैं इसके बाद, और एक ये भी पूरा, ये 3 है। Engagement to conclude. Now IHC moves further down towards South George. The rotate 4AM becomes a little bit more easy. Central position, central spot. Central spot is great. Alter Ego also towards the center of the map too, so Rozok is looking good for them. शेल्टर के पास लास्ट जोन लिख के ले लो। अच्छा ठीक है, शेल्टर के पास लिख दिया हैं? शेल्टर के पास लिख दिया। हाँ बोल रहा है शेल्टर के पास जोन होगा, लिख के ले लो। रोजक होगा, रोजक। तू कह रहा है तो फिर हो ही सकता है। वाटर सिटी कटेगा, वाटर सिटी। भाई मन की बात छीन ली अल्ट्रॉन तूने। माँ कसम 5 हाउस और इसके आगे वाला सोच रहा था मैं भी। हाँ ये वाटर सिटी सामने ऑक्टोपस है, वो रिजिस विजिस का लग रहा है मेरे को भी। ट्रिपल स्टोरी के अराउंड ही लगा ले एक तरीके से। नोवा का कमबैक, अरे नोवा का कमबैक पॉसिबल नहीं है बे, समझो तुम। उसके ऊपर 7 टीम है, 7 टीम का हगना पॉसिबल नहीं है। 1-2 टीम का हगना पॉसिबल होता है, 7 टीम नहीं हगती है यार, कैसी बात कर रहे हो। एक तो 7 टीम हगे, ऊपर से फिर नोवा भी अच्छा खेले, तो डबल चीज है। Top 8 in PMGC means you're in the top 10 of the world. You're not 10th place in the world, which is kind of not what you want to say, but you're in that top 10 of the world. अक्षत आ गया, अक्षत को फिर से ट्रैक। नो वाले चिल भी रहेंगे, अगर ये हारते भी है ना, ये चिल ही रहेंगे। नियो बन चुका है, पता है? नियो मैं मैच के पहले नियो लिख रहा था ओमेगा से तगड़ा जेल बनने के लिए। बोलो बोलो। बड़ा हो गया हाँ तू? क्या? नहीं, अक्षत बड़ा हो गया है। Shit तो on the west edge, but they're just staying grouped up for now, not taking too many risks. It's slap bang in the center of the circle. विनेक डी क्यों नहीं? अच्छा ये नया मैप आया गाइस, विनेक डी। ये नहीं हो पाएगा। नोवा गाइजल कौन है ब्रो? नोवा गाइजल है पैरा बॉय, ठीक है? मैं अभी पैरा बॉय वही तो गाइस, तो मेगा ऐसे ही फेम लेते रह गए। आइजल तो गॉब्लिन था भाई। गॉब्लिन कैरी है, गॉब्लिन ने क्या बात कर रहा है? बर्थडे आया, हैप्पी बर्थडे गॉब्लिन। क्या तुम्हारे साथ मना रहा है, कहीं और मना रहा है? हॉस्पिटल में मना रहा है अकेले। तुम कैसे दोस्त हो? मुंबई होके उसके पास भी नहीं हो, स्ट्रीम करते। भाई जा, तेरे को पता भी नहीं है। एटलीस्ट शादी में तो स्ट्रीम नहीं करते। स्टोरी डाल के जाऊं मैं, ठीक है? रात को उसी के पास था मैं। वही है, सरप्राइज देने गया था भाई। स्टोरी के लिए थोड़ा ना उधर जा रहा था, जाएगा। अरे भाई अल्ट्रॉन है ना, तो हम तो जाती हैं भाई, जिसको अपना होता है। DRS, I think, one of the very proactive teams in this स्टोरी lobby. डाल के जाते हैं। You've got to wonder if they've got the legs. कहीं स्टोरी डालने का मन करता है, लोग मना कर देते हैं। INCO, a surprise from the Brazilian region to be such. जहाँ मना करा जाता है वहाँ स्ट्रीम करते हैं। Maybe a little bit less of a surprise, but still very far up there. क्या हुआ गॉब्लिन को? पता नहीं, ओमेगा को बताओ। ओमेगा क्या हुआ? डेंगू और निमोनिया हो रखा है। निमोनिया मुंबई में अपने बच्चों को होता है बे निमोनिया, है ना? हाँ बे, बड़े होने के बाद तो किसी को दिखता भी नहीं आसपास। निमोनिया क्या होता है? ठंडी लगना होता है। मेरे को सारे कह रहे थे, बताओ उसे किसको होगा। ये हरकत ही ऐसी थी। I think you certainly need to be on the ball with it, or at least letting. वो भी मैं डालूंगा, इसका भी डाल दूंगा भाई। थप्पड़ खाएगा, बकवास मत कर। क्यों? सब कुछ इंस्टा पे डालेगा क्या? क्या है? थप्पड़ मारूंगा, बैंड के टकेगा। उसमें सिर्फ मैं गेम पे ध्यान दे लेना यार। गेम में भी कुछ हो नहीं। बोल और भाई शख्सियत है हैं?
और अक्षत Q2 था। वो तो पोचिंकी हिल लग रहा है। नहीं भाई पोचिंकिल नहीं जाएगा। अपन अपनी वही बात सही होने वाली है। अल्ट्रॉन देख लियो, ट्रिपल स्टोरी का राउंड वाला ये वाला पार्ट। हाँ मैं समझ गया तू क्या कह रहा है। हाँ ये वाला पार्ट। नोवा का चिकन है क्या? जहाँ नोवा उड़ कर। हाँ मेरे को लग रहा है। और ये 2-2 स्प्लिट कर लेना रिज का और चर्च का, तो और सेक्सी हो जाएगा। सबसे पहली टीम नोवा मरेगी। नहीं मरेगी नोवा। And a long line out from Jimmy and Order leaves themselves potentially vulnerable to teams moving through. Potentially vulnerable to some threats coming in from that northern side, especially S2G. Influence Chemin also coming through from school side. I think Nova would love to get down towards where Wolves are currently playing as a strong position of Pachinki to be in. Vampire Esports also down towards that southwest side, towards those hills. नोवा इतना स्प्लिट नहीं रहना चाहिए भाई। तुम्हें ये तो नहीं पता। S2G is हम बताएंगे क्या उन्हें कैसे खेलना है। The direct competitors for that first place spot would be Sugar Hill भी जा सकता है, spotted पता now. Actually, S2G waiting on the other side. नोवा का सही है, पता है वो इतना साथ में जीत चुके हैं ना कि उनको बाहर ना एनवायरनमेंट खराब करेगी और ना कुछ खराब। अरे कितना जीतेंगे बहन, जो जीत के फन भी नहीं आएगा। एक आधी बार हारना भी। Is humbling them somewhat. S2G don't even take a knock in response. That is powerful stuff coming through. Hello bro. For the nerves for S2G to keep them. Nova is winning the PMGC भाई। देखो सच बताऊं, अगर ये हो गया भाई 2 चिकन मार के कमबैक हो सकता है क्या? नहीं मैं बोल रहा 3 मैच बचे हैं भाई। इसके बाद 2 बचे। 16 17 18 हाँ 3 मैच। तो मैं बोल रहा हूँ अगर गलती से भी ऐसा हो गया ना तो नोवा सच में गॉड हो जाएगी भाई डिक्लेयर्ड। उससे ऊपर नहीं अभी भी है ही बे। इससे बड़ा कमबैक तो होगा ही नहीं भाई। इससे बड़ा कमबैक तो फिर होगा ही नहीं। अरे नहीं होगा ये सब। तुम इतना नहीं होता ऊपर वाली 6 टीमें पागल थोड़ी है ताकि। ऊपर वाली टीम भी टिकेंगी भाई एंड जोन तक, तो ऐसे थोड़ी है होने का ही नहीं ऐसा। अरे भाई अरे भाई ये जब तक अरे नहीं गिरा पाया क्या? गलती से गिर गया। नहीं गिरा तो दिया, पीछे चल रहा कूद गया। फोन में देख रहा हूँ। Why Neo is so hard working? बता Neo क्यों है इतना hard working? मॉडल नियो की बात कर रहा हूँ। तमाच पड़ेगा मुंह पे और गांड पे दोनों पे। अल्ट्रॉन Sorry. हाँ वैसे जूसी के लिए काम है। It's going to be a real tough road to make it towards that champion spot, and if you're behind by this much, I think 7th place downwards still difficult. बोला ही था मैंने नोवा का चिकन है। अभी नहीं हुआ है नोवा का चिकन। ये मस्त लग रहे हैं भाई मेरे को। अरे पिलेगा अभी पिलेंगे। कौन था ये? कूल मेरे ख्याल से नियो ही बना था। पूरे बैठ चूद। नियो तू बोला था ना ये? क्या? However, INCO, Hamzy G, right over the side. अरे ऐसा कोई कंट्रो कुछ नहीं होता था यार। अरे इनको तो मर जाएगी बे। ये तो बहुत बेकार डिप है अगर वो नेड मारता रहेगा। ये 2 टीमों से पिट रही हैं। एक नेड और मारेगा और खत्म। कैसे भागे हैं देख रहा है? कैसे भागे दल्ले। ये तो निकल गई। क्या हरामखोर आदमी है भाई। ऐसा सोचते हैं जैसे कोई मारेगा ही नहीं, भाग जाते हैं। गलत आ गया वो डिप में। ये डिप बहुत बेकार है। मतलब जिस हिसाब से S2G का स्प्लिट है ना। This is all just falling apart at the seams. We said that you need to play like your life's on the line now. And for INCO, I think they've taken that a little bit too far because they are playing like this is the only life they're ever going to have. It's too safe. It's too cautious. Alter Ego, though, being anything but cautious, and why not? You got to rip it towards the end. मैचेस में इनको का एक बंदा बच जाता है, टॉप 5-3 ले आता है। Numbers on the board. We've seen
that they are capable of chicken dinners. They've already managed to accrue 2 refresh over करो the guys, 16 refresh. matches, well, the 15 that we finished. ये वैसे And the S2G का 16th गेम भी आ सकता है पता है? match now on the cards. 3 eliminations this game, tying it up हम तो between नोवा का मान के चल IHC रहे हैं भाई. and ना S2G, भाई. both of whom also have 3. लाइक एंड सब्सक्राइब करने बोल दे. हाँ गाइस कर दो फटाफट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मिलके. 3 players. Fire Flux in 16th place down towards their south side. Squash finds himself a little bit of safety. And Alpha 7 fairly central. Nova split around them. In for भाभी अमनदीप aren't over yet. किधर चले गए? आवाज नहीं आ रही आपकी. 3 more matches. देख रहा हूँ आराम से. Nothing is out of the picture for at least the top 5. The headshot hills on the northern side. ठीक है गाइस, नहीं कर रहे 2x, बाद में बफर होगा तो. An S2G control. #250k for Omega भाई 5 महीनों से चल रही है ये. You can't really swing 249 से 247 हो गया, फिर बढ़ जा रहा है, फिर कट जा रहा है. मैं जोन हैक चाहिए है, ओमेगा ले जाओ. Gives them some semblance of safety for the rest of the lobby and moves down. अब किधर जाएगा कौन बताओ मेरे. मेरे को तो लग रहा है वापस नोवा पे आ जाएगा चर्च के बार-बार. पर ये सर्कल अबे अंदर जाए ना तो स्वाद आए. सारी टीम सिटी के अंदर और बच जाए, कोई मरे ना. मजा आएगा, कुछ ठीक का जाना चाहिए, देखने में तो मजा ही आता है. Some quite open ground. भाई आज आपने कितने बजे? Circle they could swing all the way towards that eastern side, but that's very clumped up. It's a difficult. अरे पुश कर गई. This Pachinki, a lot of fielded area, a lot of INF. buildings to play. Influence Chemin find that out first hand. And वो नशे करके खेल रही है. भाई पुश करना मुश्किल है, वो बंदा देखना कहां है. ऐसी वाली नहीं. बहुत सही कवर फायर दिया है वे एंट्री गेट से. अरे यार फेडरल एक को पूरा मारेगा. एक और मारना है फेडरल को, देख ले. एक 1v1 निकालना है. निकाल सकता है नेट से, ये मार देगा ये वुल्फ वाला. एक रूम में बंद है ये लोग. The end of plenty a player on influence Chemin, but instead just gets the double flush and there's the last as well. क्या मर गई ऑलरेडी? मर गई. ये गीक ने मार दिया. गीक ने मारा कहां से वो नहीं समझ आया. वो भी समझ नहीं आया बे. गीक सोलो कंपाउंड की साइड है मेरे हिसाब से. डबल वन और सोलो कंपाउंड. हां वहां से एंगल आ गया भाई, कैसे होगा? हां वही से एंगल बनता है. पोचिंग के अंदर दिख नहीं रहा है. पोचिंग और बुरेराम ने नॉक किया. नहीं ये रहा इधर है, अंदर की साइड है तो भाई. देख क्या हुआ अंदर की साइड से. अरे वो आईएसटी का बंदा डाल दिया सोलो. सही है इसी बात पे कोई. नोवा की पोजीशन अच्छी है, लेकिन एक आधी टीम पे बढ़िया पुश आ सकता था. All but over now to try and get towards that top 5 at least. Maybe some redemption in the top 8. अरे ये मतलब शुरू से लेके अभी तक इन्होंने शूटिंग नहीं किया ना अच्छी खासी, तो कोई टीम जो शूट करके आई वो खेल भी सकती है. S2G to slow. So important for them to do so as much damage as they can. Preferably take them out entirely. तो बेकार यार खेल रहे हैं वे यही वाले. DRS मार दे बढ़िया मजा आया. मार ही देंगे वे, बेकार जगह है ये. चलो किल्स मिले DRS को. अकेले ही मार गया, अकेले ही. टीम सपोर्ट था, पूरा टीम सपोर्ट था. क्लच कर पाएगा. फिनिश करेगा एक को तो. अच्छी फाइट थी बे. अरे अच्छी फाइट थी. हां बे, अगर ये गाड़ी नहीं फोड़ती तो इसको ले जा सकता था शायद. नेट का नेट गाड़ी फोड़ दी. मार देगा S2G अभी ने. ऐसा ही सोल काइजल टॉक्सिक हुआ है. थैंक यू फॉर द 40 रोहित भाई. बढ़िया जोन बनाया है S2G ने ऐसे पूरा. अबे भाग रहे हैं, भागने नहीं दिया. कौन भागने देगा मेरे भाई. अब S2G पता इन पे नोवा पे पुश करके इनको मार. नहीं अभी नहीं. हाथ खुले. 4 DRS, 4 on Alpha 7, 4 on GODLIKE STALWART further behind. जोन कट रहा है. अबे ओपन आ गया, ओपन फील्ड. क्या भाई सिटी के अंदर आ गया भाई. ओपन और सिटी की सेज पे आ गया पूरा. अभी पूरा गीक की साइड ही आता है जोन. गीक तो रहने ही वाली है. ये सर्कल भी तो इतने वो कट रहे हैं ना, अब इतना बड़ा वो कटते नहीं है सर्कल.
west edge of पूरा the ये circle साइड तो खाली guarded पड़ा by भाई। Newman. S2G have been ST ब्रोनिक्स लेगी क्या ओपन खेलेगी pretty tricky fights to be fair हाँ, with ST teams that are वही बान पे पता नहीं इनको अगर खाली दिखा तो ले भी ले, डिपेंड करता है। बान खाली है नहीं बान पे वो ब्रोनिक्स खाली है, ब्रोनिक्स कोचिंग के ब्रोनिक्स खाली है तो डिप भी खाली पड़ी। अभी किधर लेटा है वो अभी दिक्कत ये है ना, लेकिन सबको ये होगा प्रेडिक्टेड ही होगा ना, प्रेडिक्शन के हिसाब से ये बनते होंगे। नहीं जाने के ST शायद अंदर चली जाएगी। स्लैम के अलावा ऑप्शन भी नहीं है ना, स्काउट करके ले ही लेंगे। ओपन में डिप पे जोन नहीं है क्या overlooking Pachinki is currently available. देखते हैं क्या करेंगे, S2G भी देखते हैं क्या ही करेगी। चर्च पे डाल दिया चर्च डाल दिया S2G ने तो ये क्या नोवा किधर गई? अच्छा नोवा अंदर चली गई। जोन कटती निकल रही नोवा है विनिंग दिस मैच विद 11 किल्स। अच्छा ये वहीं देख के लाइव देख रहा है क्या बैठ के वही है ये। गाइस फटाफट लाइक करो, 10,000 लाइक करने भाई, 10,000। अरे भाई FFSC तो स्क्वाड हाउस डाल दी अच्छा डाला, अच्छा डाला। अब बाकी नहीं जा पाएंगे मेरे हिसाब से चले जाएंगे। अरे नहीं उतर गए लेकिन फिर भी पहुंच गए 2 पहुंच गए एंड्रॉइड है ना, थोड़ा वो रहता है। अब ये फट रहे हैं तो नीट से खत्म है ये सर्विस उधर बैठ जा। तो वैसे भी बहुत नीचे है। कर दिया पुश कर दिया भाई निकाल दे कुछ 1v2 1v3 सोललेस ये क्यों मूवमेंट दे रहा है, पता नहीं क्यों मूवमेंट दे रहा है। नहीं पता उन्हें भाई, इतने शॉट में नहीं आती है साउंड। अब अकेले घुस रहा है टाइगर अरे मार गया नाम टाइगर है हीरो है भाई, हैप्पी बर्थडे। अक्षर डांट क्यों रहा है? जो क्या ऐसे ही बोलता है। टीम्स कम क्यों लग रही है कोचिंग के अंदर 3-4 टीम है इंडियन में तो ऐसा घुस हर बैठ रहते पूरा DRS वाली साइड चला जाए भाई, स्वाद आ जाएगा, DRS का भी वो हो जाएगा और अंदर भी बसड़ हो जाएगी। कट रहा है अरे भाई पूरा जोन कोचिंग के अंदर गीक पे है। चलो ठीक है, DRS डाल दे अंदर। ST ने ब्रोनिक्स लिया के सही किया। सेंट्रल टीम किधर गई? बिल्कुल मिड में एक टीम थी, कौन? गीक ही थी वो। नो वन लिटरली नो वन ओमेगा भी लाइक मैं ही समझदार हूँ। जानबूझ के पढ़ रहा है क्या तो ये? हूँ ही भाई मैं समझदार। हाँ गए ओमेगा समझदार तो इतना समझदार है कि उसको सब समझदार भाई, मैं टेंशन मत लो। फटेगा DRS का बंदा है। But a great nade to start things off. Rules is already down on A7. They don't take a single moment. तुम्हें पता है हीटर कहाँ पे लगाता हूँ? They'll move straight through. 5 S2G ने कहाँ से कहाँ डाल दी बैंड की साउंड? हाल्ट्रन कहाँ लगाते हो? No one takes too many shots over towards them. They wait. S2G बढ़िया खेल रही है भाई ये गेम है। Enough guns looking at them. कहाँ लगाते हो? मजे आने वाले हैं ये जोन कुछ इनके। पूरा ऊपर ही डाल। 6 eliminations for S2G and DRS ordered. 9th place for DRS चलो सही पहुंच गया। S2G ब्रो, S2G बढ़िया खेल रही है, गेम अच्छा ही निकाल रही है। A7 का तो गेम खत्म है अब, फंस गई है। थोड़ा सा नेट इफेक्ट मार देंगे इन्हें। अगले जोन में कर ही नहीं पाएगी इंटर A7 नेट ले लेगा आगे बैंड से दाना। ऐसा लेके गए ना नेट, अरे बैंड 2 गए। मार सकते हैं। एक और गाड़ी फट जाएगी, इस बार फोड़ देंगे। ट्रक के अंदर डाल दो एक नेट। ट्रक के अंदर आ गया।
to S2G. फटा The nades do not stop. खत्म A7 का तो गेम ही खत्म था, वहीं ट्रक जाते ही खत्म था. With one more soon to follow, that's 6. Refusing to allow anyone from Alpha 7 to survive this one. Just Carrillo remaining now, looking for. अच्छा इतना बात कब से करने लगा? In the smoke. सोल में भी पुटिंग एंट्री आता है. वाह. Outside the blue Carrillo. into open ground. It's unlikely that Carrillo stays alive for much longer. Micah will put it. Carrillo क्या ट्राई कर रहा था वहाँ से? ये मीका क्यों पीक विक हटा रहा था? एक बार भी नहीं मार सकता. हाँ मीका को क्या लग रहा था वो कि घूम के मार देगा क्या इतना? बहन जो पीक हटाया उसने. मैं तो सोचा किल चोरी होगा इसका. ओ एसटीवी भाई अगर चिकन निकाल दिया तो सेकंड पे आ जाएगी. सेक्सी हो रहा भाई कंपटीशन. भाई नोवा के 0 किल है. नोवा के तो 0 किल है अभी तक. भाई S2G जिस मोमेंटम से खेल रही है ना भाई, टॉप पे आने के बाद टीम ना यही गलती करती है बहन चोद, पैसिव हो जाती है और ये तो मागदर चोद कहीं पे भी डाल के खेल रहे हैं. S2G तो कल भी टॉप पे थी ना. गलत ही खेल रही है. This is a place where you can bump up even more. Looks like we have a winner. Really was suffering on that last Miramar. They didn't get very far. विनर हाँ S2G अगर ये मैच चिकन निकाल भी तो विनर है. बहुत टीम 4 मैन है लेकिन कुछ नहीं कह सकते. नहीं S2G अगर चिकन लगी तो विनर है. अच्छा वैसे हाँ. 6 किल हैं, 10 और कर लेंगे 16 हो जाएंगे. 148 और 15 148 और 15 163 हो जाएंगे. 163 पॉइंट हो जाएंगे. भाई 4-5 चीज और कर पाएगी, 10 कैसे कर देंगे? 10 किल. डाल दिया बीपी ने ब्रू पे. और रे बीपी वाला बता. और रे नॉक ही हो गया बाहर से एसटी से. ये से पता नहीं पड़ा क्या? इंस्टेंट क्यों नहीं घुसते? बाहर क्या कर रहा था? वुल्फ का गेम तो खत्म है. Nova not wanting to push too far out, but they'll have to regroup and push into the town if they want to keep it on going on that northern side. भाई सोच 4 4v4 होने वाला है. ST, VP, S2G और GEEK और नोवा. नहीं 5 4v4. Zone 7 right now. 2 more to go. Close to zone 8. Nova swings round. इनको तो नेड से भाई नोवा तो किल ही नहीं उठा पा रहे. नोवा शांत खेल रही है भी आराम से. आ गई नोवा S2G. थोड़ी देर मेंबर्स ओनली कर. मिनी चला रहा है बहन जो टॉप अभी. Potential trouble there. Vampire seen and godlike STALWART have been so troublesome on this south flank of Pachinki. देखते हम नेट गेम के साथ. Urban finish we have चलो 4v4 हो गया अभी हम मजाएंगे. जला दिया. अरे 3 मोली मार दी भाई S2G वालों ने. खत्म. जिम्मी कूद रहा है. इन पे नेड है. बाहर आएंगे लोग. खत्म बे. नोवा खत्म ही है अब तो. 4 पॉइंट लेके गई है. वो मार दिया उधर से मार. अरे टीम ने मार दिया शायद. तो दूसरा बंदा ST ने मार दिया दूर से. ST ने आके मारा है. भाई ST पूरा वो मारने लग रही है बे. गया. ST ने भाई ये तो बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रहे भाई. ST वाले तो लेफ्ट राइट कहीं पे भी. लेकिन ST ने S2G को मारा कहाँ? अच्छा ये पूरा अरे मैं बोल रहा हूँ बीच का कोई भी गैप नहीं छोड़ रहे. हर जगह पेल रहे हैं भाई. भाई ST ने वहां से यहाँ तक मारा है बे. सर्कल खिंचता जा रहा है ST के साइड भाई. S2G 3 मैन रह गए. कोई नहीं सामने ले लेंगे. क्लासिक बना देंगे. याद है? अरे आयुष भाई याद है. बिल्कुल याद है. ब्रू मस्त बैठी है ऊपर बीच वाले घर में. Godlike STALWART still. फोड़ दिया. ओ भाई. Looking to control so much of the ground here, but my name P spooks him a little. ST वाले भी पूरा एग्रेसिव जा रखे हैं भाई. Doesn't manage to get the better end of the deal. Top will get the flush as well. Kengzo
upstairs. S2G वाले को दिक्कत हो सकती है अब थोड़ी। हो गई दिक्कत जोन निभाना। देखते हैं भाई क्या करेंगे। अरे भाई फूटेगा ये तो शायद नहीं बच गया। For Buriram. See what he मर गए ST वाले, मरेंगे मरेंगे, बाहर आती मर गए। S2G Silas out the window, escapes from punishment on that one, but that's a lot of damage sent in and into the इनको जल्दी करना चाहिए था भाई, ये चीज लूट में रह गए यार बहुत मुश्किल है क्रॉस करना बे। मर गए। अब तो ST पे दाव लगा के चल सकते हैं। कुछ गलत करो तो प्रॉब्लम, सही करो तो प्रॉब्लम। But is it time for godlike stalwart to सोच ब्रू का सोलो बंदा चिकन निकाल लिया तो भाई अगर ST चिकन निकालती है कंपटीशन टॉप पे आ जाएगी, वापस से कंपटीशन टॉप हो जाएगा भाई, गदर वाला। तो लास्ट मैच तक जाएगा बे, कुछ डिसाइड नहीं है। ये VP क्यों कमबैक कर रही है? पता नहीं भाई मैंने बोल दिया ना कि अब VP का और सपोर्ट नहीं कर रहे, तब से मार रही है देख ले। यार ST का क्या मैच है यार, ST का ये तो पोजीशनिंग ही बहुत बढ़िया है। 9 जोन है, इसमें क्या पोजीशन मैटर करेगी? इसमें कुछ मैटर नहीं करता। ज्यादा तो इस साइड से आएगा और इस साइड से GEEK और इसकी फाइट हो जाएगी। ये लास्ट जोन है क्या पूरा, अब कटेगा? पता नहीं। हां इनके बाद देखो ना बॉस कितना होगा ब्रू वाला का। स्टार्ट हो गया क्या सर्कल? अबे स्टार्ट हो गया है, अब 1 मिनट में खत्म, 2 मिनट में मैच खत्म है। For them, anyone who goes onto this open ground, Pika and Top will be able to play off one another to hit them. ये गंदा सीन है बे, धीरे-धीरे सब अब आएंगे बाहर। Get through. Kengzo as well, just blockaded into the attic. Can't afford to go upstairs though as much. राम रूट अगर ये ऊपर चला जाए तो Himself on fire, didn't expect to finish that one out so quickly. VP का चिकन है। They will 4 versus 4 versus 4. Urban finish in Pachinko. भाई मवी ने बोल दिया VP का चिकन है। Start to fly. Vampire with 4. मतलब VP का चिकन नहीं आने वाला। ले सबसे पहले VP नो ये लगा दी पनौती साले ने। अब GEEK का चिकन है। इसका GEEK का बर्बादी इसने VP पहन के लौटा। अब GEEK का हो जाए, GEEK का ना। अब वापस से VP की का चैन लग रहा है मेरे को तो। ओले GEEK का नॉक हो गया। अब इन पे हीलिंग ही नहीं है भाई, बसड़ हो गई बसड़ हो गई। ST का चिकन है। ले ST नॉक, एक बंदे को ST का नॉक करवाए पे इन लोगों ने। ये नशे में आ गया, GEEK वाला को खुला गया। ले भाई VP का ही चिकन था, सही कह रहा था तू। वो तो पता ही था मेरे को। सही कह रहा। नहीं अब तो चेंज कर दिया था इसने, ST भी बोल दिया और वो भी बोल दिया कि अरे फिर तभी VP ने निकाल लिया चिकन। लेट्स गो डबल चिकन। ये नो बहुत ज्यादा। क्या अभी इनके पास VP के पास एक मैच बचा है? 2 अभी तो 2 बचे हैं। 2 मैच हैं। लेट्स गो गाइस, जो भी नया फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दो भाई, दबा दो। और 2 गेम चिकन ले जाएंगे? नहीं पॉसिबल। हाँ इतना नहीं होगा। हमें क्या पता, Because they are going हमारा क्या फायदा। I am worried for all these other teams because there is a beast in the night and it is hungry. Vampire क्या मतलब VP चैंपियन? ये Eyes of the vampire turn their gaze onto the lobby and strike fear into the hearts of many, I'm sure. PMWI champions, remember this. अबे सोशल करना। MVP का 1 किल है और 700 डैमेज है। हाँ With those 2 games, they have done so much in this lobby that is so tightly packed on the points tables. Absolutely. I like that, you know, Schweppes is MVP. He got subbed out for 2 stops yesterday and was like, नोवा को 8 दे रहे हैं भाई, नोवा सक्स। That's just how this is. इनके हेड देने से कुछ नहीं होना है। उनको फर्क ही पड़ रहा होगा यार। इन लोग फैंस भी तो तब बने होंगे ना जब नोवा अच्छी खेली, या नोवा पहले सबसे फैन है। GEEK fam though, John, they did अपना टूर्नामेंट खत्म करके चिल करके it was very hard. I felt like they were going to go down earlier. यार ये जीत इतना चुके, इनका एनवायरनमेंट अब खराब हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। एक दो टूर They moved up to 90 points at the end of last game from Vampire. This time around they're going to have put a massive dent in the leads ahead of them. सारे थके पड़े हैं देख। Not in one day, breaking 3 games. They've done it in 2 so far.
they would need a third massive performance to try and cheer themselves up towards the top, and what a way it would be to be पैरा वो लिख रखा है भाई, पैरा वो चिपका रखा है एक ने. over to the analyst desk. Just what is happening right now in the PMGC Grand Finals? We have Vampire coming in from very last place and making and working and pulling it off somehow with our back-to-back chicken dinner, and they will find themselves in a very एक्चुअली टर्की की टीम है. टर्की की है. Is that the secret? Is that the secret behind pulling it? एक लिखता है S2G from China, उसके बाद सब स्पैम करने लग गया S2G टर्की. पागल है क्या, टर्की से ही है भाई. हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, एक लिखता है S2G from China, उसके बाद सब स्पैम करने लग गए S2G from टर्की है भाई. एक्चुअली टर्की से है. हाँ. Chicken dinner, not just a small chicken dinner, like their big elimination chicken dinner. And that is looking so good for them. And as they said, John, back in the cast, could they be doing the impossible and going from 16th to first place in the last day? पैर वाले हमेशा लास्ट में कमबैक करते हैं और जीत जाते हैं. अब जीता तो नहीं जाएगा भाई मेरे साथ. But I don't think it's gonna happen. Right? I just don't think क्या it's है gonna संदेश Let's को. take a quick look at some of the highlights from that last game ये because क्या there वो are था भाई, plenty. गलती. That was one hell of a game. Obviously, अरे इधर दो बुल भाई ना ऊपर रह गए, अगर वो भी सीडी वीडी पे खड़े होते तो बहुत इजीली वाइप हो जाता है इनका. And at that breach alone, I was cheering for Wolves because they finally pulled off to defend that breach. And unfortunately, there wasn't much afterwards. I don't know, you call Pachinki the main protagonist, I'm going to call it antagonist right there. No, it was not fun for the teams to deal with, but GEEK fam, they were in a hot seat for a major portion of this game 7, and really what they were trying to do is clear all of the teams coming in from the eastern fields. The moment you do that, you can start fighting teams around you. मौली भी मौली तो भाई ने 3 मौली डाल दी तीनों वाले फाइट में भाई. वही मेन काम आई है. एक इसका नेट भाई पूरी एसटी को पीटी देगा. completely different night and day difference from what we saw in day 1 to what we started seeing at the end of day 2. I think if they continue on this trend, you are gonna have to just wear that jersey. That was really interesting talking about GODLIKE STALWART especially. Let's S2G थर्ड आई है भाई 10 एलिमिनेशन के साथ. 25 points for GEEK fam, even though Vampire took on the chicken dinner with 23 points. Now we have GODLIKE STALWART in 4th place. Really interesting that comeback because until round Aldron. they did not have a single top 3 placement. Can you believe that? ये देखियो. What I'm actually interested on is S2G. I feel like they took massive advantage of the situation there. With Aldron, my big fan from Ranchi. Love you bro. Love you too bro. down to get that first place. I mean, the Turkish casters were going absolutely crazy. They were making me go crazy. तुमको क्या जरूरत है? 16 बिना. that is going to be able to create क्यों? and it's gonna अरे be- लौड़े चाहिए. This is why I was नहीं है saying मेरे that पास I नहीं. don't expect जल्दी खाएगा, जल्दी Warriors was to pull the impossible because of how S2G is currently performing. Incredible, especially since जल्दी S2G took कर, on I am their waiting. direct oppositions, which was 4 AM, and obviously वीपी अगर दो मैच और निकाल ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ये अनरियल बातें मत करो प्लीज. statistics and who do we get? Silas. Ooh, who else than Silas? कैम क्या? नहीं, नहीं, पागल हो गया, चल रहा है. अच्छा लैग हो गया कैम. ऐसा बोलो ना. कर दिया. So damn easy, absolutely like a knife through butter. I would even have to say 7. And really, the strength of this team night and day compared to their first day of चलो play. यार. कर ही नहीं सकता 12 बजे तक. Is not only in first place, अबे but यार. surely building a little bit of a lead for themselves. I feel like they're aggressive and मेरा has वो definitely क्रैश we है. can say the यार रुको exact यार. same for Waste GODLIKE on STALWART. I mean, we got a chance to see Tom क्या लगता है right कोई here ड्रॉप as क्लैश मेहनत करवाता हूँ. रहने दे, रहने दे. यार आई डोंट थिंक सो. not have any nails बस at the end of the day. हो गया, रहने दे. Absolutely incredible. पता नहीं मावी हरमनदीप कभी कभी ऐसा एक्ट करता है. Really worried for them after this game. कैसा? I still am. I said it during that But game. do I Was say that the match that puts Nova out of order? Not a pun intended, by the way. Wow, okay. ओ यार मैं ना जा रहा Really हूँ. not too sure ग्राउंड क्या? because sure the थक potential गया मैं. mathematically speaking they could still गाली खाएगा अल्ट्रॉन. It's only 2 matches. And if they तुम एक बात बताओ मेरी क्या जरूरत है अभी? bad performance, then ठीक है. that's it. The 3-peat will not be happening. Whatever is Black wrong with Nova, male it's शादी के always बाद the भी मुझे hardware खत्म that we नहीं have हुआ. right here because they were playing with it. And हालांकि मुझे पता है obviously ब्लैक this में से fits हमारा in रिश्ते पे with 1% भी everything फर्क else. नहीं पड़ेगा. First of all, obviously Sony, हाँ. Sony Xperia 1 Mark IV and Xperia Stream, which were co-developed in collaboration with professional esports. यार मुझे बाहर They जाने play दो PUBG यार. Mobile with its No. total cooling system and multiple ports for intensive gaming and streaming. We also want to thank Prime Gaming while we're at it. We can have
free in-game content with Prime Game. Not only free in-game content, but also free games throughout all Prime genres. Gaming. Everything that you Platinum will sponsor of enjoy in PMGC terms of categories 2022. of games, you will find there. Game And करूँ to मैं. top it off, you will find free PUBG Mobile Yeah. items and content there as well. So make sure to check out Prime Gaming. And Prime obviously, Gaming. get your attention on towards the PMGC server. Prime I've noticed it in the chat Gaming. already. If you haven't, you will see it in the chat and social media. Make sure to click on it because if you do fill out the survey, पता नहीं है you जहाँ give मैं us ये a chance बात to make this अनएक्सपेक्टेड podcast है better, but किसी you का are नहीं पता actually अभी giving yourself a chance to क्या हो गया? थोड़ा सा आइडिया मिल So जाएगा. check out the PMGC viewer server. You will find it in the chat and obviously in social media as well. And last but not least, for the ones that haven't opened the app PUBG Mobile in the last 2 days, it is time to do so right now because the new update is out MVP since Ultra. start of this broadcast, since 6th of January, start of PMGC क्या हो गया? Grand Finals. So किसको, make मेरे sure to को? awaken your fighting spirit, you know, get भाई ready for यार, that and क्या check out the new बोलूं? update. तुम Warrior, क्या हो Warrior. गया, And with that, baby? we're going into a I have to quick go, break. man. We'll see each other right सिस्टम back. दोबारा खराब हो गया? Actually, we're not going into a quick break, ladies and gentlemen. We might have some more time to dive into what अबे we यार, just ये क्या saw. प्रॉब्लम आ Any रहा है teams पेज you want to में? think about in particular? We keep saying it. There's too many teams. I Yeah. don't know which one to really talk about right now. I Maybe. still want to see DRS. Though. DRS is still the team that's like still lingering. They're still. यार ये क्या प्रॉब्लम है यार फेस कैम को यार क्या हो गया? In these last two matches. They definitely can. I mean, I feel like they had a great push. If I remember right, it was into Alter Ego. And they were कर able दिया to हूँ get some बेबी good को. eliminations there. They still have a chance. Well, that's from us. We will be seeing each other in just a couple of minutes. Stay tuned as we are going into the last two matches of the I think we will PMGC जीतेंगे, Grand अच्छा. Finals. See each other right back. चला गया? ये कैसे तुम लोगों की बात क्यों कट होगी? नेट हग रहा है शायद तेरा. नहीं ऐसे लगा. अच्छा मेरे को ना बैंड चो इसके अंदर ही म्यूजिक का इफेक्ट आ गया ये. न न न न न क्यों इतना अच्छा वो कर दिया मैं? हाँ मिक्स हो गया ना. मैं कहा वाह पता नहीं होएगा यार क्या किया. है ना? मजाक कर रहा हूँ मैं रो मत. बस कर भाई तू तो सीरियस ही हो गया. अबे क्लच देखा था इसका S2G वाले का रेजी का क्वालिफायर में वाटर सिटी में क्या गलत क्लच किया था भाई मां कसम से. बिल्कुल मेरी तरह होगा. हाँ मेगा फिर से लैग हो गया कैम. अरे यार कैम को क्या हो गया पता नहीं. अब चल रहा है. ओके लट्टे उत्ते मारतियां ने ओ कुड़ियां दा हो रही. ना 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 ना
Na 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 na. Ladies and gentlemen, it could not be इसने क्या बोला? Ladies and gentlemen. One hell of a situation right now on the overall leaderboard. And going over to Yusef. At the start of the last match, that was something interesting with S2G and iNCO. They took them out very early. Yeah, with iNCO, they put themselves in some interesting situations that I keep asking myself, what are you guys doing? Because, I mean, they keep losing player early on because they're pressuring for so long that by the time they actually lay down and land, there's people just waiting for them with guns. This is the reason why I'm wearing their jacket right now, okay? Because if there was ever a chance for this team to respond, for this team to wake up, it would be now. They're currently sitting 21 points. इनको तो फुल स्ट्रोक कर रही है, सेफ खेल रहे हैं ज़्यादा, ओवर सेफ हो गई. If they don't wake up now, they're not going to be able to do anything. And look at that, S2G, 159 points. 19-point lead right now for S2G. I mean, they're just, at this point on time, they're just trying to lengthen their lead against all of the teams below them. DRS, Boangramen, got to be careful, man, because that lead is going to keep on building in these next two matches. But they're just looking good. They've been looking consistent throughout today. Even if they gave themselves a bad game, then they followed up with an absolute banger of a performance. I don't know, can anyone take down S2G right now? It's going to be a tough task at hand. And the crazy jump into Vampire Esports now in 8th place, 113 points. That's crazy. Wolf Esports here with 113 and Nova. This is I feel like this is maybe one of the biggest upsets. इनको कोई इतना सेफ नहीं खेलना, मतलब वही होता है कि हाँ जब तुम ऊपर होते तो प्रेशर होता आ जाता है. Just staying in the top position, it just absolutely feels weird. Looking at the next two matches that are coming up, it is once again Miramar. Tips for Miramar already. Because I really thought the last two games were super interesting. Are you just going to say Vampire's going to get another chicken dinner, Max? No. I think we're kind of stretching it right now. But as we tend to say always, right, Seven, Nova are a team that do well. This is going to be the battleground where they can bring it back for themselves. So I want to see Nova get themselves a game here. I want to see the chicken dinner. Let's take a look at the teams to watch that you guys picked. And obviously 3 each once again. I'm kind of curious to see if there is a Nova in there. It's only for you, Max. No Nova for you, Seven. Have you given up the hope? No, have you lost it? I mean, I talked about them enough earlier on. I feel like I wanted to give some light to some teams like DRS. They were able to showcase some good performances earlier. I want to see them mimic that again with S2G. क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है तेरे को? If they can just get a top 5 situation, even 5 eliminations, even 3 eliminations, I think they're going to be able to maintain it nicely. I'd have to agree, but also you got to keep in mind, SGG, if they get a chicken dinner like a big one, that we saw earlier, ये सर्दी दर्द कौन सा दर्द होता है? SGG, they will be the world champions. Okay, so S2G, 1 chicken dinner, and it might just be done and dusted. Imagine the situation where we have a defending country, Turkey, Grand Finals 2023. Oh, that would be amazing. That would be the best storyline ever. Okay, I want to see it now. It really would. And with that being said, we are going over to the commentary desk, John Allen Blank, with the second to last game of the PMGC Grand Finals. Hype it up, boys. Match 17 on the card here in Miramar. We draw ever closer to the inexorable end of 2022's chapter in PUBG. With 2 more games left to play, this is the last we'll see of Miramar. कल से BGMI क्लासिक BGM स्पिनर नाइट में ऐसा चल गेम रेगुलर होगा. Yes. Yo. भाई हमारे लिए कोई ट्रैवल करके आएगा सपोर्ट? क्या हुआ? हमारे लिए कोई ट्रैवल करके सपोर्ट करने आएगा? मेरे को तो लगता है. I did debate whether it was a good idea. I'm in for a penny, I'm in for a pound at this point in time. You've broken me. Oh, I'm so sorry. मेरी जान में तो मैं आ जाऊंगा बाकियों के तो जल्दी ही. Talked about this before. Max has already set it up. This is where S2G could pick up a chicken dinner, a bunch of points, a position which would set themselves pretty much untouchable towards the top of the standings. But is this the Vampire comeback? Is this the Vampire top 5? Is this the Vampire top 3? Can they keep up this kind of pace? Because it's a difficult pace to keep up. If anyone can do it, it is Vampire, the streakiest team in all of PUBG Mobile. Puerto Paraíso to Torre Amara in the north side for our final Miramar. I would love to see Vampire be able to pull that out of the hat. I mean, they've won 2 back-to-back now. They started the day, and in fact, they started match 13
out of 18 with a match 13. No, it would be match 15 out of 18 with a 16th place record, 57 points they were able to have in 2 games. They have over. No, they haven't. They've almost doubled it. 1 point shy of that mark. And if they're on form, then there's nothing that can stand in their way. But there is a long, long way between them and that top spot if they want to be able to take it. They have to fight S2G for it, and I'll tell you what, there is no way that is an easy fight to take. It really is, and I think S2G feel like they're so close to that prize at the moment. अब जीत वीपी नहीं जीतेगी, बट एक और चिकन लिया तो लास्ट में पूरा इंटेंस हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि नीचे वाली टीम पहली बार ऊपर आ गया था, ये कर रही है, पूरा खतरनाक करता गया कर दिया। This will be incredible story to finish off PMGC 2022 and look forward towards the future, but already T2K set sights towards Vampire. Maybe look at a spoiler here and now. Stone doesn't even have a weapon and he's on the hunt. Unfortunately, a stake through the heart. Through Stone. Have the 4-player power here, but with 3, Vampire will try and carry out further mischief in this lobby. Nepal also challenging out for that #1 spot at the moment. DRS 140 points, tied at 4 AM. iNCO, they fell off. Is an unfortunate game जरूर खेलेगा इधर to say the least for them. Right now, just do not have that confidence to center so many of कोई the दिक्कत नहीं भाई। have set their sights upon those base compounds, and iNCO is struggling to find an entrance. ये मेरा लास्ट मैच है पानी पाजी। नहीं, तेरा लास्ट मैच ही लास्ट मैच होगा। Over the days. अरे तुमको मेरे को रख के करना क्या करना? I love you. I think for Nepal it would be one. Fake I love you, so I love you. नहीं I love you. नहीं I love you. Make their way to PMGCs before and do pretty decently well, but never towards that top side. DRS has really turned things around. They look so fantastically strong, and you know what? यार fakeness आपसी में नहीं चलती होती ना fakeness. They are the real soldiers. You know what, Blank? चल This lobby is looking a bit like Christmas left. 134 because it is a turkey सेकंड तक कंपटीशन बहुत इजी है, 6 तक। हाँ नोवा तेरे को बोला था ना, नोवा का पोपोटोगा हो गया। क्या बोल रहा है? How powerful the entirety of this lobby is, right? This is a team that people fear when they think about the Turkish region, and they have a 5.5 average score in this lobby, which to be a bottom place score is still Patron, what do you do for living? in general. So I'm absolutely loving I do 4-5 things so for living. Here. Match 17 of 18. The final Miramar I eat, I exercise, is where we find ourselves. I sleep, S2G. I stream, Certainly, and I give my money. I would say Firefly is that team that people thought would be on top, but I think for S2G this has really been a chance for them to establish that dominance and show just what Turkey is made of. And I think that all the clutch players on this team, Razy, Kalsi, Hamzi G, पर जब जूते कहाँ से मंगाता हूँ? every मैं भी single one of these players, आपसे बात including Silas, a veteran. लेकिन of 2 the महीने scene. बाद बर्थडे वाले It's been दिन। a long time coming for success for S2G, गया मैं। just in terms of the players they currently have on क्या हो board. गया? I एक think that एक throughout बंदा the मर year, गया people है। keep telling me, you know, S2G. By the way, तुम मेरे को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे मावी अरमान? Okay, I will. And, you know, it was never always towards that top किसको? side. You know, I was like, you know, they're a मेरे pretty को। good team. They've got some. तेरा great कब है? players. And then they really 25 surprised me. फरवरी। Then they really excited me. Oh And we ये did PMGC 2022. मेरे को क्या दे पहले बता दो। Feels like a chance तेरा that कब we है? can take home a storyline 24 फरवरी। which will be ये उनको वाले को कहना चाहो क्या? 2023. There forwards. अल्ट्रा तेरा बर्थडे कब है? 25 फरवरी। क्या दोगे? Excellent कुछ foundation नहीं, upon दे दिया था which to पिछली build बार। their year. क्या दे दिया था पिछली बार यार? बहुत गंदे आ पिछली बार से याद है 4.5 लाख रुपए पेंडिंग आपके Razy, मेरी तरफ। Hamzi, Kalsi, पार्टी देगा? all contributing so well to this roster. कैसे प्यार से मुझे पार्टी देगा? हाँ दे दूंगा भाई। The 19-point lead they हाँ दे दूंगा भाई, आ जाना। कहाँ पे? Not certain, it's a bit दिल्ली tenuous, में? but still आ जाऊंगा। a bit of a मेरे बर्थडे वाले दिन सैटरडे है। stage. तू बर्थडे की पार्टी करने पंजाब आ जाना। Takes up a lot of these positions. नहीं Good मैं taking. इस बार 5 करवा रहा हूँ घर पे Right बर्थडे now, में। I think Nova's been holding them just a little जिंदगी bit ऊपर better. नीचे हो Ico, गई। though, want to भाई reframe इनको themselves वाले तो towards the पगला top, गए। make Brazil हाँ। नहीं इनको वाले पिट जाएंगे, ओवर अग्रेस कर Now रहे they हैं have अभी। to face off against the two-time champions themselves. It's Nova बाकी here in है the वो। compound. iNCO
have already made their way in. Nade out the side, won't do too much damage. Frozen, tickle just a little bit. ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है इनको का। वो कार से ज्यादा एग्रेसिव हो गया। हाँ वही मैं बोलने वाला था कार से, पर मैंने लाइन बोली नहीं। और यहाँ नोवा की किस्मत खराब होते हुए उनको पता तो पड़ेगा होगा कि पीछे से मर गया। पता अब तो 100%। हाँ आवाज आ रही है गोली की। They've let it slip just slightly. They will not give out. Not yet. They have more staying power than that. Paraboy still on that ridge line. Squash suppressing that position. ओ यार क्या कर रहा है भाई? Also shotgun for Nenebete in through the window. अब इनको को बाहर निकल जाना चाहिए, मार देना चाहिए। ओह नाइस रे। Sees the muzzle flash from Paraboy, sees the tracers pierce the smoke, and sends one back straight through the heart. Nice. Of the off angle from Nova. Squash, spray around the side and drop shot. नोवा का तो मैंने बोल ही दिया था, प्रेडिक्शन दे ही दिया था इस बार। But Jimmy's still active. Seen too that will not go their way, and Nova's hopes have crumbled. T2K third party. 111 points going into the final game, and that is not going to be enough for them, Blank. I think that's it. I don't think we are seeing the 3P. I think we can confirm it right here, right now. गाड़ियों में ना वो देना चाहिए। Will it be जहाँ से पेट्रोल डालते हैं ना, वहाँ पे तो गोली लग गई तो हाथ दिए चली we जाएगी। have a different region, country representing that title, and will that title be represented in the home country for 2023? There's a lot on the line here for all these teams. Brazil kick things off so strongly towards day one. Can they maintain that presence? Happy to see iNCO there. They really brought things back. I think that was a fight that they took phenomenally well. They did get a little bit bailed out there by Jane when Order went down for a very, very long shot from T2K. But regardless, it was well placed. It was well played. They got into the building early enough and set up there and after. So very, very well done to iNCO. Now sets them just a little bit behind S2G. Still, that lead is fairly strong. 4 Angry Men close to the 3 players from Vampire. Remember, they lost a player to a hot drop coming on through against T2K, who have now got 2 eliminations on the cards for this match. Match number 17. 4 Angry Men sharing Los Leones with them right now. Happily so as well. You don't really need to be too But S2G के पास ना कुछ भी बोलो भाई, 21 पॉइंट के लिए बहुत है भाई। You can house comfortably 3 squads. 21 पॉइंट के लिए बहुत है। और खेल गिरा भाई, बहुत है। भाई तो 21 पॉइंट के लिए बहुत सही है। S2G तो पूरा लेफ्ट में, एक पिकाडो पे। The map at the moment with this shift. आराम से खेलेगी वो ये गेम। Central. 2 गेम उन्होंने तगड़े खेले। In a long time. This will give them some real agency into this game. This could be exactly what they wanted, what they needed, John. Alpha 7 and DRS both on this eastern side. Potential for them to come into conflict on the hills of Impala. S2G near Picardo right now will be playing edge as well, but they're close to Fireflux. UMP के मिड रेंज बढ़िया करते हैं ना, मजा आ जाए। M4 जैसा करते हैं इसकी ट्रैक। तो फिर बचेगा क्या बोलते हैं? UMP गॉड हो जाएगी। If S2G take a straight shot to the तो circle, UMP they crash. ये VP ने क्या जंप मारा है बे? 8वें पे आ गई पता है? Wolves a little bit further south, but अगर इन्होंने एक चिकन और मार दिया तो अनरियल स्टफ हो जाएगा भाई। अनरियल हो जाएगा बहुत। Influence Chemin coming in from the south, in the north. Vampire Esports down towards that south side. Remember, they are 3 players strong. But 3 men हो गए ना। Purely off the back of that initial not coming through from T2K. It certainly caused some big problems for a lot of these teams at the moment. But S2G, like you said, John, coming in from Picardo, a difficult rotation for them to make. They're on the outside. So many other teams have already found these big compounds towards the center. We'll see if they can find themselves an area, a little crack, a crevice. They can squeeze themselves through, get towards a good position. They might be able to play out the end of this game. Remember, Miramar, definitely their best map here in the PMGC. the fact that the gap between 1st and 11th place, Blank, is less than 50 points is incredible. Normally we see that sort of gap between 1st and 3rd. It is so tight. But S2G have that 19-point lead to be playing around for this game, which means they can be a bit quieter. But with iNCO already on 3 eliminations in that central location,
They cannot let it rest. That's the real issue, right, is iNCO being in a good spot. Because if iNCO is able to catch up just a little bit, S2G's lead coming into that final game becomes the scariest thing. And this is what I'm talking about. The best team S2G कहाँ थे अभी प्रकारों से कहाँ है landslide. By far. 41 to 25, Turkish teammates over on Flux certainly make them look good. But look at that, 9k damage coming through from top on STALWART. Closest behind them in Kelsey with 6,410. Top has certainly been putting the rest of his team on his back and just dragged, limbs dangling, through this PMGC to where they currently are, 137 points, a team that we cannot count out. And GODLIKE, they've been so hungry for this first place title for such a long time. We can't count them out at this point in time. They're certainly ओ बैंड जो ये गलत जोन है बे बहुत लंबा चलेगा ये मैच Circle shrinks again, leaves Los Leones in the dust. No settlement other than Impala right on that eastern side in the mix. DRS close to Alter Ego. DRS, remember, a chasing team, currently 19 points behind S2G. So every point would matter if they're able to pick up something sneaky here. Spotting the players starting to roll out from Alter Ego. A spray, looks for one, has to duck back behind because Ponbit's close by and knows that he'll be moving up to deal with it. Potato on that left flank for Rules to be worried about as well. And now Alter Ego can take this fight with knowledge. There's going to be a real slow fight here for Alter Ego. For DRS though, this is ये वुल्फ वाले अभी लगा दी क्या they ऊपर do not want to see at this stage in the game, especially down towards the southeast side where DRS ने honestly nice the terrain is very difficult to traverse. One knock goes through though, over towards Alter Ego, Pombit down, Vampire Esports find one on towards Pig Feet. The Wolves in their fairly central location will be under threat from a lot of angles. A second knock over towards Alter Ego for DRS. And the teams beneath S2G are circling. S2G on that southwest side, moving through Los Leones right now. Have not managed to pick up their feet and gain speed so far. They are still full strong, and it's still very early doors in this Miramar. Stage 3. Too early to call. Potato sits down, sits back. DRS effectively deals with the DRS भी फर्स्ट आ सकती है अगर अभी थोड़ा खींच दे काम को as the front bumper smashes through it. आलू बेटा Potato has been पीछे चल spotted. रहा है भर दिया आलू को तो भाई Further up the hill, but Killer's more preoccupied. Got that fancy feet, or at least एक्यूरेट कार स्प्रेस क्योंकि आई एंड्रॉइड पे खेल रहे हैं इस वजह से DRS, 3 eliminations now. सेट दो बस तो सेट दो नहीं हो रहा है Mythic somehow gets away with the angle that he was holding. Crawls over to the rock. Buriram close by to see that it's even harder to 7. They've let it slip away just that little bit in 6th place, but they are still close enough for 2 matches to make a Who are you? difference. Daddy, you are daddy. S2G take a real interesting rotation actually. Slither in behind Flux down towards that south side. Play from that position. Looks good to me in fact. Have some high ground to mess around with. गई है चार भाभी अरे यार मम्मी है यार पागल हो गया भाभी घर पे नहीं है तुम्हारी भाभी घर पे नहीं है तभी तो और भाभी नहीं आएगी कभी कैमरा पे Our real contenders here that we are watching now at 4 AM over towards the west. Just outside Vampire Esports. चलते मजा आएगा वर्ल्ड सिटी देख के हाँ वर्ल्ड सिटी उतरेंगे अपन मेरे को लगता है भाभी कोई स्लिमिंग रूम में पैर भी रखेगी Tends to go for these outrageous scouts recently, and I think that गलती से भी doesn't necessarily have to go for the best position in the circle. Just go for a position where they can play as 4. They play as 4 much better together. I think Svan's trying to take a lot of these games into his own hands. Don't think that's necessary. We saw what they were able to do earlier with the power of that teamwork. कल से खेलना शुरू करेंगे ना स्ट्रीम्स But he is a key member of that team. किसके साथ खेल रहे हो एंड्रॉइड पे खेलने गाइस एंड्रॉइड पे एक्सपीरियंस DRS मैं एक वो है हेमंत के साथ opportunity for them to potentially क्या किसी सिंग विद 20 मिनट भाई iNCO have managed to make their way अगर 2 मिलियन हुआ तो भाभी आएगी क्यों को भाभी बहन जो सब्सक्राइबर्स के साथ रिवॉर्ड है क्या कोई junction to their south Buriram across the road चाहे 10 मिलियन हो जाए भाभी नहीं आएगी क्या मतलब T2K behind them. It is treacherous. अगर उसको करना होता है सब तो अपन करा देते 4 angry men. The only team in the top 5. फ्री का कुछ क्यों कराना अपनी मेहनत से कुछ करेगी वो S2G and 4 angry men. We've said that the playstyles feel fairly similar. बिस्किट के लगे John, this position of iNCO is not good. This is horrible.
ये इनको वाले भाई क्या रिस्क लेके पड़े हैं ना बीच में, बिल्कुल सेंटर में आके चारों लेट गए भाई सबके बीच में। ये नहीं मानते भाई किसी की, ये नहीं दबते। उनकी किस्मत भी। There is a thing called personal space, guys. Please respect it. हाँ ना भाई। There's no coffins, but he's certainly covering with the hay inside that little shack they're playing in. The saving grace they have right now is the fact that no one can really push them at this stage. But if they get spotted, that's kind of it. iNCO, they have been It's a spotted. horrific spot. T2K open up. There's a shot back over towards Fireflux, but you've got to wonder if it's going to really make a difference. They are just getting picked apart here out in the open. There's nothing to do here. Vitaly, last standing, might be able to stay alive as a solo, but that is iNCO torn to shreds. I mean, those 3 eliminations from earlier over towards Nova were decent. Taking a central position like this. And भाई बफर हो गया भाई, मेरा भी बफर हो गया, सबका हो गया। Up a point for it. भाई आप बिल्कुल कंजम्पशन करते हो नो ब्रो। They can take. They do need to have a route into the circle, and 2 knocks have been found. S2G DRS इनको what Loses a smoke. अरे हुई क्या हुआ, इनको मार दी क्या इन्होंने Really पुश be करके? worried about, but अरे हाँ ना? They इनको मार दी ST ने पुश know करके। there's knocks. They know there's chaos here. Flux leads. कैसे एक बंदा इनका बचता है, इनको का कहाँ चला जाता, अभी तो चारों साथ में लेटे हुए थे। वाटर सिटी आपके कारण ही पॉपुलर हुआ है, नहीं वहाँ तो कौन नहीं जाता था, बहुत कुछ मेरी तरफ मेरी वजह से पॉपुलर हो गया है। Vehicle they go. The burnt out husk of the pickup truck will be now their operating हाँ, point. अरे मुझे क्या नहीं पता दिखा था। यार नील भाई। Looks for more. Pika wants to heal. A breakout wide gets punished, and now godlike Stalwart down to 2 active. 1 knocked down onto the floor. Ravenclaw cut out of it. Unfortunately, T2K are just third partying everywhere they can spot. Pika hiding under the hay. आना पड़ते हुए। प्रेडिक्शन करो भाई कौन सी टीम से निकालेगी, Could prove to be पता नहीं भाई, disastrous कोई if it कुछ नहीं lands on the पता। target. If it's on the money, DRS बढ़िया खेल रही है, falls short just. S2G जिंदा है। one back, hopefully on target for Vampire. S2G ने ये निकाल दिया पाजी तो फिर तो S2G लेगी, लास्ट गेम फिर इतना फर्क नहीं Crevice, but it goes far again, and Pika's going to send one back, and it's right next to them. Svan from 4AM takes that shot over towards Schweppes. And it looks like 4AM starting to rotate over towards this western side. You can see now Svan's on our screens, taking shots over towards inside that smoke, ensuring there's no players inside that one. Vitaly also in the sights, but 4AM will have to move further in. So will S2G. Calci currently behind DRS John, checking out their rotation, checking out their mark. चल लॉर्ड प्रोसेडिट यार कितना बफर हो रहा है यार, बीटी हो रहा है पता भी। शुक्रिया रे यश भाई, वेलकम टू द बॉम्ब आर्मी यार। Svan going down again. We said this earlier, is that is like a very bad thing for 4AM to lose. Now S2G looking towards their position, rotating almost hand in hand with them. And now 4AM has to play without their star player. See if they can realign themselves, restabilize versus S2G, but that mini 14 from Calci looks S2G वाले मार सकते हैं 4AM को बढ़िया। हाँ जी। equally on so with a beautiful spray from the M4, needs to reload instantaneously. नहीं आए कोई चक्कर नहीं, मैं तो ऊँटन क्या थी अड्डा के चक्कर में। Out of the frying pan and into the fire. नहीं कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई चक्कर। Though, because DRS are across the road, another team in the same situation. They both started on 140 points blank at the moment. DRS फरी बफर are हो ahead, जा रहा है यार। but it is such सबका हो a रहा है squeaky tight gap. वही। As Flux gets taken down. Another player knocked, and it's 1 versus 1. Ravenclaw, did he get spotted? I don't even know who took it down. It was Buriram with a third-party engagement, and Vampire will be denied. ST मर गई क्या? ST बची है। Third place now. 5 ST अगर eliminations. बाई चांस अगर अच्छा गेम निकालते हैं। With that 5 at 142. ओ भाई DRS की पोजीशन बहुत अच्छी है भाई, बढ़िया बे DRS का गेम। No eliminations as of yet, but I think they're starting to encircle a lot of these teams down towards that south side. DRS अभी तो DRS तो ले जाएगी, मेरे को लग रहा है DRS टूर्नामेंट ले जाएगी। For anyone to fall into and already is पता नहीं मजा आ जाएगा बे, मजा आ जाएगा बे। didn't quite push up towards, and 4AM has been forced to लेकिन find S2G भी ना मान रही ना। And S2G look to be more and more confirming their championship title as these matches go on. Who will challenge them? Will anyone प्रतीक भाई डाल दो। DRS really the only team now. भाई S2G नहीं मान रही।
बढ़िया मार रही है भाई गांड फाड़ खेल रही है S2G take a knock to a nade. It's actually going S2G और DRS का इसीलिए है क्योंकि दोनों एग्रेसिव खेल रही है पूरा बिना डरे. spots the backpack and that should be curtains for 4 angry men. Shuts them down on one. भाई DRS और S2G का ही है मेन कंपटीशन. Going head to head. Kengzo close by. Look for a heal. Try and get something done. Tiger is there as well. Does manage to pop the heal from Kengzo, but the burn from Alex. ऐसा लगा ले जो भी फाइट है ये फाइट अगर निकाल गई ना S2G तो टूर्नामेंट जीत जाएगी. हाँ S2G अगर ये मैच बहुत अच्छा निकाल गई तो नहीं इनकी फाइट अब सीधी DRS से होगी ना नेक्स्ट. इनके सामने DRS ही है. सही बोल रहा हूं. ये एलेक्स ने क्या 1v4 किया है नहीं 1v3 किया है. लास्ट मैच है क्या? नो नेक्स्ट मैच. Flux still going nicely on the edge at the moment, but they will have to move further. भाई क्या माहौल होगा ना उधर तो अभी तक 15 मिनट हो चुके होंगे. लास्ट मैच स्टार्ट हो चुका होगा. Further ahead of them. There's a foothold. हुआ नहीं होगा there. So they moving closer to the position for S2G. As time goes on, अरे बफर हो रहा है यार. बहुत ज़्यादा पता है. S2G don't even need to get too many more points. The placements will start to add up from them. And they had that 19-point buffer to play with. 10 points. यार कितना बफर होगा यार मैच का मजा. गाइस 2x से कुछ नहीं होता. बफर होगा तब होगा ही. बहुत नेक्स्ट लेवल बफर हो रहा है. मेरा भी हो रहा है सबका. हो रहा है बफर हो रहा है भाई. Could open a window. DRS to try and pry their way in. कोई ले S2G बढ़िया. अभी मौका नहीं है. मैं ट्विच पे जाने वाने का टाइम नहीं है. S2G मर सकती है बढ़िया. अगर FFN ने मार दिया S2G को तो मजा आएगा. Now the turkey sandwich closer than ever. मार देगी. मार दे इन्होंने S2G. अबे ये क्या हो गया? And could open a window. DRS to try and pry their way in. DRS is 4 right now on the southeast side. FF मार देगी. इजी मार देगी S2G. Now the turkey sandwich closer than ever here. Worried about this. I'll be aware of who it is now, certainly. Mate, keep on going in long. और ये क्या नीड आया बे? Somehow doesn't do too much there. आसानी से तो नहीं बनने की S2G भाई. भाई S2G पूरा जान लगा दिया भाई. ये क्या बार-बार ब्लैक स्क्रीन आ जा रही है? हाँ क्या? हाँ मेरा भी ऐसे ये देखते हो गया. अरे ऐसे ही है. 2x कर लो. करके देख लिया. 2x कर लिया. तो नॉक कर दिया S2G के बंदे ने. बग्गी से जो बंदा आया था इसका. And the line has been established, but they do have to go further. The zone will push them in. क्या नॉक दिया ब्रो. Live and kicking for S2G. Soulless roll forward into Cal's crosshairs and shut down with the M4. The reload is good as well. No one there for refract. Catch and Lux maybe lining up here as Razy swings out around the side of the smoke. Could be caught out to a cheeky little stand up by Soulcade. He's biding his time. हो रहा है लैग तो एक बार हो जाने दो. How's he still alive? अपने आप ठीक हो जाएगा. एक आधे सेकंड के लिए तो यार. अरे हो गया S2G खत्म. S2G खत्म हो गया. बट फिर भी नहीं रुको अभी पॉइंट गैप बहुत है. नहीं अगर चिकन DRS आ गया तो भाई फर्स्ट पे आ जाएगी. हाँ तो DRS फर्स्ट आ जाएगी. बट फिर भी कंपटीशन रहेगा ना. फिर भी श्योर नहीं है. ये इनकी फाइट DRS से ही होती है. और DRS को अगर ये मार देते ना तो इनका चांस हो जाता पूरा. बट यार फिर से लास्ट मैच में डिसाइडर पहुंच गया अब. अरे ये क्यों है? Getting a little bit terrifying. Law, last remaining influence, Chemin will be taken down by Alpha 7 here. A Brazilian team looking to get back on form towards that top side, have a chance in that final game of today. Certainly still doable for Alpha 7. IHC क्या अटक रही है भाई next level. Next circle will decide all. There is so much interesting terrain in this final circle. But I'd say northeast, northwest and the south. Whichever side this circle decides to center up on, it should win, but it goes right towards the center and everyone's forced to push into. A7 का Miramar अच्छा strong है. अच्छा. But A7 made that move early. Proactive gameplay. We know how fast, slick these guys are with it. Alpha 7 have got such a good stronghold now with those silos. To use as cover, they can have some pretty significant. इसका चिकन लग रहा है. All that it's going to take is IHC having to leave the high ground on IHC.
for them to be isolated. अल्फा 7 के पास ज्यादा लंबा स्प्लिट है पर Fairly soon, the zone about to shut in about FF के 10 करने वाली है। seconds from सबके 4 मैन, हाँ ना 4 टीम के 4 मैन। एफएफ तो क्या करेगी? push in past क्या DRS. DRS नहीं पुश जीत कर रही लेगी लेफ्ट वाले उस पे, लेफ्ट वाले दो मेरी आवाज आ रही है कि Now गई ना DRS वापस आ on the थोड़ी। chase. Can they आ रही है। reignite the S2G hope? डाल दिया पेट्रोल को। Fireflux send in DRS. Giante looks out the window, takes some shots. Lutz is already down to rules, and DRS are holding pretty well already. Lutz already out of the picture. अरे यार Taken रूल्स down, गलत but look at थे। this, Alpha 7. और ये दो पैनिक हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। They're taking no chances. They're fighting off against fire. क्लियर दिख रहा है, DRS पैनिक हो रहे बच हैं। गई, Which बच means that there जाएगी is still DRS। another contender against their spot. to ये be पीछे worried से about. A7 आ Yet गए ना इनको split मारना from है। the rest of the roster. Ketch is allowed to get this res onto A7 Soldier. एक गेम लग रहा है मेरे को। Not quite finding IHC activity. का There game is a है। burn there. Could spread. They do need to move, but he wants to put more into the mixing bowl. Soul K low on the अबे outside. IHC This उसका engagement A7 का spotted फुल out फुल by होने वाला है लग Delta. रहा है। And 7 eliminations now for DRS. This is big. 4th place already. A 19-point differential between them and the top dogs. DRS ने क्या कर दिया? They want to get more ये क्या कर रहे हैं? has other ideas. Forced into the burn. I'm not too sure what you're trying to do there, Ketch, but we'll go down to the play zone. बढ़िया। DRS is still going. 3rd place now. A 17-point minimum gain for DRS. भाई DRS अपने आप को पिन, ये DRS अपने आप को लिमिट करके बैठ रही है, ये बेटी करेगी यार। IHC वर्सेस A7 होगा लास्ट। ये तो मर जाएगा, A7 वाला मार देगा। हाँ इनको तो मार देगा ये। ओए भैया ये उधर चलेगा तो बढ़िया DRS के लिए बहुत। तीनों टीम पे जोन है बे। जा रहे हैं। क्यों ही जाएंगे? बहुत बढ़िया। एक छोड़ा है, पीछे छोड़ा है। थर्ड के कितने पॉइंट है? 8 और इनके किल कितने हैं? 8 ही है, 7-8 ही है। 7 15 पॉइंट। बराबर हो जाएगा। 15 में से नहीं 10 पॉइंट का डिफरेंस 12 करेगा। 7 किल हैं, 15 पॉइंट है इनके अभी तक। और अभी ये मिथिक बन ना जाए बे। डिफरेंस 19 पॉइंट का, 5 किल पहले शो कर रहा था। That they are the kings of Miramar, but at the moment they've been dethroned. There's been a betrayal. बट यार DRS बहुत ओपी खेल रही है पता है, मतलब नेपाली टीम पहली बार इतना ऊपर, भाई इतना ऊपर क्या, ऑलमोस्ट अबाउट टू विन है। Looks for a Brazilian playing team to have a chance here. They started off so strong. Remember the first day ended with the Brazilian. इनको अभी ज्यादा पैनिक ना हो के उतने A7 वाले को निकलना ही पड़ेगा अब तो। At the top of the अबे table. ले एक नॉक फिनिश कर दिया। We thought दो नॉक हो गए, ठीक है। off day 2, but day 3 पुश कर रहे हैं। सेकंड आ जाएगी 15 12 पॉइंट तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। IHC stepping up. ओए कैसे अपने को कर दिया DRS ने। The fight aggressively. गेम पलट सकता है भाई पूरा। Alpha 7, but a nade over to Mythic on the off angle. ये तो होना ही रहना, मिथिक तो होना ही था। Might give them pause. हाँ ये बहुत फ्रीली खेल रहा था, इतना नहीं होता है। They know they need भाई ओए गेम पलट गया भाई, पूरा गेम पलट गया। Yeah, this stage of the game is brilliant, but they lose another. Alpha 7's down to just 2, and it looks like Delta's cutting out the vehicles from Alpha 7. अभी DRS को पुश कर देना चाहिए अल्फा 7 के एक बंदे पे जल्दी से जल्दी। गेम पलट गया बहुत तगड़ा। नहीं पुश करेंगे ऐसे ही पोजीशन में। अबे चिकन है IHC का। Just a little bit. It could go any way right now. ओ भाई साहब, is closing in crazy 5 bro, seconds. crazy. Most central Intensity IHC's हो रही है भाई। position at this stage. Alpha 7 will be cut out by the line that ले ऐसे क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसे क्यों आएगा DRS? A beautiful opening pick for DRS. नॉक हो गया DRS का एक। गलत टाइम पे नॉक हुआ पता है, बहुत गलत टाइम पे नॉक हुआ पता है। Revo is there for the refrag. और रेवो से नॉक पर रेवो Alpha अकेला 7 now back in and healthy versus 2 from IHC and 1 from DRS. IHC with 2, Godless, Zeol, both looking to rotate around. हील नहीं कर पाएगा अभी, हील करने टाइम। मार होनी भैया। And Killer needs to get rezzed here, and Delta will try and stick that one. The blue is going to push them at रेड हैवी नहीं हो पाया वो तो। Refrag Revo has to do something special going forward. देख लिया उसने, देख लिया। For a bit more, he already finds one. Delta starts to crawl through. अबे भाई ये मार क्यों नहीं रहे DRS वाले को? Slightly past that cylinder there to make sure he can spot him, but already Godless finds Carrillo. IHC का चिकन है यार, क्लियरली दिख रहा था तो। Over towards Delta, but he's helping out the rest of his team. क्या हो भी गया क्या तुम्हारा में? How much further? हाँ इसके बाद लास्ट मैच है भाई।
ये आपस में लड़ ले, डेल्टा बचा रहे, सेकंड था कम से कम। डेल्टा मर जाएगा, ऐसी वाला मार देगा, मार दिया, मर गया डेल्टा। अरे वो मार दिया, ने दे दिया। रीलो नॉक हो गया। ऐसे कैसे करने हैं? हाँ एरिया तो ज्यादा है इन पे। अरे बस मेरे हील नहीं है क्या? IHC ले जीत गई, 2v1 है, जीत गया ऐसे। चल IHC सेकंड पता क्यों था? IHC को एक तो घर से सब दिख रहा था, और सेकंड चीज IHC को सबसे लेट मूव करना था, बाकी सब बहुत दिख रहा था। DRS 158, S2G 161, बट I think अभी मेरे को क्या लग रहा है, अभी DRS पैनिक में मर जाएगी। 8000 लाइक हो गया, 10,000 कर रहे हैं जल्दी। जितनी तो चाहिए, बट पैनिक में मर जाएगी मोस्टली। So many teams with a chance here, Blank. It's got to be at least 5 teams in one game who can win this out. At least that trophy sat in between every single team at this stage here in Jakarta. Just over, yes. It's so close. What we do know is that the 3P is not on the line. It's going to be a new champion this year. And what better year to have a new champion than the year of improvements, of evolving throughout the entirety of the scene, throughout all the countries, all the regions. Everyone's getting better. And it just shows the 5.5 points average towards the bottom of the table is just unheard of most of the time. Incredible stuff coming through on Miramar, and IHC the ones to take it home, right? I don't think you would have called it, but either way, no, they slow out the 7 and everybody else around them as well. IHC take the chicken dinner. We're going to head over to the analyst desk. What an absolutely crazy performance coming out from निशान शेट्टी तो कूल क्यों बन रहा है ब्रो? Why? And I was so Who are worried you? to see the early stages of the game win that fight against Buriram, because that's where it all started. The unsung heroes. I mean, this is what I was kind of talking about, right? The spoiler roles, they're really coming into play at one point, and that just happened. Alpha 7 had a chance to put themselves, actually, I mean, they still put themselves in a great position if they would have gotten that win. By the way, Revo, we got to give him some credit. He played out of his mind in that game, and he definitely did a lot to keep Alpha 7 there within the top 2. Chef's kiss in that game, absolutely something of beauty. But S2G, the fact that they go out earlier than a lot of those teams towards the end enables a lot of the teams to still have a shot for that first place, for that trophy to claim to be the best team in the world. And they're taken down by their Turkish brethren of Fireflux. I think that qualifies 7 as treason. I think it does. And what's crazy is that those two teams are just so used to playing against each other. If there was a #1 का आराम से 15 करोड़ प्लस नहीं, at that moment, इतना नहीं it होगा, would कम be होगा। another Turkish team, right? You couldn't write anything more poetic than that. And I want to kind of go back a little bit more with STG, because we saw them 15 करोड़ बोलना इजी है गाइस। super passive, like they were trying to go for those 15 करोड़ तो बहुत hefty amount होता है। like it definitely बहुत backfired. ज़्यादा स्कैमी करनी पड़ते हैं गाइस 15 करोड़ कमाने के लिए। They decide to just switch it up, and he ends up Limit hindering them लगा from कमाना है, hoping very going tough. into this last game. That is not the case for STG. That plays But like legitimate नहीं कमाना चाहिए they भाई। were able to survive a little bit longer, get more eliminations. The fact that DRS survived so long into this game, the fact that Alpha 7 got so many points, they're back in the race. They don't have that cushion anymore. They're not safe anymore. Teams down below them can still catch them. 27 points on IHC with the chicken dinner, 12 eliminations in that game as well. And I do want to have to highlight Alex, his performance, his fight against Buriram kept them in the game. And Alpha 7-7, 19 points as well in second place. They're still very much in the race. They are very much in the race. I mean, those 7 eliminations, I don't even know how many of those eliminations were actually from Revo, but the 19 points total, that's massive. You were just talking about it too, Max. DRS Gaming, 18 points, and GODLIKE STALWART with those 18 points as well. I mean, like, I think Blank said it best. It might come down to 5 different teams having a chance at getting that first place. Yeah, I think it's going to be 5-6 teams. I am so hyped to see exactly what the leaderboards are going to be looking like right now. But I mean, DRS, we call them like a more silent team, but they've 7 point different. ramping things up to the point where today they're getting banger after banger. चलो 4 लाख मिलेगा, 4 लाख में से 30% काट दो। So good.
And T2K, they're like the third. बट बाहर से कट के नहीं आता इधर कटना बाहर वाले से प्राइस में से पहले से कट के नहीं आता टैक्स इधर कटाना पड़ता है फ्लैट 30 कटाना ही पड़ेगा प्राइस मनी में से तो फ्लैट 30 कटना पड़ता है And another one is that we are not going to have a three-peat anymore. Nova out first. We are. That was a heavy fight to watch. Honestly, my heart was bleeding just a little bit there because that was the point where everyone realized it's not going to happen again. It's not going to be a three-peat. Coming back to one of the teams that's what I also want to talk about, which is the fight from S2G against Fireflies. You just talked about it. They just took themselves out. S2G still took home 6 points though, so they are probably still in the lead. And we only have one more game to go. Does that mean we might see a little bit of a hot drop scenario? Maybe some teams looking out for them in the kill feed? We're going to see some tactic switch-ups? We do like to speculate about hot drops happening in, like, you know, your PMPL finals, in your championships, in your PMWI. We are talking about a PMGC Grand Finals here. Do you want to play it all on the hot drop? That's too much for me to answer. I'll tell you after I see this overall with... Oh, okay. It is close. S2G, 165 points, DRS Gaming. 7 teams. I would say 7 teams. 7? Right down to IHC. Like, of course, going to need a chicken dinner and teams at the top to get nothing, but that is going to be my limit. 7 teams currently in the race. IHC is definitely off for me. For Angry Man, I can definitely see a chance from there. Everybody from up there, I can definitely see them going for that first place. For S2G, I said it earlier, I don't want to see them trying to play it differently than how they've been doing. Keep doing what you were doing there when you were getting those wins, when you were getting those great placements, when you were getting those eliminations that put you currently where you are in that first place. With DRS, I mean, you couldn't ask for anything better for DRS. A team that 2 of their chicken dinners are coming from Erangel as we go into the last Erangel. It couldn't be more poetic for them. And then you guys were talking about hot drops. You guys were talking about teams that need to be careful about that happening. Guess what? I'm going to be looking at all the teams here in this second page because at this point, they got nothing to lose. Influence Chemin, I mean, a team that went from 3rd place all the way down to 16th. You better believe that team from Brazil is going to be looking to make a statement, and I would be massively surprised if no. But final का last day का last match लौंडो अब जीत जाएगा अब कोई ना कोई जीत जाएगा tournament. That's pretty significant, but as you can see on your screens right now, it's the final game right here for the grand finals of 2022 PMGC. Oh boy, 16 teams all ready to drop on down, and only one will call themselves the champions after this one. It is absolutely crazy. Let's look at some of the expected drop locations. Now, meanwhile, we have the last couple of minutes to maybe talk about the overall situation. I know you said top 7 is maybe, you know, it's a stretch. It is really a stretch. That would mean IHC really does have the opportunity. IHC, isn't that one of the teams? Well, coming back to the hot drop scenario, they would need to have everyone in that top scenario to do incredibly bad. Would you say that's how they should go into this match as well? Literally just pick every fight from every team that you know is the top of you and maybe just go for it. Isolated fight. Let's take it. You know, I'm going to agree with your point. I think that if there's one team that's currently in the race for that first position that has to go for a hot drop, IHC is the team that would make the most sense, right? So we'll see if it's going to happen once again. I would say maybe don't go for it because even if you do go for the hot drop, even if you do win it, you maybe lose a player. You lose 2 players. They need a chicken dinner for this one. You're taking a risk that I think you want to avoid. So I would say even if the idea is to go for the hot drop, don't do it. मेरे को नहीं लग रहा. I'll do 2 OP. I don't think. Get that chicken dinner on Miramar, and that might be just enough to make the cut. Go for the hot drop. कोई बोल दे यहाँ पे तो नहीं ऐसा करता है. पहले टीम करती थी उन्होंने वो पकड़ी गई जब तो बैन हो गया था. At the very biggest stages like this one, I think we've very rarely, if ever, seen that. So that would be definitely an interesting thing to watch. Let's look at the teams to watch from both of you. You have, except for S2G, you have different teams. Maybe starting off with S2G, because obviously they're in the league. Maybe I want to put you on the spot actually. Give me some percentage of how likely it is that you think they're going to take home this PMG Grand Final. How sure are you? Right now, I would say, I mean, with the amount of competition, you got DRS that's been looking super consistent, you got GODLIKE, STALWART not being too far away, so many top contenders. I would say we have a 33.333 repeating 3% Really? chance. 1/3. Okay. All right. I actually have my like a solid 69 to 70%. I was going to say nice, but then he went 70%, so not anymore. Unfortunate. Nice try.
Going over, godlike STALWART though for you, Max, man. I mean, you just talked about that consistency. Anything else? I'm still wearing the jersey. Okay, it's keeping me warm. Okay, it's still keeping me warm right now. I appreciate it. Godlike STALWART, please sponsor me. But I want to see them be on top right now. They had the grand finals curse happening for the longest time, Seven. Okay, stop laughing at me. Stop it. I want to see them take themselves the win right here. If they take the chicken dinner, they had no chicken dinners the entire event. It would be something of pure beauty for them to not only get themselves a chicken dinner on the last game, but also claim the trophy towards the very end of the grand finals. It would be. I mean, for me, it's gonna have to be Alpha 7. Just like you are with godlike STALWART, I would have to pick Alpha 7 too. I mean, they just showed up what they were able to do, especially Rebel after that last game. स्टार्ट का वो मेरे भाई हो जाएगा क्या दिख रहा है DRS इज अंटार्कटिका टीम। अरे यार क्या ही बोलते रहते हो तुम, पागल हो गया। Just because I don't want to see it. I don't want to see them playing differently than how they usually play. Don't I don't want want them to be overthinking this scenario of what's going to be. DRS भी कर दो गाइस, एक बार DRS भी कर दो। I do wish though that they change कौन जीतने वाले हैं? and I do hope that they change where they usually tend to rotate, because I'm pretty sure some of the other teams might be trying to play that spoiler role. Yeah, I mean, I like what you just said right there. Just play your typical, good old, basic PUBG Mobile that you've been doing so far, that's been giving you so much success in these games. When you start overthinking things, well, look at that knockoff effect. That previous game got obliterated. Unfortunately, it's 5 Flux, but he got obliterated, right? So just play a typical game, play what you do best, which is going for good rotations and now getting those eliminations. Yes, DRS OP. That's what allow them to stand out, and that might be the reason why they can call themselves the world champions. And for DRS, I said it too, you couldn't ask for anything better. Going into the last game, going into Erangel, going into a map that you have been able to, in a way, dominate. Today they have had semi-good performances there too. If they can just put themselves in a position where they can strike at the end. We saw some great 2-2 splits there too in Miramar that were wonderful. This team has what it takes, and that's why I wasn't going to be giving the 100% to S2G for them to be able to take it home, because I definitely think if it's going to be DRS, then it's going to be Alpha 7 that can maybe take this. Talking about good rotations and consistency, something that we hadn't touched on, and we won up before we get into the last game. 4 Angry Man, because they have been popping off today as well. They got their first chicken dinner, and they do have a chance at being PMGC final winners as well. Any thoughts on 4AM? Do they just have to continue like this? Or on that previous game, I felt like they were a little bit desperate. Like they really wanted to get in circle, they really wanted to get in a really strong position, which I fully understand. But unfortunately, in a lot of times, especially for PUBG Mobile Esports, desperation can cause a lot of issues, can cause a lot of mistakes. And in that case, that's what did cause their demise over there on Miramar. Just go in with a calm, paused mind. You might be able to make it work out. We know what this team can do, especially with the knowledge of Svan. This team is pure gold when it comes to their peak performances. Got to be careful, man. You cannot overthink your situation. You need to be calm, cool, and collected. Yeah, sadly for them, Asman has been getting knocked a lot in the past couple of games, so hopefully that's going to be changing. Hopefully he can stay alive and put up a performance that he was able to put up when they actually got the chicken dinner earlier today, because he was amazing what they ended up with that. अभी तो DRS और इसमें ही है. Godlike STALWART. I got to bring him in a little bit too, because I feel like this is a team that has been struggling with indecisiveness, whether they're going to be able to be aggressive or not be aggressive. Anything what they're able to do now with the aggressiveness that they have showcased. And I kind of want to put you on the spot, Max, a little bit here, since you are the #1 fan of godlike STALWART. You are. Come on. That's true. I am. Their Twitter page knows. Would you want to see godlike STALWART continue with the aggressiveness that they've been playing, or a little bit more passiveness? I think STALWART is at their best when they're aggressive, so that's a big yes. I want to see them keep fragging out, keep on going, boys. Yes. Ladies and gentlemen, it is time. We have the last game of PMGC 2022 finals in our hands, and it is once again time to also hand it over to the commentary desk. John Allen and Blank, it's been an absolute pleasure. Take this away. Thank you so much, Alex, and the rest of the desk. I'm so excited for this last game. Match 18 is just around the corner with less than a minute to go before the plane flies. DS वाला नर्वस लग रहे थे बाजी नॉट गुड. होता है यार, फर्स्ट पोजीशन पे आप रहोगे ना, आपके अंदर एक वो रहता है कि बहन चुप क्या होगा यार, क्या होगा. ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, बहुत बड़ी. Death no L sitting coming through from S2G. They are nervous, and
no reason not to be at this point in time, but S2G, they have what it takes. It would be an incredible win for S2G to take it all home right now. How are you? I'm good. Points currently at the moment, 7 points ahead of DRS. Alpha 7 behind them at 153. S2G need to live here. There are a couple other teams that might be able, with a gigantic chicken dinner, a gigantic win in 4 Angry Men, iNCO, and Godlike Stalwart, potentially. But right now, we're looking at the top 3. S2G, DRS, Alpha 7, this is it. This is now. This is where they become the champions, the new champions of PMGC. Nova are not even on the front page of their overall standings at this time, with not enough done and not enough left in the tank. You're right, it's looking good that we could crown a new champion to lift the trophy, sparkling in its glory. And now in Jakarta, the last plane path seeks its way from Novo to the Midwest coast. Southside plane path, Novo. Like you said, the west side coast here, we've seen this one multiple Oh वाह, times. DRS का drop कौन सा है? Center of the map, we've seen it up towards DRS FT2 कर दो guys. This is something that the players, the teams are all used to here in Jakarta, ready to play out their final game. Won that prediction, God Garo is smash. No prediction, बस target ना हो DRS वाले और panic ना करें, वरना S2G तो लेके जाने वाली है. अगर वो लोगों ने ऐसा कर दिया तो it will be a problem. All the luck for DRS. अरे रे, फर्स्ट पे 15 तोड़ना ही 3 करोड़ 20 लाख. मैं तो प्राइज मनी वो एक छोटी अमाउंट नहीं है, वो 3 करोड़ 20 लाख उनको क्या कुछ ला देगा. एंड वो एक इकट्ठा एक बंच पैसे का वो बहुत काम आता है. आदमी अपनी मन चाहिए जगह पे लगा देते हैं. मुझे बनेगा मिलिट्री खा लिया बैन को पूरा. They've got more to worry about in those top 3 spots. iNCO though, बैन वाले पे नहीं होते. एक्सपीरियंस है ना, खेलते बहुत ज्यादा. so many times we've seen a few times now where they've been dropped upon, and it looks like they've gone for a bit of a lineup over on this south coast as opposed to trying to drop all in one spot. I like that, I respect that. Then Abete is even further behind at the moment. No one seems to be dropping close to them. On the other hand, T2K, S2G, very close together. Wolves will be dropping towards Pachinki though. I think for S2G, they've got a little bit of a lone soldier out towards that western side, just the south of 4 AM. Alpha 7 in their drop spot down towards Milter Power, their backup as opposed to North George. They've been forced to play this one a fair few many times here on Erangel, having to switch up from the normality of themselves. For S2G on the other hand, this seems pretty easy for them because they drop towards the center of the map. They're pretty used to playing this type of game outwards. कौन जीतेगा अभी? यार मेरे हिसाब से तो DRS या S2G में ही कोई जीतेगी, और तो कोई जीत नहीं सकती. मैं खुद 4 मिलियन का प्राइस 32 करोड़ का प्राइस पूल. अरे 32 करोड़ का प्राइस पूल होता है, उसमें बहुत कुछ होगा. अभी आप लोगों ने बोला है कि अभी आप लोगों ने मेरे को तो बोला है सामने 4 लाख का है फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट प्राइस. Brushed up on their Brazilian, because they need to heed that information, heed that advice now. Such a crucial time for the top spots, and the tables so tightly packed. Nobody over a 10-point average and nobody under a 5-point average. This is the closest final we have ever seen. It has never been nail-biting. बात तो ये है, पता है, the popcorn कभी नहीं ऐसा फाइनल देखा जो इतना क्लोज हो. at the moment. S2G Water City. It's on the floor. Water City. ये जीतने के चांसेस हैं. And all these teams are worried. Water City एक जीत का संदेश देता है. Moments, those little mistakes that might come through, but this is the game where you shore up everything. You make sure every single. Pochinki, कोई टीम गई Pochinki? No idea. S2G Pochinki जाती है ना, तो इन्होंने चेंज कर लिया यहाँ.
They are roaring. Step 2. They are high, and the waters are not easy. इनसे बोल रहे हैं सेट 2 का चांस है यार. मैं तो अच्छे वे में बोल रहा था, तुम लोग किस वे में बोल रहे हो, देख लो. Hold fast to the wheel. Call strong to your team. And look to the horizon. On the tables, there is a top 3 clear. At the moment, looking at how it stands, DRS with 2 chicken dinners win tiebreakers. Unless one of the other 2 teams, S2G or Alpha 7, takes the chicken dinner here, that could be important. DRS, remember, they would win a tiebreaker if it came down to it. Alter Ego, as per usual, nice and center. Influence coming up towards Yaz. And Alpha 7 passing by Buriram, but getting slightly ahead of them. Now Alpha 7, we've seen that they've found it a little bit difficult to keep up on that streak sometimes. The momentum looks good, but when it starts to falter, it falters hard. So losing a player early like this would be terrible news. Luckily, they quickly swing the wheel to the left. Actually hashtag 2. क्यों? अच्छा वाटर से गई ना, तो मतलब DRS में है. Where INCO and Alter Ego are currently playing. Easy है ना. Taking a central spot within the circle. Vampire. They got back-to-back chicken dinners today. They started down in the dumps, 16th place, and I feel like it wasn't what they deserved, and I think they showed that in matches 3 and 4 of the day. I think a team like that needs to really find their feet much sooner, though. Can't be looking down and watching where you step. You need to be firmly planting those feet with your eyes out towards the future a lot of times. I think Vampire took too long to make those changes. The desk talked about it, we talked about it. Making those changes on day 3 and looking absolutely sublime just does not cut it, especially in this PMGC where every single team is horribly, horribly strong. This is the best quality game. प्रेम कब से खेलेगा भाई? कल से. So much improvement. Sad downfall for Nova. पागल हो गया. उनका downfall था पाप की. Such excitement. Nova, तेरा नाम Omega. But who will be? बोल रहे हैं downfall for Nova. Nova को अभी down carry नहीं सकता, इतने ऊपर चले गए. To mount that honor, to raise the trophy here in Jakarta. S2G so desperately would love it. भाई S2G के पीछे कौन पड़े हैं? Trophy to Turkey. IHC. Scream to the world, come again. पागल हो गया. But the pressure's on now, and it's debilitating. Especially being in first place at the moment. Omega. Looking down on the rest of the teams, seeing how close they are, how quick they are climbing, and how gritted their teeth are in the process. That is when you can become quite terrified, when you can just look towards the top of the एक टूर्नामेंट क्या है डाउनफॉल? हाँ ना, लगी चल देते हैं मैं तो अपनी. और है तो ऑडियंस तो खतरनाक है अपनी. to move those hands up, Danger audience, danger. those handholds, and pulling yourself further up that leaderboard. But for S2G, kicking down and trying to keep those assailants away from them becomes quite tricky, because not only that, you're also trying to keep a handhold yourself. Circle over towards this eastern side now. Looking at some of these positions on the map, S2G have moved across. IHC are behind them on that western side. After a good chicken dinner, they obviously are feeling quite good about themselves, and I think S2G may have to worry about that. Surrounded by Nova on the southwest. Influence came into the north. In the meantime, Alpha 7 moved into a compound just on the south side of the Yasnaya fields. Next circle should be popping out of all the circles in this game, and this will determine a lot of where these players will have to move and where they'll have to go. A lot of times we have seen quite a clear position either on the north or south side of the river. This time we'll go all the way over towards the east, towards Yaz. Very bare, empty position on the map. Places available. A lot of these teams already in though, but again, S2G. भाई अभी तक एक भी बंदा नहीं मरा होता है. Points, big numbers. क्या ही intense हो रहा है. A northern rotation could work here, John. Plenty of options for them, but
moving over the tundra of Yasnaya Polyana Fields on the south side is so barren and difficult to use. Far from ideal. S2G move up to potentially control Yas Bridge. If they can find 4 AM on the cross, it would be a great result. Not only would they be able to accrue the points for it, but take out an outside chance to overtake them in 4 Angry Men. आसान हो गया गाइस अब तो Points to their प्रेडिक्शन करना 165. इतना मुश्किल नहीं क्यों? रहा. It's a bit of a long shot at 24-point difference. नहीं but ऐसे ही मजे ले रहा हूँ. We've seen crazier things. we definitely have. ये सर्कल का बोल दिया था ना मैंने. I think holding on to this bridge और crossing किस्मत was से बन गया smart. भाई. 4AM's forced down towards that south side. It clears up even more of the northern edge, meaning that S2G's rotation is even easier. And this is what makes them the #1 team in the lobby so far, is they're always thinking steps ahead at the moment. Alpha 7 take a knock. Disastrous. The start of this game, luckily, there should be a res onto this one. Carrillo drops the smoke, but out in the open currently. ये लो Alpha बढ़ा 7 दिया. is जिससे ज़्यादा नहीं Chemin. होगा. Shouldn't be able to capitalize on this one too much. Send a couple of shots through. Carrillo will position the buggy in front to ensure that this res does happen, and then maybe just dip out of अभी there. तक भी मरा नहीं, अभी तक भी नहीं Carrillo मरा. looking for the res over onto Mafioso. Super important for them to stay as a team. Back over to Intense final match into Godlike Stalwart clashing with GEEK fam. As S2G do not stop 4 Angry Men from moving south, as the bridge that they chose was a different one. Instead though, मरे बच्चे. Chingchen might have spotted S2G looking out for the hold on the northern side. Ray Z, oh my goodness me, he's so open. Takes a shot, takes a hit, back to cover. कितना बफर होता है. Such an important little top down there, Chingchen. बंदे बोल रहे हैं मैच टाई हुआ तो 4x4 4x4 स्टेडियम. Very quick reactions. क्या Crazy कह रहा है? is lonesome because Silas is currently scouting down towards that middle, scouts towards Alpha 7's position. How make many sure matches that left? he's भाई in last that match है ये. and now they have a little bit more information to play around जो with. जीता भाई सिकंदर. Next circle soon. This game is going quickly now, John. चाहे वो तो DRS जीतेगा. यार कुछ भी. That's just what happens when the excitement builds to a crescendo now and boils over the top. Little boy will take down T2K Jane on the cross. It looks like we will be heading to this horrific area of the map, to that north side, the fielded area. Not many playable spots there, but Alpha 7 super happy with this one. Still has a decent position on the map towards the center to play around. S2G also still in, but will have to regroup. Influence Chemin on the north side. Yasnaya is their drop spot. Should be familiar with the terrain, playing 2-2 split. Ooh, as S2G move through to the center. सीधी के साउंड बढ़ा दूँ guys. Is going to pay out here. Moving down, actually might be a decent compound for S2G to head towards, but Silas is unfortunately cut short. And now they have to go against 4 AM. That's just 3. This is terrible news. DBS in hand of Ray Z already. बहुत slow हो रहा है, usually last match में intense होता है ना. This is great news for S2G. Chingchen's angle could be pivotal for 4 Angry Men up on the hill. Kalsi and Hamzi a little bit further back. The flush is good with the burn from the Molotov. Good Xiao and Svan both launching nades on through, and Kalsi gets tagged. Svan finds Kalsi on the sidelines, and Good Xiao wants to put another one in. Through the window there, ricochets off burst close, but the burn is brilliant. A lot of damage found instantly, has to pop it. The nade in through the window, doesn't quite get the knock, and Svan is low on the upstairs, but Razy in with the DBS, spots the heels. You cannot get away from him. He is on the hunt, looks for more as well, finds the nade in hand, and it will not be found. Svan is shutting down the Razy. Oh my God! He is भाई. He is क्या हो गया? S2G have Razy to thank. तू थोड़ा सा पीछे चल रहा है, वो तेरा भाई ये क्या खेल रहा है? गलत मार दिया. बहुत गलत मारा भाई, गलत ही खेल दिया. 2x कर 2x कर. DBS से ठोक दिया बे. भाई सीधा घुसता ही है, ये तो रुका ही नहीं. गलत मार दिया बे. नियो समझ जा, बहन के लोड़े, ऐसी जान चाहिए. 169 पॉइंट हो गया ना समझ इनके. गया नियो. समझ गया. ऐसे DRS Alpha 7 yet to find anything during this game. और तो और सेंसी का मैसेज आ गया वहां से. बोल रहा है बहनचोद, इतने प्रेशर में माँ चोद दी.
With a DBS, he looked unstoppable. Rolling ले गई S2G ले गई. thunder on the stairs. कॉन्फिडेंस भाई कॉन्फिडेंस. I don't think 4am knew what hit him. But they are अभी out of the दिक्कत race. ये है कि DRS एटलीस्ट सेकंड या सेकंड के फर्स्ट या सेकंड ही आनी चाहिए. ये देख प्रेशर में खेल रहे हैं लोग, S2G रुक रहे हैं. The time of their lives during this PMGC tournament from day क्योंकि one. ऐसा ना हो कि कोई भरोसा पता है नहीं, क्या दिक्कत हो. ऐसा ही है. ऐसा ना हो. इनमें कोई इनको जगह नहीं मिलने वाली. नहीं वो ठीक है, दिक्कत पता है क्या है, ये भी बैंड तो सेकंड से ऐसा ना हो कि थर्ड फोर्थ से भी नीचे चले जाएं, फिफ्थ चले जाएं, सिक्स्थ. ना इतना नहीं होना, बस फर्क इतना है इनको सर्कल में पोजीशन नहीं मिलने वाली है. ले सर्कल भी बहुत दूर घट गया. ये सर्कल है ही ऐसा, इस सर्कल में कोई पहले से सेंटर वेंटर के आसपास रहता है ना, उसको मिल जाता है. वो डिप खाली मिलेगी इनको, बस एक वो राइट वाली. They will grab their teammate and run back to safety, back to regroup. नोवा गुस्से में आ गई है. नोवा ऑर्डर हंसते हुए. S2G in the last game, but Nova might be too tall an order for them. However, they have gone fairly even. But नोवा को थर्ड पार्टी होने वाला है गीक से. and they play split. अरे वीपी विन पे भी देख रही है. Their attention and Solus rolls in so late. ये खेला एफएफ वाला खेला क्यों आया? जगह कौन सी है? हैं पता नहीं. Fail to go in. बोला ये आखिरी मैच खत्म करो, घर जाना है भैया. Flux going down here. Alter Ego influence Chemin. TVS वाले मीठे. यार. Out of the 15th and 16th place. यार DRS वाले क्यों स्लो के डिप ले ली यार, ये गलत खेल रहे हैं बे. S2G and DRS outside on the east. INCO ओमेगा देख इनको प्रेशर मरवा भाई गया. देख लिया मैं. मरवा गया इनको, प्रेशर मंगा गया. unwilling to head central, but DRS इससे इनको प्रेशर नहीं लेना चाहिए था. bad news for them. Playing with 3 not ideal at this stage in the game. Zone 4. वे भागेंगे यहाँ से, गाड़ियाँ ले लेंगे. अरे ब्लॉक मारेंगे भी. DRS diminished in the face of it all. A team that I don't think anyone really at the start of this would have called to be here in second place with a chance to take the top spot in the final match. But here they stand, and Nepal behind them. Exactly, they've really shown the strength of Nepal, but INCO taking horrible अरे इनको भी हक दी. as they move through. Cut apart. इनको तो नेक्स्ट लेवल लगी है, पता है कितना अच्छा खेल के भी. Hits the deck. There's still players available for INCO, but STALWART decides to try and get ahead of the pack. और स्टालवर्ट ठोकेगी मेरे ख्याल से उन पे. ऊपर जाते ही पे लेगी DRS पे. Makes that movement. Becca now tries to support from up high, but it looks like INCO is going to have इनको का तो पिनको बना दिया उन्होंने. trouble ahead. एक मिनट. क्या पकड़ा आ जो भी है. Of their performance here in the finals. बंद है, बोलियो ना तो भेजो. बंद है कैमरा. Slow and they falter in this final game. DRS though with a crucial challenge, losing it down to Delta. Could this be the first contender out? Oh, Delta somehow नहीं आउट लगी है. बस बोलो ना. and S2G. अरे यार. Now Alpha 7 poised in a जीत गया central spot, S2G. only team A7 now पे बचा really है. with a big chance has GODLIKE STALWART. मेरे को लग रहा है S2G फर्स्ट है, ST सेकंड और अल्फा 7 थर्ड. चलो बोलो ना, बजाओ जाओ कैमरा ऑन करना है. चलो. STG तो पेल, ये ST तो पेल रही है भाई. Great central play and great edge क्यों? play will finally fall. अबे यार मेरा ये क्यों हो रहा है, इतना बफर सा क्यों हो रहा है? Hold on to their third place, second place spot. मम्मी थी यार गाइस, क्या बात कर रहे हैं. मर गई यार. प्रेशर लेके देख, तेरे को क्या बोला था क्यों यार. देख मेरी बात सुन, अभी एसटी आ गया 149 पॉइंट और A7 तो 153 पे है ही. फोर्थ आ जाएगी वो DRS. प्रेशर आना था, 100% प्रेशर आना था भाई. प्रेशर उन्होंने ले लिया. वो उनका जो वो शेल्टर पे रोके ना, मैं तभी समझ गया. बट इनसेन है भाई, ये इनसेन है. ये जितना भी ये DRS ने खेला ना अभी, इनसेन है. क्यों होगा? हाँ होगा. मैंने कहा मोर देन इनफ है जितना भी इन लोगों ने किया ना. कौन कर पाता है बताओ? बहुत मुश्किल होता है गाइस. 2 points separates them from that third place position. बोला चोक करेंगे लास्ट में.
अरे चौक का बात नहीं है यार, होता है प्रेशर यार, फिर क्या हुआ, इंसान है वो भी। S2G still as 4 as they are. बोल रहे हैं अब It's unlikely. वहां तक क्यों पहुंचे हो ना? अबे सुन तो, आप बोल रहे हैं नेपाल में गेम बैन होगा। 5 in this match. हम्म। Should be enough for them. तेरा भी #2 के बाद ही गेम बैन हुआ था ना? Like STALWART want to rewrite the fate. आराम से मगा। Tug on the threads. सेम जैसे तुमने आगे वैसे ही डेर यार, तुम लोग ऐसा, तुम्हें क्या, तुम कूल क्यों बनते हो बे? कौन हो बे तुम लोग बच्चे हो? क्या कह रहे हैं? तो इनको मतलब स्ट्रीमर कोई भी मुंह से बात बोले, इनको उस पे टॉन्ट करके बस कूल बनना है। Once more shut down, the lineup is good. Another player was knocked on the inside, and Alter Ego fall down to 1. The last will find no more room to play. S2G picking up a bunch of these points. Stealing them from on far as well. S2G ने निपटा दी भाई उधर से। S2G तो जीत गई भाई, 7 किल ले लिए भाई। अरे प्ले से पता चल गया था ना, प्ले स्टाइल से ही। STALWART lose a player here. Pika now out, leaving STALWART at 3 players going forwards. Alpha 7 टर्की की पहले टीम जीती है कोई? a little bit further in, but their eastern side, it's looking tricky. It's looking pocked with teams and players. बोला ना गाइस, नोवा टॉप 5 नहीं आएगी। For a little bit more, Mythic spots that position over towards S2G, but that spot is just so good. They knew they had to fight for it versus 4AM, and arguably they take this game, they have Ray-Z to thank. 4 eliminations from Ray-Z in that first engagement. The DBS. चलो चाइनीज स्ट्रिक टूटी तो सही। लॉल। than ever. क्यों चाइनीज हर बार जीते हैं इससे पहले? In match 18, 7 eliminations total. The lead stretches away. The stride is hit. And S2G may have already done enough. Alpha 7 though. एक ही टूर्नामेंट बैन पे वो हुआ था उधर Knock over onto पोलैंड 1.5 महीने के लिए, तब कोविड आ गया। down to 2 and nade over top from Revoke. वरना वो वाला यूरोप में, यूरोप साइड पहली बार टूर्नामेंट देखा था मैं। PMW टर्की में आई है। Grim as it may be. हाँ। Pushing back STALWART. They do not want to give up this top 3. IHC, the only others, would be able to challenge it, but they're far behind at this point. STALWART down to 2 players. Alpha 7, a second place they'd be happy with at this point in time. For Brazil, it would be a wonderful एसटी का भी जीजी। हाँ बस अभी ये 7 क्रॉस कर जाएगा, डीआरएस को, डीआरएस थर्ड आएगी। किल ले जा रहे हैं। अरे 152 आ गए हैं एसटी वाले। 6 eliminations, 9 total now. 3 for Kelsey. भाई ये सर्कल विन पे आई ये भाई। Is there anything मैच के बीच में ना रोने लग जाए भाई ये जीत के मारे। पता है बेचारे ने जो डीबीएस से मारा है, भगवान ने दया कर दी इसको। Vampire cowed behind any cover they can cling on to. मन में लड्डू तो फूट चुके होंगे उनके। फूट चुके, मैं बोल रहा हूँ ये बहन जो मैच छोड़ के रोने ना लग जाए। They need something huge right now, and they haven't started to make that jump up. And the amount of eliminations available inside the lobby is starting to dwindle just a little bit. And all the while, S2G is picking up. पहले जा रहे हैं। We'll find the knock over towards Vampire Esports. वो 4 लॉन्डो का एमओ भी मिलके रखा होगा। Disgusting circle. ए गाड़ी लेके किधर जा रहा है? इतनी गर्मी क्यों आ गई? ओमेगा for the PMGC, 10 eliminations. एक उसने रोक लेने लगा। ओए चुपचाप रुक जाओ, मार में यहाँ पे रैप्टे। 170 इनका एक गॉब्लिन जैसा था, कह रहा था कि जीत गए भाई, जीत गए, अब तो मैं जा रहा हूँ। Alpha 7 to be able to overtake them. Godlike STALWART maybe, and in comes Alpha 7. बीपी को कमबैक करने लगी है। To hold them off and maybe play spoiler. The Brazilian roster fall apart and it's Vampire to pick. DRS आ गई सेकंड। वू! 2G have no one else. बैन शॉट बच गए। डीआरएस बच गए भाई, बच गए डीआरएस। डीआरएस थर्ड आ गई। एसटी अगर 7 पॉइंट लेती है तो डीआरएस थर्ड आएगी। अबे पोजीशन पॉइंट काउंट ही नहीं है अभी तो, उनको बस 2 रैंक और सर्वाइव करना है। एक आधे किल ले भी लेंगे T2K के। बट भाई बहुत बड़ी पोजीशन है। One more twist and turn is all it'll take for S2G to raise the trophy.
मर गई। And S2G are looking for them right now. अरे 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 They have eliminated so many and so much of the competition during this one game. मेरे को देखना है चेयर तोड़ के कैसे उड़ेंगे ऊपर को, Nervous, far from it. है ना? Prepared, सेलिब्रेशन ready देखना है। to do what necessary. मेरे को लग रहा है चिकन लेंगे यार। To take it back to Turkey and guard it like a dragon. अगर चिकन लिए तो इनका सेलिब्रेशन ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा नॉर्मल मरने से। गलत And गलत stay होगा भाई। alive, survive. The Wolves, the only other team, as 4, and they're trapped right on the south side. Next circle, looking to shrink. Where will we find it? Finally, it moves away from S2G, but blank. It's too little, Oh, too by late late. to stop them now. Closing this out with a chicken dinner would be beautiful. Already a knock over towards T2K, and the dominance continues. निकाल A दिया। 1-2 punch, and T2K sent out of the ring. An uppercut, so deadly. The force from it can be felt from here. The sightlines known. Godlike stalwart. ये 200 टच करेंगे क्या? नहीं। Ray gets knocked, नहीं 200 तो नहीं होंगे। but nothing can dampen their spirits at this stage. Hamzy, Silas, under pressure from Alex Shaw, but IHC will have to leave their spot too. Spirits bolstered by titanium, as you say, John. It's going to be very hard to pierce this bubble. S2G are living the high life now, and they just want to close this game out for fun. वाटर सिटी से गोल्डन हैंड ले आए लगता है। Potential to break records here, and the run from Silas and Kelsey to lead the charge to भाई ये क्या गर्मी है S2G वालों को? They want to move through. ये सही किया है। किया तो सही है, बट लगा लेते तो ठीक है। बट थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब ओवर था। ऑप्शन नहीं था वेन पे। चारों क्यों है? हैं? अच्छा, बट ये लोग शैक ले सकते थे मतलब थोड़ी देर के लिए। अरे वही बात है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेल रहे हैं भाई। इन्होंने ये फाइट निकाल दी तो सोच के देखना, और बीच में कहीं ओपन में पिटते रहते इधर उधर, क्या फायदा होता। वो भी बात सही है। अब कम से कम अपने गन गेम पे हारेंगे, अगर हारेंगे तो देखियो कैसे हार जाएंगे। धड़ाधड़ मचा रखा है। Kelsey to bed, but Alex is traded off. Will not be flushed just yet. Godless and S2G have one. Stay alive. All 4 of them go, and it is not going to stop here. The Terminators from Turkey crunch down on IHC. Nova up to bat. Is और बच गए चारों भाई। मार दिया नोवा ने, ऑर्डर आ गया नेट फेंकने। To take on the reigning champions, the defenders. चारों की सेम एचपी, एक नेट से 4 हो जाएगी। मर गई S2G। मरेगा ऑर्डर मरेगा। ऑर्डर तो मर गया, ऑर्डर तो नॉक हो गया। अच्छा 2 बचे हैं S2G के। ओ हाँ बोला तो 4 बच गए थे। नहीं अभी भी 2 बचे हैं, ऑर्डर तो नॉक हो गया। हाँ अभी भी बचे हैं, अभी तो बचे ही हैं। हो गया, सब नॉक हो गया। S2G का एक ही बचा है। For S2G, how much further can they go? Only one player up in Hamzy G. He has to take it all the way. चिकन VP का है। VP लेना ले जाए। लेके और VP पता है बहुत ऊपर आ जाएगी, 7-8वें मतलब 5वें 6 नंबर पे आएगी। What a run they've had of it here. No nades left for Hamzy. They have spent all they have, and with it, they are rewarded. A clash between vampires and wolves. भाई डीवीएस मैन चेक गलती है बे। इन्होंने तो बहुत ही चलाई है। धड़ाधड़ उतर रहे हैं, धड़ाधड़। ये S2G वाला मार देगा इसको नोवा को। ओह! The leg peeking out under the vehicle. Is there an angle? Is there a bullet to be found? The needle looking to pierce, and that will be it. S2G 15 eliminations to close it. VP का कमबैक तो है वे, अगर जीती तो। जीत गए मेरे हिसाब से, एक तो नॉक निकाल ही दिया है। ये क्या हुआ? नेट से और मिल अच्छा जाएगा। कैमरा दिखाया है उन्होंने। सेलिब्रेशन। Elation for S2G. Emotion coursing through their veins. Nova defending. ये बोल रहे मैच दाए, हाँ कोई मतलब नहीं हमें।
will hand over the title. बफर हो गया. But at least show them that there's still other teams out there that can take it to him. Despite that, S2G went through the ringer. Order knock. जीत गई VP. VP तेरा उधर आएगी. VP कहाँ पे आई guys? Looking for the Turkey today. 6 पे आ जाएगी. 6 जो 16 से 6 पे. Now Nova looks to close this one out. चलो हो गया दूसरा भी knock. Vampire looking for the third. पैराबॉय ने काउंटर दिया. जीत गए. माँ की वैम्पायर वालों ने अलग गार्ड बाड़ी पता है. Let's go be. Vampire surge up the tables in the final day, but the title at the top. हम लोग क्या करेंगे इतने पैसे का बे? The boxes litter behind them. INF फर्स्ट से सीधा 16. एक DRS वालों का फेस तो दिखाओ. खुश है वो क्या है? सैड है मेरे को दिखना नहीं है. दिखाएंगे. उन लोग सैड नहीं होंगे पता है क्यों? क्योंकि उन लोग रेस में चल रहे थे, ऊपर नहीं थे. नहीं यार वो सैड होंगे बेमारी, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने हगा इसलिए क्योंकि वो पैसिव हो गए थे. बट जोन के अकॉर्डिंग S2G को ही जीतना था. भाई कितने पतले हैं ये लोग पता है, इसलिए अच्छा खेलते हैं. मैं मोटा हो गया इसलिए मेरा गेम खराब हो गया. Let's go guys, congratulations. Congratulations DRS, congratulations S2G, let's go. ट्रॉफी बहुत अच्छी है, ट्रॉफी बहुत गजब है. तोड़ेगा क्या? आराम से. S2G. S2G have done it, and they are your new PMGC champions. The crowd is going wild. The Turkish casters, I think things just flew around. I think we've got some waters over here. It is madness, and congratulations to the Turkey region. What a phenomenal final. I don't have the words right now. शायद टर्की में वो भी नहीं है ना, टैक्स भी नहीं है. Crazy not only qualifies his team through the league stage into these grand finals, but also clutches things up versus 4 AM. This man just solo-handedly almost in his final game just enabled his team to hold on to that first place. What a great storyline for the team that will be able to defend potentially their title in Turkey next year. And we talked about them from the get-go. If this team could have just narrowed down the eliminations, could have just narrowed down the placement points, they were going to be able to take their win, and they did just that. And what a beautiful way to finish it, too. They decided to play their game. One day Sol will win this trophy. अच्छा भाई कोशिश करेंगे भाई.